qualification, I am a software engineer, and I have been working in the corporate sector for a good 10 years. And then after that, I came into the education space being a woman. मेरा ख्याल में all the women go through this phase of their life where they have to take care of their families, they move on with their life, and so there comes a career break. So मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. I got married, I had kids, and I had to take a break in my career. But then जब मैं, क्योंकि I was in the IT field, in the software field, जब मैंने वापस corporate sector की तरफ जाने का सोचा या काम करने का सोचा, so I thought that in technology, the advancements are very rapid. बहुत तेजी से चीजें change हो जाती हैं. And so I wasn't very confident in going to a corporate job. And I underestimated, and I still say that as of today, I underestimated a school job. And I said, कि चलो ठीक है, अब थोड़े अरसे पढ़ा लेते हैं. And when I went into the school, which is Huck Academy, back in 2010, I was hired as a computer science teacher. And वहाँ से फिर मेरी education space में journey शुरू हुई. I was a teacher, I was teaching junior grade levels, and then I was promoted to teach senior grade levels, which was, it's an O-level school. With that, what happened was that I was innate, I had this, personality trait, I would say, that I'm very curious. I research on my own, I self-learn. And that is something that has taken me to different places, to do different things, to do unique things, to come up with unique ideas and execute them. उसमें फिर ये हुआ कि जी, I started teaching robotics in that school. And then it was educational robotics using Lego kits. Ab Lego, everyone knows that Lego is basically something that is, every one of us is familiar. But हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि Lego की जो kits हैं, they're programmable now. They connect to a computer. So I researched that. I got the kits in my school and I started teaching robotics to the students, the kids. The kids got very excited. I happened to start, taking them to, I conducted a local competition, and then I started taking teams from Pakistan to international competitions. So as of today, I am an international award judge for robotics competitions worldwide. I have introduced World Robot Olympiad at the national level in Pakistan. So I was the country manager for that. And with that, I moved on to establish my own businesses, and they were tech businesses as well. So since I belong to the STEM education space, I'm not sure कि आप लोगों में से कितनों को STEM का पता है, but I'll just lay it out for you. It is science, technology, engineering, and math. And STEM education is a teaching methodology जिसके अंदर you teach as blended learning model. And these subjects are not taught in silos, but it is a blended learning and project-based learning methodology. I was always an advocate of hands-on education. And entrepreneurship was something always in the back of my mind. But having a technical qualification and education, I did not really get into that. But when I started my own company, that's when I struggled with my co-founder quite a lot because he's also a technical person. We struggled in terms of entrepreneurship, understanding what a business should look like, how should it run, although technically we were very sound in our fields. And that is when I started taking trainings of entrepreneurship. And the first program that I joined was Stan-Chartered Women in Tech Training. And then from there, I went into She Loves Tech. And then I was incubated at National Incubation Center, Karachi. The point I'm trying to make it is that being a technical person and from a tech background, all of these programs have helped me understand and grow my business. And it was almost 4 years of my life that I struggled to understand entrepreneurship. And in the past 2 years, I've been able to learn so much more.
It is important to learn about entrepreneurship. This is what I've learned. Even if you're doing a job, you don't have any plans of doing business, entrepreneurship is a mindset. And that is what has led me and my co-founder to establish what is right in front of your screens right now, Curiosity Net. Curiosity Net was born during COVID. And Curiosity Net se pehle jo hamara STEM education startup tha, that was Pi Space Science Education Center. That still is there. And Pi Space Science Education Center के साथ साथ हमने Curiosity Net पे काम करना शुरू किया. And the traction and the response that we got to this is overwhelming. Curiosity Net, as you can see, is a students' professional network. And we're actively reaching out to universities to tell them about this. And hence, today is a great opportunity to share about Curiosity Net with all of you. Now, what is Curiosity Net? Curiosity Net is basically, those of you who know LinkedIn, I'm sure a lot of us are on LinkedIn platform. It is LinkedIn for students. And for those who don't know LinkedIn, Curiosity Net is a professional and social network for students. And what do the students do on this network? They basically connect just like social media, just like Facebook, Instagram. But what is special about this network is that it is an educational network which helps them grow in their career. Now, this network is there, and you'll be surprised by the age that is written here. It is 15 years. I know that is high school. That is metric. जब आपका बच्चा पाकिस्तान में metric के level पे होता है, वो 15-16 साल के बच्चे होते हैं. And even before that, these students are required to select the career that they want to go in, or the career path, I should say. हम subject select कर लेते हैं जब हम grade 9 में जा रहे होते हैं. So कि मुझे science लेनी है, मुझे business side जाना है, मुझे arts की side पे जाना है. So these decisions are made when we're in grade 8. So इतना छोटा बच्चा who doesn't have exposure, कि you have to open minds at that level. And so when the students are asked, and normally it is the parents' decision, because parents अपने experience से, friends and family से पूछ के आपको guide कर रहे होते हैं. So it is that decision coming from the friends and family, and barely a decision coming from the student or the child, him or herself. And that is why this platform is there with all the securities. आपने शुरू में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें security protocols हैं, considering कि ये एक बच्चों के लिए network है. So 15 years and above around the world. It is not, now the world has become a global village, and not now, many years ago. But uska maqsad kya hai? Giving our kids and our students who are even in schools, colleges, universities, the exposure to the global market. That cross-culture exposure is provided through this platform, and it is a safe and collaborative space. Our mission is very simple. We're leveling the playing field through a global social community. Regardless of the socioeconomic background of the students, we are having them come on this platform, benefit from the opportunities that are there. And how does it help the students? Everywhere, on every portal, every platform, you would hear, KG, you have to create a student profile, a portfolio. LinkedIn पे भी आप जाएं, वहाँ पे आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन डालनी है, अपनी experiences डालने हैं. Now, experiences क्या हैं? Student experiences क्या हैं? आपने अपने स्कूल में किसी साइंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, you participated in debates, sports, drama, anything, singing, music, anything you participated in are your experiences. And those are the experiences coming from student life that build your skills. So वो सारा जो आपका academic, एक तो आपकी reports and everything, जो आपकी transcripts हैं, your academic portfolio, and your non-academic portfolio, which is the extracurriculars, which may be your interests, which may be your skill-based things, they are all brought in one place. And then based on that profile,
you get matched with internships, jobs, scholarships, admissions, agar aapne aage padhna hai, all those opportunities free of cost. So I'll take a pause over here, and Dr. Abda, if you can guide me if I am supposed to take questions between my talk or at the end of the talk. No, ma'am, you can start your question and ask and engage our students during presentation. Exactly, because I want कि ये थोड़ा सा interactive session हो. So if there are any questions until now, तो please मुझे बताइए, and आगे फिर मैं बढ़ती हूँ, आगे भी काफी चीजें हैं बताने वाली. But I would appreciate if there are any questions at this point, then please do ask, put them in the chat. I will be taking a look at the chat. Or if you want to unmute yourself, you can ask Dr. Abda and unmute yourself and do that, however it is comfortable. So I will just proceed until we receive any questions, okay? Assuming that everything is good. Okay. Yes. So, all righty. So yeah, so yes, so these are the opportunities. So it's like not only a job portal. Agar aap abhi college mein hain and you are on a break, you are having summers. Jaise abhi hamare paas summer vacations chal rahi. Through our platform, we have had 6 to 10 students who found internships through this platform. Now, 6 to 10 sounds like a very small number. I know, because we launched this platform in March. And so far, we have about 3,000 students on this platform within a span of 4 months. और बहुत तेजी से ये नेटवर्क ग्रो कर रहा है, बिकॉज जब भी हम जाके किसी यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद हमें एकदम से रिक्वेस्ट्स आती हैं, and the students join in very fast. So now I'm going to move on, and I'm going to show you what United Nations Sustainable Development Goals are we addressing. I hope कुछ लोगों को पता होगा what are United Nations Sustainable Development Goals. There are 17 goals that the United Nations has put forward, and they cater to almost all the problems that we face today in the world. And these problems are there for every nation, and every country is required to work towards these goals to improve their economic situation and grow economically. हम अपने इस initiative से जो 4 UN SDGs address करें, वो quality education है, gender equality है, responsible consumption and production, and decent work and economic growth. And this is what we're targeting. In terms of gender equality, I'd like to share with you, हमारे इस platform पे there are about 62% female users and 38% male users so far. We are an advocate of women empowerment. मैं कराची में कुछ universities के लिए, I'm a final year projects evaluator. And one of the universities is Jinnah University for Women. And kuch arse pehle, I think isi saal 2021 mein, when everything was remote, we were doing it online, the final year projects evaluation. And after that, I received a request for some students to connect with an artificial intelligence mentor. They were looking for a female mentor who would mentor a team who had an FYP in terms of artificial intelligence. And so I'm trying to tell you that CuriosityNet provides that mentor connections, mentor network, not only from Pakistan, but also from around the world. We have a huge partner network from the, you can say United States, Canada, Europe, Australia. We have a huge partner network. And so I was able to connect them with someone in the United States. And that was a win-win for everyone. So the power of the social network, which is geared towards educational and hiring needs, is immense. And so that is why we feel that this should be every student's go-to platform for their student and career growth needs. Now, what does the student journey look like? The student journey shows that the students just land onto the landing page, which is curiositynet.com. And I will leave the website on the chat window when I end my presentation. You go onto that website, create a free account using your personal email address. Why the personal email address? Because if you move on from your school and college, you're going to lose your email address. And so your personal email address should be used to create an account on this. Then
You log in, complete your profile, like build your profile, add a profile summary, which is your personal statement, show off to the employers and to the world what you are all about. How do you want to present yourself? And this is where something else comes in, which I will talk about later, which is a recruitment readiness drive for universities that we're doing. Once you've completed your digital portfolio, then you add your education, experience, and skills. आपकी जो भी अब तक की education है. So now you're building your profile over the years. आपने अपना metric complete किया, अपना secondary school, high secondary school complete किया, आपने उसका डाल दिया. फिर आपने अपना intermediate किया या A level किया. You add that into your profile. So you're building your profile as you go. आपने किसी debate competition में participate किया. आपने उधर जो भी win किया, you just add that as an experience. So in the beginning, the profile is a lengthy process, slightly, because आप उसमें अपनी अब तक की achievements डाल रहे हैं. But once it's built, जैसे आप पहली दफा resume बनाते हैं और आप यहीं से फिर resume generate कर सकते हैं. A lot of people don't know how to make their first CV, and even later on, CV बनाने के लिए आपको guidance चाहिए. आपने सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, and you just need to generate your CV and start sharing it with people. So education, experience, skills, and interests. आपका interests किन fields में है. Based on that, आपकी जो feeds हैं वो filter होती हैं. And that's where you gain access to relevant, limitless opportunities. Because it's a social media, you keep on scrolling down, there's opportunities and opportunities that you can see. Features that inspire use. One of the challenges is for this platform and was that we were thinking about how will we make students use it? How will the students engage with it? And that is where we came up with social media features, because we've seen students. So I've seen on Facebook, I'm part of a lot of groups where students are sharing experiences or asking questions literally about how to go about an interview, a job interview. किस तरह से उसमें क्या सवाल होते हैं, अगर मेरी ये फील्ड है उससे रिलेटेड क्या सवाल होते हैं, दिस इज माय फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, हाउ डू आई गो अबाउट इट. सो लोगों के ये सवाल हैं. इसमें दो तरह के फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. तो ग्लोबल सोशल कम्युनिटी एंड ग्रुप्स, इसका क्या मतलब है? हमारे पास ग्रुप्स हैं सो क्यूरियोसिटी नेट पे, जिसमें एक ग्रुप है इंटरव्यू टिप्स, एक ग्रुप है रेज्यूमे बिल्डिंग, एक ग्रुप है स्टेम करियर्स फॉर विमेन. Dusra group, there are so many groups which are in line with all these things, mental health, mental well-being, and you're looking for a mentor or someone who can advise you, you can put that down on the group. There's a whole group chat, moderated chat, and then you can connect outside of the group, outside of curiosity, for a one-on-one session with that mentor, with that advisor. So get matched with relevant groups and mentors, and that is a huge support, particularly during COVID. Similarly, we have personal statement and final year project support. Again, as I said, since I am a final year projects evaluator, I feel that students beyond their project supervisors need mentoring and coaching and support to be able to complete their final year projects. There's so many things that I've observed, and out of those observations, we have created this groups feature is to be utilized for that support. And then resume creation tool and matching with relevant scholarships and institutions. I'm pausing again just in case if there are any questions. Anybody has any questions, or I'm boring you guys? नो नॉट बोरिंग तो कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है. और स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्टूडेंट्स आपको देखिए एक ही साइट पर कितना कुछ मिल जाएगा. मेंटरशिप है, रिज्यूमे कैसे बनाना है आपने, आपकी स्टेम ट्रेनिंग कैसे होगी, मेंटरशिप कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को सीड मनी की जरूरत होती है. अगर अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो मैडम प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करेंगी. तो कोई क्वेश्चन, कोई भी बात आपको भी लगती है तो जरूर मैडम से पूछें और इनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं. Thank you, Dr. Abda. So yeah, so continuing here, so the other features that are there, which are very exciting, and how you do live videos on social media, how you can post stories. There are events that you can post, and you can be a part of. Filtering the feeds as per your needs. These are some of the common social media features that you will find
global groups and direct messaging. So one-on-one chat is also available. So these screens show you actually how the platform looks like. You can go in right now after the presentation and sign in, sign up basically. So the first one is the landing page, which you see. You have to sign up. It's very quick. There is an automatic verification of email. Just check your spam folders just in case the email goes into spam. Then on the right-hand side at the bottom, you will see the front page, the wall where you land on. And this is your wall where you are seeing all the feeds that come up based on your interests and everything. Then you have a profile view on the left-hand side. This is how your profile, very basic, neat profile that looks like this. On the right-hand side, you see groups. Groups are the power feature, I would say. People are engaging in discussions, finding answers to their questions at a platform which is supposed to support you for this purpose. So support discussions, and then you can take the conversation ahead to a one-on-one meeting with a mentor, with an advisor, or with anybody. So this is, the interface. Some of the frequently asked questions that I always address in my presentation are that these are the questions that universities and students ask of us. So the universities have recruitment offices. Then what role does CuriosityNet play? So we work with universities, recruitment, placement, industry liaison offices, and we give them analytics that help them determine where are their graduates going later on after completing their university education. So Maria, thank you for that question. I will come to that. Let me complete my point. That's a very good question. All right. So CuriosityNet works, as I said, with these departments, and we provide them with all the analytics. We help your students secure internships and jobs. And it's not only finally a student, it is any student in any year. As I said, 15 years and older can sign up. And so at any point in their student life, if they want to avail internship opportunities or further education opportunities, we are working with universities and supporting them in their roles, what they do. So I will just answer Maria's question, which is very, very interesting. So Maria Khalid, thank you for this question. Why has TikTok become such a popular learning platform? And I would say it's not only TikTok. TikTok is popular with Gen Z. Gen Z is basically जो हमारे आजकल के स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, हम उन्हें जनरेशन Z कहते हैं because of the certain personality traits that they have and because of the era in which they're born of this mobile technology and everything. TikTok is popular and so is YouTube, I would say, because it offers a very different kind of platform which has the kind of content that these young people want to see. And so for us as educators, we try to find these people, and where do we find them? We find them on TikTok. We find them on places like TikTok. So if I'm a business who is bringing up something for this generation, we will go and find them on those platforms and try to pick their interest from there. So that is why the tools that your students connect better with, those are the tools that you're going to use to engage them. For example, I mentioned in my previous slides that we use social media features to inspire youth. Because if it is a completely academic platform, nobody will use it. These students, although it's beneficial for them, they will not use it. And that is why I know that TikTok is becoming that, but cutting through the noise over there is difficult. And that is why we have come up with this platform which offers similar features, but then it is geared towards education. I hope I've answered your question. If not, then you can post a follow-up question and I'd be happy to come back to it. Thank you. The next thing that we address in our FAQs is LinkedIn exists, right? Then why CuriosityNet? The same goes for LinkedIn.
LinkedIn has built itself horizontally. You find people, professionals from all different industries. It hasn't built itself vertically. So now what is happening is there are small communities emerging that are focused on, let's say, healthcare, on startups, on businesses. So you will see a lot of small communities which are given the title of micronets. Micronets are emerging, which are small communities which are geared towards a certain space. And I am happy to say that in this regard, an education space, which is a social network, and all of this is, I'm going to come to that, the student data that is going to be on it is going to be verified on blockchain. That is another thing that we're doing. So in this particular space of education and hiring, where you have access to blockchain verified data, we have a first mover advantage so far. So CuriosityNet is there to address student needs. On LinkedIn, you don't find verified documents. You have uploaded documents. They could be tampered. They could be anything, right? Nobody's verifying that. Now, with verifying that data, what we're doing is that if you have to hire someone, if there's an employer, as corporate side पे अगर आप इसका benefit देखें, तो वहां पे HR डिपार्टमेंट्स की ये जॉब होती है कि आपने वेरीफाई करना है कैंडिडेट्स का डेटा. Now their work is becoming efficient. We're not replacing HR departments again. We're making their work efficient. They can have a huge talent pool available through this platform where the data is verified. जो उनके transcripts हैं वो verified हैं and they're filtered and you can exactly pick the candidate you want. So rather than going through manually going through hundreds of applications for a job post, you might just shortlist 50 and be sure that this is authentic data that I'm getting. So this is why CuriosityNet is preferred over LinkedIn. LinkedIn पे अगर हम देखें, मैं LinkedIn की बात करूं, it's an excellent platform and it is amazing. I mean, we're no way closer to what LinkedIn offers, but LinkedIn पे 18 to 24-year-olds जो हैं आपके, जो college university students हैं, they are only 24% from around the world. What does that tell you? The students do not find the platform relevant, and so they don't use it unless somebody says, okay, you have to apply to that organization. Now you have to be active in the professional world. So you have to create a profile. So a lot of these students make their profile, yet they don't use it. So this is why LinkedIn is not a preferred platform by these students. I know a lot of universities prefer their students and they guide their students to use it. I use LinkedIn as well, but that is for professionals. How does this help students? CuriosityNet is empowering students, the youth today, by simplifying the admission and scholarship finding process, looking for jobs and internships. All of it comes together on one platform. We have Google security protocols. We are building further security features, which make it FERPA and GDPR compliant. So we're working towards that as well. Security has to be built in. The last and not the least, recruitment readiness drive for universities. Recruitment readiness, we all know that unfortunately, despite all the education that these students are getting, they're not prepared for the workplace. And there is a certain gap that exists between what the employers need from these students in terms of skills and what these students have when they graduate. They're not ready for the workplace, unfortunately. And so they need 2 to 3 years of experience to be able to get a job, what they need. And that is why we're connecting them with internships opportunities to build those skills. In the same way, we offer recruitment readiness drive to universities. The idea is to onboard final year students at the start of their final year. So when your fourth year, final year students start their final year in August, September, that is when we work with universities to have those students sign up on CuriosityNet. And from there onwards, we have a series of sessions, employability workshops, where there are talks by industry experts. There are
hands-on activities where they get to practice interviewing, where they get to practice or have sessions on resume building, where they get to learn about entrepreneurship. And as I said, not everyone has to do business, but even if you're doing a work from home job, you need to study about entrepreneurship because that's a mindset that develops. Financial literacy and tools and technologies available today, the digital skills available today that help you get a job or work, even freelance work. This is the recruitment readiness drive that we're offering to different universities, and we have experts available who are delivering these talks. Okay, so I have another question, and I've paused for that. So Amazon has come to Pakistan, and that's a big news for Pakistan. How can we get business opportunities from Amazon? Is this very easy way to earn or not? Yes, it is. So there can be a lot of business opportunities that can arise from there. The first thing is to develop your skill set. So if you're looking at Amazon for business opportunities, do you know about e-commerce? Again, the entrepreneurship training will give you that flavor, right? And then a lot of digital tools and technologies that you need to know. So again, coming back to that same thing, thank you, Maria, for this question again. Recruitment readiness drive is the answer to equip people with these skills and knowledge, where to go for what you want to do. And that is why we're signing MOUs with universities to bring their students on board, to have their students sign up. Every year, their final year students sign up and come on this platform and benefit from this. Towards the end of the final year, students become busy with their final year projects. So yes, Komal, thank you for your question. And Maria, what skills, the question from Maria is, what skills do you think students need to survive and thrive in the current era? Maria, I've just listed down on my slide some of the skills, which is financial literacy, knowledge of technology and tools, and not just the basic knowledge. You should have an in-depth knowledge of a certain technology that connects with your field of interest. And then entrepreneurship. I feel that all students, regardless of what do they want to do, even tech students need to have a business sense of everything. Because I'm a tech person, but I couldn't succeed in what I wanted to do until I had that entrepreneurship training. This is myself and my co-founder, and we are the senior management at CuriosityNet. We have some experience related to career counseling and professional development and skill development programs. We are trained internationally. We have received trainings from international organizations. I'm also a certified design thinking trainer, and I've been a judge for EdTech startups for their products and business ideas and startup ideas. So thank you very much for again giving me this opportunity to share CuriosityNet with you. And I hope that after this conference, we can get on a discussion with your university to bring all of you on board on CuriosityNet. Thank you very much. If there are any questions, I will be happy to answer them. Thank you, Mr. Taj. I think students are not more curious about curiosity in. इन्हें अब पता चल गया है कि ये क्या है, इसमें से वो internship hunt कर सकते हैं, project hunt कर सकते हैं, mentorship इन्हें मिल सकती है, और इंशाल्लाह हमारे student आज ही साइन अप होंगे इसके ऊपर, ताकि हम जो है अपना एक अच्छा जो स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेशनल जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अपना कैरियर, जैसे हम फैकल्टी मेंबर तो ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर हैं और प्रोफेशनली चल रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए जो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो इसे इंशाल्लाह अवेल करेंगे. थैंक यू. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट यू मे आस्क फ्रॉम मिस ताज. Dr. Abda, I see a couple of questions. एक तो मारिया का ही, I think second part, 2 parts और थे, मैंने miss कर दिए थे, तो वो मैं answer कर दूं. I can see the questions on the chat. Yes, ma'am, sure. Sure. So Maria, I'm sorry about not seeing the other 2 parts of the question.
I was just keeping a tab on the time as well. So yeah, my views on freelancing. Freelancing is good if you want to work from home. That is a very good avenue for you to explore. Women can be as active as men. इसमें कोई वो नहीं है. हाँ, women के साथ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. मेरे साथ भी हैं. I've got 2 kids, माशाल्लाह. दोनों teenagers हैं. आपको पता है full time job ही है वो. And then I have my own businesses as well. So थोड़ा सा हमें creative होना पड़ता है time management के साथ, right? And freelancing का फायदा ही यही है कि you can work from your home, from the comfort of your home, from the comfort of your home and in your own time whenever you have time, right? So बिल्कुल आप कर सकते हैं. स्किल्स इस वक्त जो जिस स्टेज पे हम हैं लाइफ के, उधर रिमोट अपॉर्चुनिटीज अब बहुत आसान है. आप देखिए, आप लोग मुल्तान में हैं और मैं कराची से ये कर रही हूँ. अगर मैंने बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जहाँ पे मैंने इवेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो रहे हैं, टाइम जोन मैच करने की बात है. And the opportunities are there. So freelancing is for women as much as it is for men. There is no gender discrimination there. Please do approach these opportunities. Skills अपनी develop करें, courses attend करें, ये opportunities ना छोड़ें. Last question from Maria. What are the traits of successful entrepreneurs? They never give up and they move fast. Don't think. Move fast, do it, execute it, fail, improve, and then do it again. Don't wait. डरने का कोई टाइम नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा. No, you don't have the time for that. Move fast, don't think twice, get the training. And you should be stubborn and determined. Stubborn इसलिए कि जो आपको negative feedback मिल रही है उसको आप as opportunity समझें, उसको as a way of improvement समझें. So ये traits हैं. Never giving up. Never giving up. एक आइडिया नहीं, दूसरा आइडिया improve करें. आपका next आइडिया जो होगा वो पिछले से बेहतर होगा. And no problem, you learn from your mistakes, right? मैंने बहुत mistakes किया. अगर मैं आपको list बताने बैठूं तो बहुत लंबी list है, right? So those are the important traits I feel. But failure से आप grow करते हैं. That is an opportunity to improve. और हमें ये students को भी बताना चाहिए अपने, जब हम पढ़ा रहे होते हैं. So मैं अपने स्टूडेंट्स को जब रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, प्रोग्राम नहीं चला, नहीं हुआ, आज नहीं जीते, कोई मसला नहीं. The win is only for that moment. The learning is for a lifetime. And that is what we have to inculcate in our students. Failure से डरे नहीं, stubborn हो जाएं. अल्लाह ताला जो है वो आपको आगे रास्ता दिखाने वाले हैं, तो कामयाबी भी वही देते हैं. So मेरे ख्याल में अपनी एफर्ट पूरी डालें and don't give up. So thank you very much once again. Yeah, happy to answer all the questions, and thank you to the audience who asked questions. I am available. I will leave my website, curiositynet.com, and my email address as well for those of you who want to reach out to me. And if you have any issues signing up or anything, I've left my information on the chat. Thank you very much again. Thank you for being a wonderful audience and for the opportunity. Thank you. थैंक यू मिस्टर ताज. वंस अगेन स्टूडेंट्स ने होप बहुत लर्न किया होगा और इंशाल्लाह वो क्यूरियोसिटी इनके मेंबर्स बनेंगे. वेरी थैंक यू मैम. Now our next speaker is Mr. Wahid Ali Umrani from IBA Karachi. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Assalamualaikum everyone. Walaikum assalam sir. Audible? जी sir. Ji, thank you. I hope the audience can also hear me.
Thank you, Dr. Abida. Thank you, Women University, for uh, granting me this opportunity to interact with your students. Uh, just a brief introduction. Actually, I'm not from IBA Karachi. I'm from Karachi School of Business and Leadership, KSBL, uh, and I work over there as a associate professor. Uh, so Sorry, sir. it's okay. It's all right. It's all right. It happens because a lot of people. Actually, I've worked with the IBA, so a lot of people still know that I belong to IBA. So not a big issue. Uh, so thank you for taking me on board. कॉन्फ्रेंसेस का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो आपसे पहले स्पीकर्स होते हैं वो बहुत मरतबा आपके हिस्से का टाइम लेके जाते हैं और फिर आपको प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बात करने का. I just want to confirm from the audience if they can in the chat box raise their hand to confirm if they are hearing us out or not, so that we can move on. We got one hand at least. Please raise your hand ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लोग हमें सुन रहे हैं. Okay, that's a taste. Okay. But the numbers are increasing. Okay, at least a couple of hands are there. I hope some more will come. Yes, Ji, thank you for this. I will try to make this talk very brief, and I'll try to touch upon some of the very basic things. Thank you, everybody who's responding in the chat room to confirm me that they can hear me. So, actually, when I talked to Dr. Abida yesterday and to ask for the participants' profile and their interest and their backgrounds, तो मुझे आइडिया चला कि पता आइडिया ये हुआ कि the audience is a kind of mixed audience, and a lot of times we expect that this is a conference where most of the students will come from the business schools, but oh, here the story is different. And I think it's good because entrepreneurship in particular is not actually a specialized work of business graduates. An entrepreneur, मैं थोड़ी सी बेसिक बातें करूंगा. I don't want to bring in a lot of business jargons and वो मॉडल्स और वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा और आगे भी सुनेंगे, तो थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल बातें कर लूँगा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट वो ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस के लोगों का ही काम है और बिजनेस के लोग ही इसको करते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मिथ बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर, अभी किसी ने पूछा था कोई एक सवाल के ट्रेड्स क्या है, मैं थोड़ा सा टच कर लूँगा उस सवाल को भी. An entrepreneur is the one who actually is willing to take risk and who's willing to address some pain points. अब पेन पॉइंट्स क्या हैं जो बहुत मर्तबा एम्फसिस किया जाता है और बोला जाता है कि आप एक आइडिया लेके आते हो, आप एक प्रोडक्ट लेके आते हो, आप एक सर्विस लेके आते हो और उस प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस कर रहे हो. सो वो जो पेन पॉइंट्स होती हैं वो आपके आइडिया को जो है वो ज़्यादा पावरफुल कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल,
آپ کوئی ایک ایسا انسٹرومنٹ لے کے آتے ہیں جو ایک ایلڈرلی کے لیے مانیٹرنگ سسٹم کا کام کرے گا, اور وہ بیکاز آف دیٹ اکوپمنٹ اس کو کنسٹنٹلی ڈیٹا ملتی رہے گی ریلیٹڈ ٹو بلڈ پریشر, ریلیٹڈ ٹو شوگر, ریلیٹڈ ٹو the other health issues, heartbeat, oxygen level, and all that. You see, what you have done is you have done something that addresses some pain point and that has not been addressed before. وہ بہت critical ہے. تو it can be anything. I mean, آپ فزسٹ ہیں, آپ کیمسٹ ہیں, آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, آپ کے پاس کوئی ایک آئیڈیا ہے جس کو آپ جو ہے کسی پروڈکٹ کی شکل دے کے مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, جس کے تھرو وہ پین پوائنٹس ایڈریس ہوں گی. And I think that's one of the big thing. This is why there is a heavy emphasis on innovation, innovativeness, uniqueness. اور جب آپ اپنے آئیڈیاز پچ کرنے جاتے ہیں کہیں پہ بھی, تو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے, فریکوینٹلی پوچھی جاتی ہے, وہ یہی ہے کہ واٹ از نیو, واٹ از نیو. So the thing is, you actually address a pain point by introducing something new. So, and not necessarily you have to come from the business background. آپ نے کوئی اپنی کوئی ایک اسپیسیفک کیمیکلز بنائے ہیں, آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ بنائی ہے, آپ نے کسی ایگزسٹنگ سروس کو جو ہے وہ بہتر کیا ہے تاکہ لوگوں کی نیڈس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے, and you are an entrepreneur. That's the one thing. جو دوسری چیز ہے, and اس کے پورے پروسیس کے تھرو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ the very first thing is the idea. کہ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ کے پاس اس آئیڈیا کو کرنے کی موٹیویشن ہے, and that's the first thing. اب باقی جو چیزیں ہیں وہ in my personal opinion secondary ہو جاتی ہیں, because you have the idea and you have this primary motivation to take risk and go for that. مطلب ابھی مجھ سے پہلے زرتاج بات کریں تھی, تو it's not easy. I mean, it's not easy کہ آپ you start an idea and it will go in the market and you'll be successful, you'll be earning a lot of money. ایسا نہیں ہے. It takes a lot of time, it takes a lot of effort. اس کے اندر ڈیموٹیویشنز بھی آئیں گی, اس کے اندر جو ہے چیلنجز بھی آئیں گے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو 8 times failures بھی ملیں گے, 8 times you will see that you have made mistakes. But all this coming together is an experience that actually makes you an entrepreneur. So I think ایک تو آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے, اور دوسرا آپ کے پاس willingness ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہوں تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ what else is it that you actually need. ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو فائنینسز چاہیے, رائٹ, آپ کو اس کی مارکیٹ فیزیبلٹی چاہیے, آپ کو اس کا ایک فائنینشیل پلان چاہیے, رائٹ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے ایون you can create a team and work with them. I mean, there is no harm اگر آپ کو فائنینشیلس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ نے کسی فائنینس اسپیشلسٹ کو ہائر کر لیا اور اس کے ساتھ ٹیم اپ کر لیا, اور اس سے وہ ساری جو ہے وہ کیلکولیشنز اور ساری چیزیں کروا لی. So as I said, the primary thing is the idea and the motivation. Everything else جو ہے وہ slowly gradually جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے گی. So you need a marketing plan. For example, یہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہے تو اس کو کس طرح کی مارکیٹ کے لیے یہ فیزیبل ہے, کس طرح کے کنزیومرز کے لیے یا کسٹمرز کے لیے یہ فیزیبل ہے, کیا اس کے کمپٹیشنز اویلیبل ہیں, کیا اس کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہو سکتے ہیں. So there's a whole marketing plan that you actually look into the market and look into the products, competitions, and
and your entry strategy in the market and all that. Similarly आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगले 5 साल के अंदर वेयर टू वी स्टैंड, किस तरह से हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी है, किस तरह से हम ग्रो करेंगे और किस तरह से हमें बेसिकली नंबर्स मिलेंगे. एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑल दैट इज एक्चुअली फंडिंग. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है और बहुत कॉमन सेंस की बात है. फंडिंग के 2-4 बड़े प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहाँ पे लोगों को डिमोटिवेशन होती है. एक प्राइमरी सोर्स तो ये है कि आप अपने फंड से कोई चीज़ स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें. फैमिली एंड फ्रेंड्स इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सोर्स. नंबर्स आपको मिल जाएंगे एंटरप्रेन्योर वेंचर्स के, जहाँ पे large number of entrepreneurial ventures were actually supported by family and friends. Similarly, people go with government loans, bank loans, they look for angel investors. बहुत सारे सीड फंडिंग आपको मिल जाती है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको सीड फंडिंग मिल जाएगी. लेकिन आपको जो प्राइमरी बात है वो ये है कि आपको जो है वो बेसिकली मोटिवेशन को मेंटेन करना है, उसी मोटिवेशन को लेके जाना है जो मोटिवेशन आपके पास फ्रॉम द डे वन है. और रिमेंबर, इट्स नॉट द पीस ऑफ द केक. it's a challenging job to be done. और उसके अंदर आपको डिमोटिवेशंस भी आएंगी, उसके अंदर आपको सपोर्ट भी मिलेगी उसके अंदर. इफ यू, आई थिंक इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं आखिरी बात कर देता हूँ, फिर मैं आई वुड वांट टू हैव मोर इंटरेक्शन और क्वेश्चंस अगर आपके पास आपकी तरफ से आए तो. अगर आप बेसिक ट्रेड्स को देखें एंटरप्रेन्योर के, तो उसमें सबसे प्राइमरी ट्रेड जो है, जो यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन ट्रेड है, वो रिस्क टेकिंग है. यू आर समबडी हु इज विलिंग टू टेक रिस्क. अब इसको थोड़ा सा अगर बिजनेस एजुकेशन में हम अक्सर इस पे एम्फसाइज करते हैं कि यू शुड गो फॉर ए कैलकुलेटेड रिस्क rather than risk, right? And what do we mean by calculated risk is that you come up with a business idea and you start up a business with some data in hand. कि आपने मार्केट रिसर्च की है, आपने कंज्यूमर इनसाइट्स ली हैं, आपने उनके बाइंग पावर को देखा है, आपने उनकी a friend of mine, he wanted to start a huge supermarket in one of the areas जो किसी आर्मी बेस के अंदर था और कैंटोनमेंट के अंदर था. एंड व्हेन वी लुकिंग एट द नंबर्स, तो उसमें एक चीज जो ये थी कि जो पॉपुलेशन थी पूरी की पूरी, वो एक सर्टेन एज ग्रुप के अंदर फॉल कर रही थी. मिसाल के तौर पे जो आर्मी को ज्वाइन करते हैं लोग, आर्मी के अंदर लार्जली आप उनको देखें तो दे ऑलवेज अपर सीनियर लेवल पे आपको नंबर्स कम मिलेंगे, लेकिन जो बेसिकली फोर्सेस के जवान हैं वो आपको ज्यादा नंबर्स में मिलते हैं. So when we're looking at the data, we found a kind of the homogeneousness, similarity in the population. And when you have this information that my whole population or a 70 to 80% of the population falls under a certain age group, तो फिर आपको प्रोडक्ट लाइन चूज करना, तो फिर आपको जो है वो कोई भी प्रमोशन पैकेजेस देना, सारी चीजें जो है ना वो आपने उसको देख के उसके बेसिस पे डिसाइड करनी पड़ती हैं. सो यू सी व्हाट आर यू डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू कम अप विद ए रिड्यूस्ड रिस्क. अनसर्टेनिटी तो है and it will always remain there. The thing is, if you can have more data, it can actually help you reduce the risk. तो एक वो है कि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं कि वो जो एंटरप्रेन्योर ट्रेड है, रिस्क टेकिंग जो है वो बंदे के अंदर होनी चाहिए. एंड आई थिंक देन द सेकंड थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट is that these are, if you look at them, these all are personally related attributes.
पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। अब एक ट्रेट लोगों के अंदर ये होता है, बिकॉज दे वांट टू बी देयर ओन बॉसेस, दे डोंट लाइक टू वर्क फॉर एनीवन एल्स, and they want to be independent. Autonomy is one of the major reason people actually want to do entrepreneurial work. They want to start their own ventures. And I don't know why हमारे यूथ को क्यों समझ में नहीं आता, जब आप किसी सैलरीड पोजीशंस पे जाते हैं तो आप अपनी लार्जली अपना टाइम जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, और जो पीक आवर्स हैं लेट्स से 9 to 5, और आप अपनी जो है वो इनकम जनरेशन जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बहुत लिमिट कर देते हैं. और having your own business is a point where you always have a possibility कि आप उसका स्केल बढ़ा दें. And I think this is very important कि वो आपको स्पेस मिलता है उसके अंदर. So people go for entrepreneurial initiatives. Why? Because they are risk takers. People go for entrepreneurship. Why? Because they prefer autonomy, right? People go for entrepreneurship because they want to have a sense of accomplishment, a sense of achievement, that I really want to do something. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक इंडियन टीवी शो है, चलता रहा काफ़ी अरसे तक, आई डोंट नो अब चल रहा है या नहीं, कॉफ़ी विद करण. आप में से कितने लोगों ने देखा है कॉफ़ी विद करण? where he invites the show up your hands ताकि मुझे आइडिया हो. Coffee with Karan, if you have, where he invites the Indian जो film stars हैं and interviews them. Okay, a show up of the hands, show your hand so that I can see कि आप में से कितने लोगों ने actually देखा है. अच्छा, तो कॉफी विद करण के अंदर जो है, अब या तो ये सिर्फ ये दो लोगों ने देखा है, या तो सिर्फ ये दो लोग ही सुन रहे हैं. ये बहुत बड़ा नहीं सर, मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया. ये ऑनलाइन जो पढ़ाना है उसका ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. अच्छा, जब ये कोर्सेज खत्म हो जाते हैं डॉक्टर आपदा, तो और प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, तो बहुत मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही प्राउडली बता रहे होते हैं कि सर हम तो माइक लगा के ऑन करके सो जाते थे. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स सर हम सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने ये प्रोग्राम देखा नहीं, इसलिए मैं साइलेंट थी कि मुझे आइडिया ही नहीं है. Okay, so in the show, once he invites daughter of Amitabh Bachchan. मुझे नाम याद नहीं है ठीक से, लेकिन I was traveling somewhere, तो इत्तफाकन जहाज के अंदर ही I saw this program recorded पड़ा था. And this lady, who's daughter of one of the biggest star in the film industry, is the sister of one of the biggest star in the film industry as well. Look at her father, look at her brother, look at her mother, look at her even ऐश्वर्या, उनकी जो ब्रदर की वाइफ हैं. तो one of the thing that I felt, ये आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इसको. One of the thing that I felt after hearing her was this feeling that I haven't been able to do anything in my own life, at my own. अब उसको पैसे की जरूरत नहीं है, अब उसको ये नहीं है कि उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके पास उतने बड़े घर नहीं है, या उसके पास पैसा नहीं है. That's not the problem. You see, look at the fundamental problem. What is it that she doesn't have? That she misses the most, and that she craves for. She actually does not have the kind of appreciation, the kind of recognition, the kind of achievement on her scorecard. ये बहुत बड़ा इशू है कि हम
لائف میں بہت مرتبہ ادروائز ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اب یہ ہو گیا. آپ کو پتا ہے یہ بڑی بڑی سوسائٹیز میں جو امیر لوگ ہیں ان کی جو خواتین ہیں یہ اسی سینس آف اکمپلشمنٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے وینچرز اسٹارٹ کرتی ہیں, کوئی سوشل ورک کرتی ہیں, کوئی اسکولز اوپن کر لیتی ہیں, اینڈ وہ and the reason is because they want to tell somebody that we really have done it. So one of the deepest human hunger is to be appreciated. One of the deepest یعنی کہ اپریسیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بھوک پہ رہ پائیں, اپریسیشن کے بغیر نہ رہ پائیں. That's one of the very fundamental thing. And because of that, you see, آپ کے اندر بہت ہائی لیول آف انٹرپرینور اسپرٹ ڈیولپ ہوتا ہے because you have the sense of accomplishment, because you have the sense of achievement, because you really want to contribute. اور یہ سائیکالوجی کے لٹریچر کے اندر میں او بی کا بندہ ہوں, آنسٹل بیہیویئر کے اندر میری پی ایچ ڈی بھی ہے, ریسرچ بھی زیادہ تر ہے. تو یہ بہت مرتبہ کرٹیسائز ہوتا رہا ہسٹوریکلی کہ لوگوں کا جو سیلف لو ہے وہ اور ہوتا رہا ہے ابھی تک بھی کہ سیلف لو جو ہے, ہائی سیلف اپریسیشن اینڈ ریکگنیشن جو ہے وہ بہت مرتبہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت مرتبہ لوگ بہت ساری اچھی چیزیں بھی اس لیے کرتے ہیں بیکاز آؤٹ آف دیٹ سیلف لو, بیکاز they want the kind of admiration that they can actually get from doing what they are supposed to do. تو یہ 2-4 بیسک ٹریٹس ہیں. the list can go on. autonomy ہے, sense of achievement ہے, sense of recognition ہے, family support ایک فیکٹر ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس مینٹورنگ نہیں ہے اور سپورٹ نہیں ہے, آپ کے آس پاس اگر سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں ہمیشہ, جو آپ کو سنتے نہیں کبھی بھی, جو آپ کے آئیڈیاز کو اپریشیٹ نہیں کرتے, تو بہت مرتبہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ رسک ٹیکنگ ٹینڈنسی جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ملا کے جو ہے آپ کے اندر ایک جو ہے انٹرپرینورل اسپرٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اور جس کے بیسس پہ جو ہے you actually can do something. I think سب سے بنیادی اور بیسک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ what is it that you actually want to do, and how deeply, how strongly the desire is rooted into you, that you have this burning desire that you actually want to accomplish something. جب تک وہ desire نہیں ہے, جب تک وہ سوری نان اکیڈمک قسم کا ورڈ ہے کہ آپ کو اس پروڈکٹ کے ساتھ, آپ کو اس آئیڈیا کے ساتھ عشق نہیں ہے, تب تک آپ نہیں کر سکتے. بیکاز اس کے اندر چیلنجز آئیں گے, اس کے اندر ڈی موٹیویشنز آئیں گی, آپ کی فیملی سے آئیں گی, آپ کے فرینڈ سے آئیں گی, آپ کے کو ورکر سے آئیں گی, آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے تھرو آئیں گی, اس کے اندر فائنینشیل ایشوز آئیں گے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی. بٹ ڈیپ ڈاؤن if you have this burning yes, that yes I have to do it, then I believe that you really can do it. So I'll stop here, and actually I have to move for a meeting as well. لیکن 8-10 منٹ ہیں ہمارے پاس. اگر کوئی questions ہیں تو I would be happy to talk to. Please don't expect کہ میں آپ کے ہر سوال کا پرفیکٹلی آنسر دے دوں گا. مجھے جو آئے گا میں تھوڑا بہت اپنا اوپینین اس کے اوپر دے دوں گا. جی ڈیئر پارٹیسپینٹ, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کوشچن تو پلیز آپ سر سے پوچھ سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک سوال ہے کہ جیوگرافک سیگمنٹیشن بزنس کیا ہے. ماریا, آئی تھنک اٹس ویری سمپل. جیوگرافک سیگمنٹیشن تب کی جاتی ہے کہ جب آپ اپنے بزنس فنکشنز کو جو ہے وہ بزنس فنکشنز کو
प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप सेगमेंट्स बना लेते हैं। आपने बैंक्स के अंदर सुना होगा रीजनल हेड्स का रीजनल मैनेजर्स का टर्म, रीजनल हेड का टर्म। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रीच टू द कस्टमर एंड कंज्यूमर, वो जो है ना आपकी बहुत आसान हो जाए। तो आप व्हाट यू डू इज यू लुक एट द होल मार्केट एंड देन यू डिवाइड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ दी डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर देते हैं कि ये सेगमेंट ए है, ये रीजन बी है, ये रीजन सी है। रीजन ए के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं, रीजन बी के अपने चैलेंजेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका रीजन ए जो है वो मुल्तान है और रीजन बी जो है वो आपका इस्लामाबाद है, तो the kind of people live in Islamabad and the kind of people live in Multan might be different in terms of many demographic factors. क्योंकि उनकी लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट हो सकती है, उनके लिविंग प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं कंपेयर टू इस्लामाबाद। मुल्तान के अंदर अगर लेवल ऑफ एजुकेशन में भी वेरी करे लोगों की, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर एक्चुअली डिफरेंट। तो हर पर्टिकुलर वहां पे जब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है एक पर्टिकुलर मखसूस ज्योग्राफी के अंदर, एरिया के अंदर, तो आप उसको एक सेपरेट सेगमेंट कर देते हैं बिकॉज उसकी नीड्स डिफरेंट हो जाती हैं ड्यू टू दोज वेरिंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये बेसिकली टिपिकली टर्मिनोलॉजी होती है कि अपने काम को आसान करने के लिए बिजनेस सेगमेंटेशंस कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं एक से ज्यादा। I hope I've answered your question, Maria. Gee, is there anything else? Or you really need a tea break? नो सर, सर बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी। खासकर मैंने जो 2 की पॉइंट्स अपने लिए सोचे हैं कि एक तो कैलकुलेट रिस्क करके तभी मार्केट में जाना है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो, और दूसरी बात जो एप्रिसिएशन वाली आपने कही कि तारीफें, तो देखें हमारे तो कुरान का जो स्टार्ट है उसमें भी तारीफ अल्लाह ताला की ज़ात से है, और हमारा तो शायद खमीर ही इसी से बना है कि हमें अगर अप्रिशिएट ना किया जाए तो हम तो वैसे ही कुछ भी ना कर सकें। तो इंशाल्लाह हम जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेशन, और फैकल्टी का ये काम है कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे और अप्रिशिएट करे, बिकॉज जितने न्यू आइडियाज बच्चे लेकर आएंगे उतने ही हम एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी अपनी फैकल्टी जो है वो बूस्ट करेगी। और 2 दिन से जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका यही है कि HEC की फंडिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशन खुद जो है अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपने कमर्शलाइजेशन के यूनिट को इतना बेहतर करें कि वो खुद से अर्न करें। तो इसमें हमारे लिए ये मैसेज है कि हम स्टूडेंट को अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें और उनसे कहें कि अच्छे आइडियाज लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज़ का मेन रोल है बिकॉज मास लेवल पे जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है विद एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स एंड समथिंग दैट वाज गुड फॉर माय लर्निंग वो ये है कि you're heading this somebody is heading this department in your university who's a non-business professional, and then naturally there will be a lot of students coming in from the other traditional areas. For example, अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। एग्री प्रोडक्ट्स को ठीक तरीके से मार्केट करना, एग्री प्रोडक्ट्स को ठीक तरीके से कमर्शलाइज करना, एग्री प्रोडक्ट्स एग्री प्रोसेसेस को के लिए जो है वो कंसल्टिंग करना, तो ये बेसिकली बिजनेसेस हैं। लेकिन अगर आप इनको ठीक तरीके से जो है वो पैकेज करें तो इट बिकम्स ए वेरी यूनिक आइडिया एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प द ग्रोवर, it can help the farmer, it can help the people to produce the quality of food
that should be that could be sold easily in the market, and that could be good for people's health. Similarly, similar kind of ideas go to the areas like environmentalist ideas related to environment, ideas related to people's health, let it be medicines, pharmacy, or zoology, or physics, or even so it can be. I believe entrepreneurship is not limited to uh, it's not limited to business, right? It's a way of doing business where you need some basics of the business information, or somebody from the business background maybe that can help you, or somebody that has experience in doing business that can help you. Otherwise जो है ये जो है वो basically it's applicable in almost every area that we talk about. So ji, thank you. I see. Sir, I think Hafsa Batul ने raise hand किया है. Hafsa, आपका कोई question sir से? Hafsa Batul. ये इन्होंने कल किया होगा, वो भूल गई हैं. ये असल में वर्चुअल आते हैं ना, तो ऊपर ही रहे बंदा सो जाता है, मसला नहीं होता. So anyways, Dr. Abida, it was pleasure meeting you, and it was pleasure meeting everyone over there in Thank you, sir. Thank you. So nice of you. Thank you. Allah Hafiz. Now, students, we move to our next guest speaker, Miss Ambreen Rashid Khan from Karachi. Hope so she will join us soon. अब तक की टॉक में हमारे लिए एक तो आप लोगों ने ये काम करना है कि सब बच्चों ने अपने क्यूरियोसिटी इन पर साइन अप होना है, अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ताकि आप लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने. आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने स्टूडेंट लाइफ पर जो प्रोफेशनल लाइफ है उसे कैसे कंटिन्यू करना है. और सेकेंडली वहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको इंटर्नशिप के प्रोग्राम, उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स है, जैसे मैडम जरताज ने आपको गाइड किया. तो जैसे ऑलरेडी आइडिया जिस्ट हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और उसके ऊपर भी हमें मेंटोरिंग मिलती है, आइडियाज मिलते हैं. इसी तरह लाइक और आइडिया जिसमें ये है कि सिर्फ ओनली स्टूडेंट नहीं है वहाँ पर, मीन्स मोर देन फैकल्टी, डिफरेंट स्टाफ और मीन्स के हाई प्रोफाइल लोग हैं. क्यूरियोसिटी इनमें थोड़ी सी आप लोगों के लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप के ग्रुप के लोग हैं, आप अपने ग्रुप के लोगों से कंपटीशन कर सकेंगे. आपको आइडिया होगा कि आपने कैसे compete करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपनी रिज्यूमे बनाना है. बिकॉज सबसे पहले कहीं भी अप्लाई करने जाते हैं आप लोग, वैसे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, किसी भी एंटरप्रेन्योरल पर्सन ने भी अगर आपको हायर करना है या पार्ट बनाना है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपने रिज्यूमे की प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है. तो उसके लिए आप इस तरह की साइट्स ज्वाइन करें जो आपको मेंटोरिंग कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपने कैसे इंटरव्यूज देने हैं, कैसे रिज्यूमे बिल्ड अप करने हैं आपकी. और लास्ट स्टेज जैसे जो स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर्स में है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए वहाँ पर इंटर्नशिप की ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग प्रोवाइड करें आप लोगों को. तो अपने आइडियाज लेकर आए, अपने आइडियाज को किसी प्लेटफॉर्म पर शो करें. अगर आइडिया आपके माइंड में रहेगा और आप इस किसी से भी शेयर नहीं करेंगे तो आप एक्सेल नहीं कर सकेंगे. आप जैसे अपना आइडिया शेयर करते हैं
आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी, आपके आइडियाज में कितने गैप्स हैं, आपने उन्हें किस तरह फिल करना है, उसका बिजनेस प्लान कैसे लॉन्च करना है, आपको किस एरिया से या किस मार्केट, किस इंडस्ट्री से आपको फंडिंग मिल सकती है। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में जरूर पार्टिसिपेट करें, या आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। और बार बार 2 days हो गए हैं, एक ही बात रिपीट हो रही है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं होंगी। आप लोगों को अपनी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, अपने स्किल, अपने हिडन पोटेंशियल को जो है वो एक्सप्लोर करना है और उसके साथ सरवाइव करना है। नाउ आई थिंक मैम अभी हमें ज्वाइन करती हैं, जैसे ही ज्वाइन करती हैं हम सेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। कोई क्वेश्चन? हफ्सा बतूल, अभी तक आपका हैंड रेज है, काइंडली इसे कर लें। सर भी कह रहे थे कि शायद हफ्सा बच्ची ने किया हुआ है रेज, और $49 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। 49 आइडियाज तो एटलीस्ट इस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर आने चाहिए, ताकि हमारी इस एफर्ट का फ्रूट मिले। कोई क्वेश्चन आप अपने यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से कर सकते हैं। डॉक्टर मरियम भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मैं भी आपके साथ ज्वाइन की हूँ। कोई भी आप को अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आपने कहीं भी पार्टिसिपेट करना है, आपका यूनिवर्सिटी का नेम आपको सपोर्ट करता है, तो काइंडली अपने आइडियाज रजिस्टर करें। अपने आइडियाज आप लोग जो है अपने इंक्यूबेशन सेंटर, मुल्तानियन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर करें, ताकि आप फिजिक्स से हैं, आप केमिस्ट्री से हैं, आप जोलॉजी से हैं, आप सोशल साइंसेज से हैं, इंग्लिश से हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से है, कोई आइडिया आपके पास है उसे compete करने के लिए, उसको कहीं भी अपने आइडिया को शेयर करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। यूनिवर्सिटी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो काइंडली जरूर पार्टिसिपेट करें। In few minutes, Miss Amreen will join us.
Miss Ambreen Rashid Khan join us from Karachi, and she will start her talk at 11. अस्सलाम वालेकुम आपदा साहिबा, डॉक्टर आपदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी जी, अल्लाह का शुक्र। चलिए जी, बहुत खुशी हुई, नाइस टू सी यू ऑल वुमेन। हमें ज्वाइन किया है, मुल्तान से हैं सारे माशाल्लाह से। जी, मुल्तान ओके वुमेन यूनिवर्सिटी से। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, ठीक है। सही। So can we start now? Yes, sure. So is there any language preference, or can I start in mixed Urdu, English, or what's that? No, Miss Aisha, in which medium you like to start? There is no language barrier. Okay, that's great. That's great. ओके जी, सो हमारी कोशिश ये होती है कि एक आम कॉमन पाकिस्तानी से कनेक्ट हो, तो दैट्स व्हाई एक्चुअली वी यूज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैं भी इसी तरह से है कि स्विच जो है वो रहेगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम to all dear participant of this conference or chair of the conference. मैं सबको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस मॉडल पे बात कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम आपको कुछ जो हमारी अपनी लर्निंग है, जो फाइंडिंग्स हैं और जो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा आपके सामने जो है वो शेयर कर सके। और आपको पता हो कि बहुत ही डिफरेंट और बड़ा यूनिक जो है वो हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से IBA-CET के प्लेटफॉर्म से। तो थोड़ा सा मैं IBA-CET के बारे में अगर आपको बताऊं कि basically IBA-CET aims to become a world-class center to promote the entrepreneurship and foster a new culture of enterprise in Pakistan. The mission of IBA-CET is to promote entrepreneurial mindset nationwide. ये थोड़ा सा जो था वो हमारा IBA-CET का तारुफ था, जो कि यहाँ पर IBA जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड CET जो है वो इसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। CET के अंदर एक हमारा जो है वो प्रोग्राम है जिसे हम एक कहते हैं कि हमारा वुमेन सेंटर्ड एक प्रोग्राम है, जिसे हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 से 8 सालों से रन कर रहे हैं। और बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा जो यूँ कह लें कि जो मिशन है वो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ पाकिस्तानी वुमेन इनटू एंटरप्रेन्योरियल नेशन बिल्डर, यानी कि एक औरत को हम मेमार इंसानियत के तौर पर जो है वो देखना समझना चाहते हैं कि एक औरत जो है वो सिर्फ एक औरत का काम जो है वो घर चलाने के साथ साथ वो एक नेशन को बिल्ड कर रही है, एंड दैट्स अ वेरी नोबल वर्क एक्चुअली, जो कि औरत को समझने की जरूरत है। औरत चाहे वो लड़की हो, माँ हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, वो किसी भी कैपेसिटी में हो, लेकिन वो औरत जो है वो हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि यू आर बेसिकली द नेशन बिल्डर। हाँ, तो ये थोड़ी सी बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक जो है उसने अप्रोच किया बैक इन 2013 IBA को। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलके एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पे काम किया जाए।
تو ڈاکٹر شاہد جو تھے وہ سینٹر ہیڈ تھے CED کے, انہوں نے کہا کہ we have actually initiated the same kind of program in Nigeria as well. If you like to, you can visit to the Nigeria and you can see what actually going on there. تو ڈاکٹر شاہد نے نائجیریا میں بزنس اسکول کا وزٹ کیا جہاں وہ ورلڈ بینک کا فنڈڈ پروگرام چل رہا تھا. تو ایکچولی جب ڈاکٹر شاہد واپس آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کے اس ماڈل کو اسٹڈی کیا جو نائجیریا میں چل رہا تھا, تو اس میں بڑے فیلئرس تھے ایکچولی. وہ پروگرام جو ورلڈ بینک کا فنڈڈ تھا اور ایک بہت ہی بڑی اس کے اوپر انویسٹمنٹ لگی تھی, لیکن سم ہاؤ ان کے وہ ریزلٹس جو تھے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے. ان فیکٹ اکراس دا گلوب آپ جدھر بھی فنڈڈ پروگرام کرتے ہیں اس کے ایسم وہ آرگینک ریزلٹ سامنے نہیں آتے, یعنی کہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا ویسے, اور پیسہ اتنا لگتا ہے. تو اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ اس میں اس کنٹری کی کلچرل سینسٹیوٹیز کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. وہاں کی آپ نہیں دیکھتے کہ وہاں کے لوکل خاتون کی, عورت کی, مردوں کی پریفرنس کیا ہے, ان کا ٹیسٹ کیا ہے, ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے, ان کی کلچرل سینسٹیوٹیز کیا ہیں. وہ جو فوکس کرتے ہیں, فوکس زیادہ جو ہوتا ہے وہ بزنس پلاننگ کی طرف ہوتا ہے. ہاؤ ٹو جنریٹ فنڈ, how to approach investors, how to fund this project, یہ چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے rather than organically grow the business. تو یہ کچھ ریزن سے جو سامنے آئے, اور پھر ٹیم نے کافی سارے یہاں پر پروفیسر سے, اکیڈمیشین سے کانٹیکٹ کیا, ریلیجیس اسکالر سے بات چیت کی کہ ایکچولی ہم کس طرح کا یہاں پہ وومن انٹرپرینورشپ کا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کریں, جو بیسیکلی جو یہ سارے ایشوز جو نائجیریا نے فیس کیے ہم اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے اوور کم کر سکیں. تو آفٹر ڈوئنگ اے لاٹ آف ریسرچ ان دس ایریا, actually Dr. Shahid and his team developed one very indigenous model جس کو ہم کہتے ہیں کہ this is our V+ model. تو V+ ماڈل کے بیسیکلی اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ it's an indigenous women entrepreneurship model which resonates with the cultural sensitivities of in Pakistani context. یعنی کہ جو ہماری خاتون کی اپنی ذمہ داریاں, رولز, رسپانسبلٹیز, لمیٹیشن ہیں, ان کے ساتھ ہی ماڈل ان کو سب چیزوں کو جو ہے وہ کیٹر کر کے یہ ماڈل جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. دس از ناٹ نا ماڈل جو کہ ایک عورت کو جو ہے وہ باغی بنائے, ریبیلیس بنائے, یا اس کو سسٹم سے جو ہے وہ آؤٹ کروائے. اس طرح کا ماڈل نہیں ہے, بلکہ یہ بڑا ہی ایک, جس سے میں آپ کو بتاؤں گی تو ایکچولی یو کین ایکچولی ریزونیٹ وتھ یور سیلف ایز ویل. آپ کو لگے گا ہاں ایسا تو واقعی میں ہوتا ہے, اور یہ بڑا اپلیکیبل ہے, بڑا فلیکسیبل ہے, اور ہم اس کو ہر کیپیسٹی اینڈ وی کین امپلیمنٹ ان ایکچولی ان ایوری رول. ایک عورت کی حیثیت سے, ایک وائف کی حیثیت سے, ایک بزنس وومن کی حیثیت سے, ایک لڑکی کی حیثیت سے, یا اف وی آر آن اے جاب, اگر ہم کہیں پڑھا رہے ہیں, ہم ہر جو ہے وہ اپنی کیپیسٹیز اور رول میں وی کین اپلائی ایکچولی دس ماڈل جو کہ بڑا ہی فلیکسیبل ہے. تو ماڈل پر آ جاتے ہیں تھوڑا سا. اگر اچھا میں اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتانا بھول گئی. ویسے تو یہ سلائڈ سامنے ہے کہ I have started actually the one consultancy firm last year back in 2020 by the name of ASKIT. This is the Amreen Shahid Qureshi Institute of Transformation. This is a consultancy agency جس میں ہم کافی ساری ورکشاپس وغیرہ جو ہیں وہ ٹریننگ کرواتے ہیں. اور جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے بیسیکلی وہ خواتین ہیں, بچے ہیں, اور جو ہے فیملی کی آل ٹوگیدر جو ہے وہ بزنس کوچنگ جو ہے اور لائف کوچنگ شامل. اور I am a visiting faculty member at Karachi University Business School in IOBM and in IIM. So this is a small brief about myself, and we can move forward to our model. Basically, V+ model. It has 4 basic pillars, as you can see. Next slide. Can you please move to the side of the V+ model, जिसमें 4 pillars. Yes, exactly. थोड़ा सा ऊपर कर. अगर कोई म्यूट कर दे अपने आप को, मेरे ख्याल में वो तो अच्छा हो जाएगा. ओके जी.
As you can see, this model, very colorful model, is a bit. महविश को म्यूट कर दें, उसके बच्चे की आवाज आ रही है, बीबी के डिपार्टमेंट की आ रही है. Okay, the model. Sorry for inconvenience, ma'am Amreen. कोई बात नहीं. That's a part of life as well. तो हम तो कहते हैं कि बच्चों को गोद में बिठा के भी अगर सीख ले तो कोई इशू नहीं है. जी मैम अमरीन, आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, काइंडली आप उसे एक्सेप्ट करें. Okay. हाँ जी, थैंक यू मैम. तो कहाँ से मिस हुआ था? क्या लास्ट बात आप लोगों ने? मॉडल डिस्कस कर रहे थे, मॉडल से स्टार्ट करें. ओके जी. वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि जनाब ये हमारा मॉडल है. आप इसके 4 पिलर्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विद 4 डिफरेंट कलर. द फर्स्ट इज द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन, द थर्ड पिलर इज फैमिली सेंटर्ड वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द फोर्थ वन इज द नेशन बिल्डिंग. And now I'm going to actually explain the first pillar, that's the entrepreneurial mindset. तो entrepreneurial mindset क्या चीज है कि it is the most powerful concept that actually unleash the true potential out of you. A woman starts feeling that she is one and unique of her kind. We help the woman actually to reclaim her strength by awakening her self-esteem on the basis of the Allama Iqbal ideology of खुदी. यानी कि एक औरत जो है वो अपने आप को यूँ समझ ले कि बायोलॉजिकली या इमोशनली या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हम बहुत अपने आप को वीक फील करते हैं. लेकिन ये जो अल्लामा इकबाल की जो खुदी वाला कॉन्सेप्ट है ना कि you need to actually recognize your own strength and जो आपके अंदर जो hidden potential अल्लाह ने रखा हुआ है उसको जरा आप अपना समझने की तो कोशिश करें. You need to actually identify your self esteem, उसको बाहर लेकर आए. हमेशा जो है वो एक लाचारगी या बेचारगी या एक सॉरी फिगर या एक अपने आप को कमजोर समझने वाली जो चीज उस चीज से बाहर आ जाए. ठीक है, तो ये हम एक औरत को बड़ा पावरफुल कहते हैं कि आपके अंदर जनाब, और हर औरत में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं. समहाउ होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो औरत भूल जाती है डिफरेंट चीजों में उलझ के कि मेरे अंदर भी इतनी चीजें थी, मैं भी ये कर सकती थी. आई कैन डू दिस. यहाँ मेरे अंदर ये स्किल थी, मैं तो भूल गई. मैं बच्चों की वजह से ही भूल गई कि मेरे अंदर भी ये था, या मैंने वो ट्रेनिंग कभी ली हुई थी, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी आती थी. तो वो भूल जाती हैं खवातीन, और हम उनको एक्चुअली उस चीज से रिकनेक्ट करते हैं कि आप याद करें स्कूल के जमाने में आपने क्या किया था, कॉलेज के जमाने में क्या किया था, व्हाट वाज एक्चुअली योर हॉबीज क्या थे, पैशन क्या थे, किस चीज में दिल लगता था. और इससे ऐसे ऐसे वंडर्स होते हैं व्हेन द वुमन स्टार्ट कनेक्टिंग विद हर पास्ट. अच्छा मैंने ये भी था. फिर उसकी हम जो बिजनेस की जो ट्रेनिंग और जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक्चुअली सिनर्जाइज द ऑल मैकेनिज्म एंड कनेक्टिंग विद द पास्ट कि हाँ मुझे ये आता है, ये मेरा स्किल सेट है. ओके, नाउ आई कैन डू एनीथिंग. सबसे पहले तो अपने आप को आप वर्ड ही समझना शुरू करें कि हाँ मैं तो बहुत कीमती हूँ. यस, आई एम यूनिक ऑफ माय काइंड. मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो अल्लाह ने एक ही बनाया है. आई एम ब्यूटीफुल. तो ये जो सब आप यकीन करें, ये वाला जो फर्स्ट पिलर है ना, ये जो स्ट्रेंथ देता है एक औरत को, इसकी कोई मिसाल नहीं है. एक्चुअली यहाँ से ही सारा चेंज जो जनरेट होता है ना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का, वो यहीं से जनरेट होता है कि जब हम ये बताते हैं कि दैट आर यू आर यूनिक ऑफ योर ओन काइंड. आप जैसा कोई नहीं है. पूरी यूनिवर्स आप उठा के पटक दें, ऊपर नीचे कर दें, जो आप है वो आप है. अल्लाह ने आपको कोई रेप्लिका नहीं बनाया. और ये इट्स एक्चुअली वंडरफुल फीलिंग्स. इससे बड़ा और एक औरत को बड़ा अच्छा मजबूती मिलती है कि हाँ मैं तो एक ही हूँ, यूनिक हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यार से बनाया हुआ है. तो उसके बाद फिर हम जनाब प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन थोड़ा सा इसको बताते हैं.
یہ جو پرنسپل آف ایفیکچویشن ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر سارا سارسوتی ہیں, یونیورسٹی آف ورجینیا یو ایس اے کی پروفیسر ہیں. انہوں نے یہ پریزنٹ کیا ہے اس کا کانسیپٹ پرنسپل آف ایفیکچویشن کا. اٹ بیسیکلی بیسڈ آن دا 5 پرنسپلس, جس میں سب سے جو مشہور ہمارا ہے, ون آف دا فیمس ون از دا برڈ ان ہینڈ پرنسپل, نمبر 2 از افورڈیبل لاس, نمبر 3 از اسکوئل پرنسپل, نمبر 4 از لیمونیڈ پرنسپل اینڈ نمبر 5 از پائلٹ ان پین. اس میں سے جو سب سے زیادہ جو ہم پڑھاتے ہیں, we emphasize basically more on the bird in hand principle. Bird in hand is basically actually the power in your hand. You can say that the ہاتھ کی چڑیا ہے, یہ پاور آپ کے ہاتھ میں ہے, and you can actually do wonders by actually leveraging the resources you have in your hands. اگر آپ کے پاس کچھ ہے, اگر آپ کو کچھ آتا ہے, you need to actually leverage that. اور اس کے بعد پھر افورڈیبل لاس ہوتا ہے کہ you can start doing something with a very little amount of money. پھر یہ ہوتا ہے کہ میک اے ٹیم ود دا لائک مائنڈیڈ پیپل. اس طرح سے یہ پورا ڈیٹیل میں یہ سیشنز ہمارے چلتے ہیں, بڑے ایکسٹینسو ہوتے ہیں. جو تھرڈ پلر ہمارا اس کا ہے وہ ہوتا ہے, آپ کے سامنے آ رہا ہوگا, تھرڈ پلر جو ہے وہ ہے ہمارا فیملی اورینٹیشن کا. فیملی اورینٹیشن بیسیکلی کیا ہے کہ جو ویسٹ میں جو نائجیرین اسپیشلی جو ماڈل فیل ہوتے ہیں یا وومن انٹرپرینورشپ کے, وہ ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کنفرنٹیشن میں آ جاتی ہے کہ اوکے آئی ایم ارننگ دس مچ اینڈ یو آر ارننگ دس مچ, اب میں اب آپ کے زیر سایہ کیوں رہوں یا میں آپ کے زیر اثر کیوں رہوں, آئی ایم اے انڈیپینڈنٹ کائنڈ آف اے وومن. یہ جو ایک ویسٹرن ہمارے اندر چیز آ گئی ہے بیسیکلی, اس چیز تھاٹ پلر ہے یہ اس کو کیٹر کرتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو فیملی ہے یا آپ کی سینٹر آف اٹریکشن ہے, اینڈ actually you need to leverage the family resources in order if you want to flourish your business. فیملی کی ہی ریسورسز کو, جو آپ کے ہسبینڈ کی ہوں, بردر کی ہوں, آپ کے بیٹے کی ہوں, ابو کی ہوں, یا ان لاس کی کوئی ہو, یا کزنس کی ہوں, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی ہوں, انکل آنٹی کی ہوں, ان ریسورسز کو, ان ریلیشنس کو آپ لیوریج کریں. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, then start using leveraging these resources actually, or rather than going in the confrontation mode کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, میں نے لڑائی کرنی ہے, تو ایک ٹیم کی طرح کام کرے. تو اس سے فائدہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ پھر گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. جب وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم, ایز اے پارٹنرس, تو پھر گھر میں لڑائی نہیں ہوتی اور سب مل جل کے کام کرتے ہیں. پھر سب ایک دوسرے کو سپورٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس کا بزنس ہے, ہم سپورٹ کر دیتے ہیں. اور اس کا فورتھ جو پلر ہے نا, وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ہی مضبوط پلر ہے, اینڈ دا فورتھ پلر از اے نیشن بلڈنگ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچولی وی ٹیچ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ بیونڈ سیلف اینڈ بیونڈ منی میکنگ. اٹس علامہ اقبال کانسیپٹ آف بے خودی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پاور دے دی ہے, پوزیشن دے دیا ہے, پیسہ دے دیا ہے, then it's a time basically to start giving those power, money and strength. اس کو آپ کمیونٹی کو واپس کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ آپ کو دے رہا ہے, it's a time to return back to the society. تو it's beyond self, it's beyond money, it's beyond just entrepreneurship is for doing business نہیں ہے. اس کا نوبل کاز جو ہے وہ ہم اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نیشن بلڈنگ کا, کہ آپ کے ذمے نہ صرف آپ کے بچوں کی, آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے, بلکہ ایک نیشن کو بلڈ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور بیسیکلی انٹرپرینورشپ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں ٹو پرفارم اینی اکنامک ایکٹیویٹی, یا ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کتنی جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرتی ہیں ٹو تھنک ٹوورڈس پازیٹیوٹی, ٹو ورک ٹوورڈس پروڈکٹیوٹی, اور اپنا جو ٹائم ہے بیسیکلی وہ کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں. تو یہ جو ہے نیشن بلڈنگ کا اس میں ایلیمنٹ آتا ہے. تو اس سے اچھا ہماری جو ایگزامپلس ہم نے سیٹ کی ہوئی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی الحمدللہ رول ماڈلز ہیں, جن کی جو ہے وہ ہم ایگزامپلس بھی دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر سیکھنا ہے انٹرپرینورشپ یا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بیسیکلی اگر ہم نے سیکھنا ہے, تو وی نیڈ ٹو لرن resilience from our own mother حاجرہ بی بی سے resilience سیکھیں. ٹھیک ہے, اگر ہم نے perseverance اور patience سیکھنا ہے تو حضرت آسیہ سے سیکھیں, اگر patience سیکھنا ہے تو حضرت مریم سے سیکھیں, اور اگر submission جو سیکھنی ہے اپنے خاوند کے لیے, اور business orientation اگر ہم نے سیکھنی ہے, sacrifice اگر سیکھنی ہے, تو ہمیں اپنی امی خدیجہ سے سیکھنی چاہیے. These are our role model basically. We need to actually learn these straight from them. These are our heroes.
ہم کوئی اور ہیروز پریزنٹ کرتے ہیں, کوئی اور ہیروز پریزنٹ کرتے ہیں, یہاں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں پیشنس کو, پرزیورنس کو, پرسسٹنس کو, سبمیشن کو کیا کتنا ہم پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ ہے ہماری وہ اپنی ریلیجیس لوکل انڈیجینس لرننگ, جس کی وجہ سے یہ ماڈل بڑا یونیک بھی ہے اور الحمدللہ ایکسیپٹیڈ بھی ہے. کہ میں اس کی آپ کو سکسیس اسٹوری بتاؤں گی. دین وی ہیو اندر لیڈنگ لیڈیز آف سب کانٹیننٹ ایز ویل. آپ کو جہاں نیچے نظر آ رہا ہوگا, جہاں آ رہا, پلیز نیچے کریے گا سلائڈ کو. یہ جو آپ کو فرسٹ خاتون نظر آ رہی ہیں, یہ جہاں آرا بی بی ہے, ایکچولی ڈیٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف علی گڑھ یونیورسٹی. یہ فرسٹ وومن وی سی تھیں بیک ان 1800 سینچری میں. اور جناب دوسری ہماری اپنی فاطمہ جناح ہیں, اینڈ شی ہیلپ ہر بردر تھرو آؤٹ دا پاکستان موومنٹ, اور کس طرح انہوں نے پھر ڈینٹل کالج کی فاؤنڈیشن رکھی. رانا بیگم لیاقت علی خان ہے, جنہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اپنا ساری آسائشیں جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اپنے ہسبینڈ کے مشن میں ساتھ لگ گئی, خواتین کے لیے کالج پہ قائم بھی کیا. وقار النساء بیگم کا ایک تحفہ یہ ہے کہ بہت جلدی بیوہ ہو گئی تھیں, لیکن انہوں نے ہمیں ایک گفٹ دیا جو کہ گوادر پورٹ کے نام سے, اگر آپ نے سنا ہو تو, یہ برٹشر سے انہوں نے آزاد کروایا تھا. اور حکیم سعید کی والدہ صاحبہ ہیں جنہوں نے ایکچولی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی ہمدرد ہندوستان کی بنیاد رکھنے میں. ہمدرد ہندوستان جو تھا, جب سب ایک ہی سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا, بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, تو یہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ ہمدرد ہندوستان کی فاؤنڈیشن جو تھی وہ رکھی تھی. تو یہ ایکچولی خواتین ہیں جو مائیں بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں, سنگل بھی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی شادیاں بھی کبھی نہیں ہوئی ہیں. دیز آر ہم ایگزامپلس ہیں ایکچولی ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہر عورت اپنی کیپیسٹی میں regardless of her marital status can perform, can do to her maximum. So acha, based on this curriculum, based on this V plus model, alhamdulillah we won 2 awards from USSB. And slide niche kariyega please. Actually we won back in 2017 we won the IBA Karachi Women Entrepreneurship Program declared as Outstanding Specialty Entrepreneurship Award. یہ ہمیں ملا تھا United States Association by Small Business and Entrepreneurship کی طرف سے. یہ ڈاکٹر شاہد آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2017 میں ملا تھا based on an award winning curriculum. یہ کریکولم کیا تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 4 pillars ڈسکس کیے, یہ وہی کریکولم تھا جس کو USA نے بھی ریکگنائز کیا کہ that we have actually developed our own indigenous content. اس کے بعد one more success یہ ہوئی الحمدللہ this year in January 2021 we won once again the Global Mother Entrepreneurship Camp for winning the USSB Excellence in Entrepreneurship Innovation and Pedagogy Award. یہ اس کے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گی. یہ مدر انٹرپرینورشپ کیمپ کا ایوارڈ تھا جس میں بیسٹ پیڈاگوجی کا ملا تھا, یعنی کہ ہم نے جس طریقے سے MEC بھی ایک امبریلا میں آتا ہے وومن انٹرپرینورشپ کی, جس میں ہم خاص طور پہ مدرس کو ایکچولی تیار کرتے ہیں کہ آپ after getting married, after raising your kids, now you have the window of جب وہ 30s میں ہوتی ہیں 35-40 میں, ہم اسے کہتے ہیں کہ it's a time to actually rediscover, it's a time to actually rebirth yourself. یہ آپ کی اگین ریبرتھ ہو رہی ہے, آپ دوبارہ دنیا میں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ارلی ایئرز میں کیا ہوتا ہے خواتین کی کہ شادی پڑھائی, شادی, فیملی کا بننا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے خواتین اپنے آپ کو سوچتی ہیں کہ ایکچولی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو اینی مور ان آور لائف, اور بس اب تو بس ہمارا کام جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیج دینا اور ہسبینڈ کو جو ہے وہ آفس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اینڈ ایکچولی دس از دا پیک ٹائم ایکچولی ٹو ری ڈسکور یور سیلف اینڈ ٹو ایکچولی باہر آئیے اپنے اس شیل سے اور ڈو سم تھنگ, کیونکہ اس وقت زندگی کافی اسٹیبل ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم نے انہی مدرس کو ٹارگیٹ کر کے we have done 5 seasons of MEC. الحمدللہ سیم V پلس ماڈل اس میں بھی اپلائی کیا. اس میں سے بہت ساری مدرز ایسی تھیں جنہوں نے کبھی بزنس نہیں کیا, بہت ساری مدرز ایسی تھیں جو صرف گھر میں ہوتی تھیں, اور ہم نے ان کو یہ ماڈل پڑھایا. اٹس جسٹ 5 days ورک شاپ ہوتی ہے,
We have done 3 in the physical setup and 2 in the online setup because of the COVID. हम ये 2019 से कर रहे हैं and अगस्त में इसका 6th season होने जा रहा है इंशाल्लाह. तो actually it's a great success from Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह ताला ने इस चीज को जो है वो यूएसए में रिकॉग्नाइज किया कि एक पाकिस्तानी औरत जो माँ भी है वो घर में रह के भी कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकती है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकती है. अगर वो ना भी करे तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकती है, वो अपने खावंद के बिजनेस में सपोर्ट कर सकती है, वो अपनी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ सर्व कर सकती है. एंड दैट्स बिगर पर्पस एक्चुअली. एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट है वो यही कहता है यू नीड टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट. आप कुछ चेंज लाएं सोसाइटी में, घर में, अपने आप में, अपने बच्चों में, डायरेक्शन अपनी सही करें. तो ये हमारा जो इसका इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा है एमयूसी का, क्योंकि इसमें खातून खुद यानी कि मदर खुद और फिर उनके बच्चे, फिर उनकी फैमिली, और वंस अगेन वो एक सोसाइटी को जो एक इंटीग्रेशन मॉडल बन रहा है फॉर अ चेंज इन द सोसाइटी, ये बड़ा अच्छा बन रहा है कि हर औरत समझती है कि यस आई कैन परफॉर्म, आई कैन डू मच, रादर देन कि सिर्फ ठीक है मैंने 2 वक्त खाना बना लिया. इससे बढ़ के आप कुछ करें वो भी करें. दैट्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली. लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा टाइम होता है. अनफॉर्चुनेटली हमारी खवातीन उस टाइम को किल कर देती हैं अनप्रोडक्टिव कामों में. तो हमने एक्चुअली उस टाइम को जो है ना उनको लगा दिया कि जी डू दिस थिंग. आप देखें कि आप अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, घर में, इन लॉज के साथ, फैमिली में क्या कर सकती हैं. व्हाट यू कैन एक्चुअली ऐड सम वैल्यू इन द लाइफ ऑफ अदर्स. अगर बिजनेस करना चाहती हैं गो अहेड फॉर दैट. कुछ और करना चाहती हैं तो एक्चुअली नेटवर्क इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि हर औरत कुछ ना कुछ अपना पार्ट जो है वो उसमें दे रही होती है. तो बहरहाल इस निश को आइडेंटिफाई करके वंस अगेन वी वॉन द बेस्ट पेडागोजी अवार्ड इन 2021 दिस ईयर. अगर इसको अगली स्लाइड करते हैं तो फिर हमारी प्रोग्राम की बेसिकली जो यूनिकनेस है या यूँ कह लें कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है या स्ट्रेंथ है, तो ये है कि हमने क्या किया, लोकल कंटेंट यूज किया. एंड वी हैव कंटेंट बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल. वी डू नॉट वांट टू मेक द लैंग्वेज एज अ बैरियर ऑफ लर्निंग कि जी जिसको अंग्रेजी अच्छी आती हो वही हमारे प्रोग्राम में आ सकेगा और जिसको अंग्रेजी नहीं आती हो तो वो नहीं आ सकेगा. तो एक्चुअली वी हैव डेवलप्ड द एंटायर कंटेंट इन उर्दू एज वेल. ठीक है, तो जिसको जो इजी लगता है वो सीखे. देखें अगर आप चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो जो उनकी जो सक्सेस का रीजन है वो यही है कि एक्चुअली दे डेवलप द कंटेंट इन देयर ओन इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज. और हम समहाउ उर्दू बोलने को समझते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ये कम स्टैंडर्ड की बात हो गई है, या जी हमारी पोजीशनिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी सोसाइटी में. द मोर वी आर टुवर्ड्स इंग्लिश द मोर वी सक्सेसफुल. अ काइंड ऑफ दिस माइंडसेट जो है वो हम लेके चलते हैं. तो हमने इन सब चीजों को जो है वो जो हमारे अपने मेंटल बैरियर्स होते हैं, वी एक्चुअली रिमूव्ड ऑल दिस बैरियर्स. हमने उर्दू में कंटेंट डेवलप किया, हमने लोकल केस स्टडीज डेवलप की. 5 ईयर से दिन रात जो है वो हम खवातीन को ट्रेन करते हैं अक्रॉस द पाकिस्तान. हमने फैसलाबाद में किया, क्वेटा में किया, लाहौर में किया, कराची में बेइंतहा प्रोग्राम्स होते रहते हैं, फंडेड भी होते हैं, हमारे अपने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं. तो केस स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर से इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं. हमने उन केस स्टडीज के बेसिस पे रिसर्च पेपर लिखे और अभी मैं आपके सामने कुछ डिस्कस भी करूंगी. इसके अलावा जो मजीद जो हमारा यूं कह लें कि कामयाबी का राज था वो ये था कि हमारी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी. अगर आप स्लाइड आगे मूव कर लें, यानी कि हम जो क्लासरूम लर्निंग होती है उसमें बहुत ज्यादा हम फोकस करते थे. हम थ्योरेटिकल पढ़ाना हमारा बहुत स्मॉल चंक होता है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम ज्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं कि कुछ हैंड्स ऑन होते हैं. हमारी अपनी टीम ने 5-6-7 जो है वो एक्टिविटीज डिजाइन की एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की. तो उसमें जो नेटवर्किंग होती है, उसमें जो एक सिनर्जी क्रिएट होती है, इसका अपना एक्सपीरियंस होता है. इसके अलावा फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया लाइफ स्किल्स से, क्योंकि बिजनेस स्किल्स तो एक पार्ट है, लाइफ स्किल्स के बगैर बिजनेस स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती. तो वी हैव एडेड द स्लीप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मील मैनेजमेंट और ये सारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट को वी हैव इंटीग्रेटेड ऑल दीज थिंग्स इन द लाइफ स्किल्स वाली चीज. कम्युनिकेशन को हमने ऐड किया, अकाउंटिंग, फिर उसको जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उसमें अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है और लॉ है, बिजनेस एथिक्स हैं, लीगल अफेयर्स हैं, ये सब चीजें हमने इसको इंटीग्रेट किया. वैल्यू सिस्टम पे हम बहुत ज्यादा फोकस होते हैं
जिसमें हमारी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ अवेयरनेस है, ग्रेटिट्यूड की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है एज अ नेशन। ग्रेटिट्यूड नहीं है, वी आर लैक इन ग्रेटिट्यूड, हम शुक्र करते ही नहीं है। हमने आज कितना शुक्र किया कि सुबह से लेके अब तक हम इतनी ऑक्सीजन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं कि हमने शुक्र किया, क्योंकि इसकी तो वर्थ तब आएगी ना जब ये ऑक्सीजन का जो सिस्टम है ये जो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो फिर पता चलेगा कि कितनी मशीनरी कितनी कीमती है। तो ग्रेटिट्यूड नहीं है एक्चुअली, हमारे अंदर सिर्फ उन चीजों का शिकवा है जो हमारे पास है नहीं, जिन चीजों पे एक्सेस नहीं है या जो चीजें हम हासिल नहीं कर सकते, हम कंप्लेन में रह जाते हैं, बस जी ये नहीं है, फला नहीं है, हम जो है उसका शुक्र ही नहीं करते। तो जब ये शुक्र जो हमारा वैल्यू, जब हम ये वैल्यू सिस्टम की क्लासेस लेते हैं, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है ना वैल्यू ग्रेटिट्यूड पर होता है कि शुक्रगुजारी तो लाए अपने अंदर। आप सुबह चल कर आए, आप बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो खा रहे हैं वो हजम हो रहा है, आपका सिस्टम अल्लाह ताला पूरी मशीन पे चला रहा है। तो कितना आपने ग्रेटिट्यूड का कितना आपने इसमें परफॉर्म किया, अल्लाह ताला से कितना शुक्र किया। तो ये चीजें जब आपको बताते हैं ना, तो यकीन करें इतना बड़ा चेंज आता है एक औरत के अंदर, एक लड़की के अंदर, कि वो दुनिया ऐसे लगता है कि वाकई में अब दुनिया बदल रही है। क्योंकि वही वाली बात है कि हमारी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी होती है कि एक कंप्लेनिंग माइंडसेट डेवलप हुआ होता है। एक्चुअली वी नीड टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ ऑल दीज नेगेटिविटीज अराउंड अस। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो हम करवाते हैं वैल्यूज की। और इसके अलावा मैं आपको अगर नीचे आई थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्चर्स में कि हमने अब तक यहाँ कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में तो बहुत ज्यादा हुई है ये वर्कशॉप्स हम करवा चुके हैं। कुछ हमारी 2 मंथ्स लॉन्ग होती हैं, कुछ हमारी शॉर्ट होती हैं, 3 to 4 डेज का भी हम प्रोग्राम जो है वो करते हैं वर्कशॉप का। और ज्यादातर इसमें B+ मॉडल जो है वो हमारा कोर होता है कॉन्सेप्ट। ये हमारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें फंड हुए थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक हमारा जो था वो स्पॉन्सर था, और USAID था, और फाउंडेशन था, UNDP था, इंटरलूप फैसलाबाद इन्होंने हमें फंड किया था। इन प्रोग्राम्स, ये जो हमें फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम आउटरीच कर सकें, क्योंकि इसमें ट्रैवल, टीम, अकोमोडेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और जो हमारे अपने लोकल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मदर एंटरप्रेन्योरशिप कैंप है, वो हमारा अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये हम खुद विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग के करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक जो है, अच्छा, हमने टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन्स भी स्टार्ट किया था, जिसमें वी हैव ट्रेन्ड और वुमेन्स ऑन, अगर कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहती हैं, ऐप बनाना चाहती हैं, ग्राफिक्स, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हमारा एक प्रोग्राम था जो कि हमारा अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम था। एंड वी हैव डन 1 बैच, ये WTAP के नाम से हमने किया था। फिर इसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो MEC के नाम से कर रहे हैं। हर क्वार्टरली यानी हर सीजन में एक MEC हम लॉन्च करते हैं, और जो नेक्स्ट MEC है हमारा वो नेक्स्ट अगस्त में होने जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे ये होता है कि हम अपनी खवातीन को इनकरेज करने के लिए जो उनकी ग्रेजुएशन डे होती है, उसमें हम उनका एक काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, हम एक बाजार सेटअप करते हैं। वी नेम दैट बाजार एट द CET बाजार, और उसमें खवातीन को कहते हैं कि जी आप आए और अपना अगर जो भी आप करती हैं, कोई पेंटिंग बना रही हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई बुटीक का काम है, सर्विसेज का काम है, कोई और किसी भी किस्म का काम है, वी एक्चुअली प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स इन दैट। और इसके बाद ये होता है कि वो बड़ा एक बड़ा जो है, जिसे कहते हैं माहौल, वो क्रिएट हो जाता है, और हर औरत अपने आप को बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्ट्रेंथन और बहुत मजबूत फील करती है कि देखिए मैं भी कुछ कर लिया। यानी कि वी एक्चुअली सेलिब्रेट देयर सक्सेस इन सच अ वे, बिल्डिंग डेकोर करते हैं, उनको हम गाउन्स पहनाते हैं। ये हमारा 200 बैच का एक सेरेमनी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं। ये हमने VTI की लड़कियों को ट्रेन किया था, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। तो ये था हमारा 2018 का, जिसमें आप पिक्चर देख रहे हैं। मेरे ख्याल में पिक्चर सही चल रही होंगी, आप आगे मूव कर दीजिए प्लीज स्लाइड को। जहाँ पे ये जो पिक्चर्स आ रही हैं, आप वहाँ पे इसको मूव कर दीजिए। Now that's one slide, ma'am. Amreen. नेक्स्ट Next कर दें. आगे और आगे कर दीजिए, ये मैं बता और देती ये हूँ। जो आगे और कर दीजिए प्लीज।
जहाँ पिक्चर्स आए और आगे कर दीजिए. I just discussed about the CED बाजार, वो ये था जो आपको नीचे नजर आ रहा है. और नीचे करिए प्लीज. Go down, scroll down कर लीजिए. जी, this is a CED bazaar, this is a graduation picture. CS की मैं बात कर रही थी. We have done this in the Faisalabad, the Quetta ceremony. This is the final day of the mother entrepreneurship camp. इस तरह से और मजीद जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो हमारी क्या हैं कि we have a diverse background की खवातीन हमारे पास आती हैं. कुछ मैरिड होती हैं, कुछ विडो होती हैं, कुछ सिंगल पेरेंट्स होती हैं, कुछ अनमैरिड होती हैं, और हर किस्म की, हर सोसाइटी, हर तबके से खवातीन, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास हमारे पास आती हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वी कैन एक्चुअली कस्टमाइज द कंटेंट. आगे आइएगा. दिस इज अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज जिसमें यास्मीन कयार साहिबा की है. ये मैरिड है, नानी है माशाल्लाह से, नानी दादी है. नीचे करिएगा प्लीज. तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, मेरे पास 7 मिनट्स हैं. तो शी स्टार्टेड हर ये वाली जी यास्मीन गया जो आप देख रहे हैं, ये बी हैरिस के नाम से इन्होंने अपना मिनरल वाटर का बिजनेस स्टार्ट किया. और कैसे किया कि इनके जो भाई थे वो किडनीज की बीमारी के पेशेंट थे, डायलिसिस पे थे, और डॉक्टर रिकमेंडेड हिम sodium free water. At that time she started interest in developing the how to make actually sodium free water. और उन्होंने जो है वो 9th क्लास की बुक्स पढ़नी शुरू करी. इनका जो खुद का जो बैकग्राउंड है वो बीकॉम था. And she started studying the 9th class book of chemistry, how to actually purify the water. और वहाँ से ये सीख के अपना इंटरेस्ट डेवलप करके उन्होंने कैसा कॉम्पोजिशन बनाई कि इन्होंने वाकई में पानी, she actually set up one small laboratory in her own kitchen. और वहाँ पर उन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया कि हाउ टू डेवलप सोडियम फ्री वाटर, और उसमें ये कामयाब हुई. और उसके बाद जो है वो 10 साल हो गया इस सोडियम फ्री वाटर से फिर मिनरल वाटर पे शिफ्ट हुई. इन्होंने अपना जो पूरा बेसमेंट था घर का, शी टर्न्ड द एंटायर बेसमेंट इनटू द लेबोरेटरी. और इनके हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया. इनके हस्बैंड जो थे वो मरीन इंजीनियर थे. और जनाब फैमिली ओरिएंटेशन की जो है, यू कैन से दैट द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैमिली ओरिएंटेशन के हस्बैंड ने सपोर्ट किया, घर का चीजें यूज करी, बर्ड इन हैंड को लेवरेज किया. एंड शी स्टार्टेड द मिनरल वाटर कंपनी. एंड रिसेंटली द कपल मूव टुवर्ड्स द आरओ प्लांट, यानी कि अब इन कपल ने कराची के डिफरेंट एरियाज में आरओ प्लांट जो है वो का सेटअप इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं होता है. नेक्स्ट हमारे पास केसेस हो गया ना अब्बास साहिबा का. हाउसवाइफ थी, 3 बच्चे थे, और एक कंप्लीट जिसे कहते हैं घरेलू जिंदगी गुजारी थी. एक स्मॉल इनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ. इनके शौहर को जो थी वो गोली लगी. और इन द पीरियड ऑफ दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डिप्रेशन शी रियलाइज के क्या होता कि अगर मेरे हस्बैंड मर जाते तो मैं अपनी जिंदगी आगे कैसे गुजार पाती. और फिर इन्होंने रियलाइज हुआ सुकैना साहिबा को कि इनका इंटरेस्ट था ज्वेलरी मेकिंग का, बचपन का कोई इंटरेस्ट था. and actually she executed that interest into the designer jewelry. उन्होंने इसके बाद से स्टार्ट किया. पैशन बचपन का था. एक्चुअली उसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी हस्बैंड के एक इंसिडेंट ने, और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. एंड शी इज डूइंग वेल. एग्जीबिशंस लगाती हैं, बहुत ही प्रीमियम इनकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम प्राइसिंग है. आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. एन्चेंटेड सिल्वर के नाम से ये बिजनेस अपना कर रही है. नेक्स्ट भी है समीना फैसल खान साहिबा का, जो आपको पॉलीफिक्स नीचे नजर आ रहा है. बेसिकली ये फैसिलिटीज मैनेजमेंट का बिजनेस करती हैं. शी इज मैरिड विद 2 किड्स. हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, हमारा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया. एंड शी इज फ्रॉम वेरी रूरल बैकग्राउंड. शहदाद कोट से इनका ताल्लुक है, इंटीरियर सिंध से. और जनाब नीचे करिएगा प्लीज, स्लाइड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन. और इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जो है वो एक जो है पेस्टिसाइड जो है वो डेवलप की, जिससे दीमक का जिसे कहते हैं कि इनके पास एक फार्मूला था. later actually she scaled up her business and she arrived in the facilities management business, जिसमें ये 1 to all सारी फैसिलिटीज, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियंस की, घर मूव करना हो या किसी भी किस्म की आपको लेबर चाहिए हो, तो ये कपल जो है वो प्रोवाइड करता है. पॉलीफिक्स के नाम से इनका बिजनेस है. वंस अगेन वी हैव अ स्टोरी ऑफ ज़हरा नौरीन, जो आप हनी का देख रहे हैं बिजनेस.
ہنی یہ بیسیکلی بچی جو ہے وہ گلگت سے ہے اور شی انرولڈ ان آور فیصل آباد پروگرام. اور اس کو جب ہم نے یہ بی ایس کر رہی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, یہی والی بچی جی, تو جب ہم نے اس کو فیملی اورینٹیشن بتائی تو ایکچولی اس کے جو فادر کا بزنس تھا وہ ہنی بزنس تھا. اینڈ شی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ اوکے میں تو بی اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں بٹ مائی فادر ہیز اے بزنس آف ہنی میکنگ بیک ان گلگت بلتستان. تو اس نے کیا کیا کہ ڈیورنگ دا پروگرام ہی اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ برانڈ کیا, اور ہماری جو فائنل جو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک شو کیسنگ کرتے ہیں, شی براٹ آل دا پروڈکٹس ٹو دا فائنل پریزنٹیشن. وہاں پہ سب کو اتنا زیادہ اس کا ہنی پسند آیا اینڈ دین شی اسٹارٹڈ ایکچولی ڈیلیورنگ ہر پروڈکٹ اکراس پاکستان. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو جسٹ ود ان 2 months آف پیریڈ کے جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور ماشاء اللہ اب now she is doing job in software house in بلتستان, گلگت بلتستان by the name of She Dev. تو یہ بھی ایک سکسیسفل اسٹوری ہے کہ نہ صرف جاب بھی کر رہی ہیں بچیاں بلکہ اپنا جو فیملی بزنس ہے ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کا once you develop the entrepreneurial mindset actually you can do anything. آگے بڑھیے گا پلیز, میرا ٹائم آلموسٹ I have 2 minutes. پلیز اسکرول ڈاؤن کریے گا جی. دس از اے اسٹوری آف دا غزالہ صاحبہ, یہ ہماری فیصل آباد کی پارٹیسپینٹ تھیں. شی اسٹارٹڈ ہر نائٹ میئر بزنس بائی سنوزیز نیم. ان کے ہسبینڈ کی سڈن ڈیتھ ہوئی تھی اینڈ شی واز ان گریٹ ڈپریشن. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ اتنی ہی جب یہ ڈپریشن میں تھیں اور یہ ہمارے پروگرام میں آئیں تو ان کو خیال آیا کہ میرے پاس کچھ جو ہے وہ ایکسٹرا کپڑا پڑا ہوا ہے تو مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کے, بہت سافٹ فل لینن تھی تو ان کو آئیڈیا آیا کہ میں کیوں نہ نائٹ ویئرس بنانا شروع کر دوں. اور جناب کیا ہوا کہ ہمارے پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ 2 مہینے رہی اینڈ شی اسٹارٹڈ مارکیٹنگ ہر پروڈکٹ. انہوں نے کارڈس, انسٹاگرام, فیس بک, ویب سائٹ, پورا آن لائن پورٹل سب کچھ بنایا. ان کو آرڈرز ملنے شروع ہو گئے. اتنا فائن کوالٹی کا ان کا پروڈکٹ تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. بڑی فنیشنگ, اوور لاک اینڈ ایوری تھنگ سو پرفیکٹ. تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریے گا. اور یہ ان کی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فیصل آباد میں پروگرام کرتے تھے. We were actually in فیصل آباد and this lady came from پنڈی. ہمارے ساتھ وہ ٹریول کرنے کے لیے آتی تھی ہر ویکینڈ پہ. یہ آپ کمٹمنٹ لیول دیکھیے کہ اس ایج میں یہ بھی نانی ہے. یہ ٹریول کرتی تھی پنڈی سے, ویکینڈ پہ ہمارے پاس فیصل آباد آتی تھیں. اور میں آپ کو بس کیا بتاؤں, ایسی چیزیں ہیں نا, وی ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز کہ جب ہم یہ سب ڈسکس کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ سکسیس اسٹوریز, ہمیں رونا آ جاتا ہے لوگوں کی, خواتین کی سفرنگس دیکھ کے. وہ جس طرح سے اس سے باہر آتی ہیں اور جس طرح سے ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ماشاء اللہ سے سنوزیز کا بزنس کر رہی ہیں, انسٹاگرام پیج چلا رہی ہیں. آپ ٹیکسٹائل کا کیونکہ تعلق ہے ان کا تھوڑا بہت فیصل آباد سے, تو آپ سوچ رہی تھی کہ میں بیڈ شیٹ وغیرہ کی طرف بھی آؤں. ہم ان کے گھر بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں جب بھی پنڈی جانا ہوتا ہے. اچھا, ہمارا ایک خاص بات پروگرام کی وہ ہے کہ ونس وی آر کنیکٹڈ ان دس نیٹ ورک, ہم چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو بھی. جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے کسی بھی سٹی میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا پارٹیسپینٹ ہے, ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں فالو اپ لینے. ہاں جی بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف دا لائف نیٹ ورک جو ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ بن جاتا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ جی ہم نے 2 دن ٹریننگ کروائی, 4 دن ہم یہاں رہے اور پھر ہم اللہ حافظ کر کے چلے گئے. اٹس بیسیکلی لائف لانگ ہم جو ہے وہ کنیکشن بناتے ہیں. آگے بڑھیے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاسمین جنہوں نے منرل واٹر کا کیا تھا اور سگینا جن کا سلور جویلری کا تھا, یہ ہمارے ساتھ ٹیم کے ساتھ کھڑی ہیں. مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان دا بلو ابایا اینڈ دا ادر ٹیم ممبر نیہا ان دا مرون ابایا. یس, نیکسٹ کریے گا پلیز. یہ سمینہ فیصل ہے ہمارے ساتھ, دیکھیں ان کا بچہ بھی ساتھ ہے. یہ جو بچے ہیں نا یہ سب ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں, ہم ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے کیونکہ ایک عورت سے اس کو بچہ نہیں الگ کیا جا سکتا بزنس کے لیے. تو یہ ہمارا ماڈل اسی طرح کا ہی ہے. نیکسٹ وی ہیو اے اسٹوری, دس از لاسٹ اسٹوری آف دا ڈاکٹر رفعت سلطانہ. ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ڈاؤن سنڈروم کی پیشنٹ تھی. تو ہم بجائے ان کے اسپیشل چائلڈ کے ہم کہتے ہیں یونیکلی ایبلڈ ہیں یہ بچے. تو یہ ہماری مدر انٹرپرینورشپ کیمپ کا پارٹ تھی. یہ ڈاکٹر رفعت سلطانہ یہ جو ہے وہ پروفیسر ہیں اقرا یونیورسٹی میں. شی انرولڈ ان آور MEC پروگرام اینڈ دین شی ریئلائزڈ ایکچولی کہ ان کی جو بیٹی کے اندر اسکل ہے ایبسٹریکٹ آرٹ بنانے کی. شی از اے ڈاؤن سنڈروم پیشنٹ اور وہ ایبسٹریکٹ آرٹ جو بناتی ہے وہ ڈفرینٹ میڈیم سے بناتی ہے, پینٹنگ سے بناتی ہے. اور اس کی جو پینٹنگز ہیں وہ UK میں اور ڈفرینٹ ایمبیسیز میں اس کو بڑی ریکگنیشن ملی ہے. نیچے اسکرول ڈاؤن کریے گا پلیز.
تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی آئی کین اسٹارٹ الشبا نام ہے ان کی بیٹی کا اینڈ آئی کوڈ ایکچولی اسٹارٹ دا الشبا ڈیجیٹل آرٹ اسٹوڈیو. اور یہ ہماری کیمپ میں آنے کے بعد یہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر پت ان کی بیٹی ڈاکٹر شاہد کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ڈیجیٹل آرٹ اسٹوڈیو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا اور جس میں انہوں نے اس کے جو آرٹ کو لے کے ڈفرینٹ میڈیم سے ٹرانسفارم کیا لائک ان دا جیولری ان دا جو آپ کا بیگز ہوتے ہیں اس پہ ٹرانسفارم کیا اور اس کو پھر ان کی ایگزیبیشن لگائی تاکہ اس بچی کو یہ فیل آئے کہ یس میں بھی کوئی زندگی میں کوئی چیز ہوں. یو کین ناٹ ایکچولی لیبل می ایز اے ڈاؤن سنڈروم پیشنٹ. میں کچھ کر سکتی ہوں اینڈ اٹس اے بگیسٹ اچیومنٹ ایکچولی ہمارے لیے کہ اس بچی کو اس کی ماں کو اتنی ہوپ ملی دیٹ ڈسپائٹ آف دا آل آڈس آف دیئر لائف دے کین ایکچولی ڈو سم تھنگ. اور اس بچی کا چھوٹا سا بزنس ہے چل رہا ہے ماشاء اللہ سے. ایکچولی دس از دا میسج آف ہوپ. دس از ناٹ دا میسج آف ارننگ. دس از اے میسج آف ہوپ کہ آپ اتنی آبسٹیکل کے باوجود اتنی ایڈورسٹیز کے باوجود یو کین پرفارم یو کین ڈو سم تھنگ ایکچولی یو کین کنٹریبیوٹ. لاسٹ ہمارے پاس جو کیس ہے وہ عظمیٰ صاحبہ کا ہے. ان کے 2 بچے ہیں 2 بیٹے اور یہ وڈو ہیں. یہ اسکول ٹیچر بھی ہیں اینڈ آفٹر اٹینڈنگ آور MEC she started جو ان کا جو باقی کا ٹائم تھا انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں تو she started her cooking based home based cooking based business by the name of Perfect and ماشاء اللہ سے she is doing well. اور نیچے آئیے گا پلیز. بس آئی تھنک دیٹس اٹ. باقی گروپ فوٹوگرافس ہیں اسکرول ڈاؤن کریے گا. جی so میں نے 3 minutes اوپر لے لیے. تو this is all from my side and you can see the diversity of the cases and the backgrounds. خواتین لڑکیاں بچیاں ان کا آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی entrepreneurial مائنڈ سیٹ جو ہم ان کو چند دن یا 2 مہینے میں دینا چاہتے ہیں they actually did some wonders. کرتا ہے ایسا نا مطلب کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور لوگ دوسرے طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. This is a kind of world of abundance جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے, لمیٹڈ ہماری سوچ ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ تھا ہمارا جناب E+ ماڈل جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک می. جو بھی آپ کو سوال ہو. جی ڈاکٹر عابدہ. تھینک یو مس امرین, بہت ہی مزے کا اور میرا خیال ہے کہ فیمیلس کے لیے تو بہت زیادہ ہی انسپائریشن کا سیشن تھا. اور فیکلٹی خاص کر ہمارے یہاں بھی مدر فیکلٹی ہیں اور اسی طرح جو ہمارے سراؤنڈنگ میں کمیونٹی ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ملتان جو ہے میٹروپولیٹن سٹی مینس یہاں پر گرو کرنے کے, یہاں پر مینس کمیونٹی کے لیے کام کرنے کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور ہم کل بھی شاید سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ لوگ کی ٹریننگ جو ہے وہ اپنے ساتھ یہاں پر کنڈکٹ کروائیں گے. تو میرے خیال ہے اسٹوڈینٹس بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں, کچھ کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں تو میڈم امرین اویلیبل ہے. یس کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے پلیز. ہاں انسپریشنل ہے بالکل, مومیز کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ مومیز فیکلٹی کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کے اوپر ایکچولی ڈوئل ذمہ داری ہے. جو مدر ہیں اور جو ٹیچر بھی ہیں ایکچولی ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ایک تو وہ مدر اپنے بچوں کی ہیں جو بایولوجیکل بچے ہیں, اور جو پوری کلاس میں 30 بیٹھے ہوئے یا 40 50 جو بھی اسٹرینتھ ہے واٹ ایور اسٹرینتھ ان کے, وہ بھی بچے ہیں اپنے. ایکچولی دس از اے کائنڈ آف دی اونرشپ وی وانٹ. جی بالکل. تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر دسمبر میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی کووڈ سے. تو آئی واز ان گریٹ ڈپریشن. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ میں اس ایکسپیرینس کو ریوائز بھی کروں, لیکن میں کیا تھا کہ میں 2 جگہ اس وقت پڑھا رہی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ میرے پاس صرف میری وہ ونڈو ہوتی تھی جہاں مجھے لگتا تھا کہ مجھے آکسیجن آئے گی اس جگہ سے, یعنی کہ میرے وہ بچے جن کو جا کے میں پڑھاتی تھی کیونکہ میں نے انہیں آن کیا ہوا تھا. ایک کلاس میں 40 تھے, ایک کلاس میں 40, ایک میں 20. تو میں کہتی تھی آئی ہیو 100 kids on board. اور دس از دا کائنڈ آف تھنگ جو مجھے صرف زندگی کی طرف واپس لے کر آئی تھی. تو یہ ہماری ٹیچرس میں یہ جو ہے نا کمی ہے. We need to actually own them totally and completely. اگر ہم واقعی میں نیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا then we have to own as our own child. یہ بہت ضروری ہے جس کی بہت زیادہ کمی دیکھی جاتی ہے.
तो ये इसी तरह से होगा, ये सारे प्यार मोहब्बत के मामलात होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं यार। जी एग्जैक्टली ऐसे ही बात है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? थैंक यू अमरीन, इंशाल्लाह ओके जी, ओके, नेक्स्ट थैंक यू हम वेरी कोलैबोरेट करेंगे। एंड नाउ आवर नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर खजर अब्बास from Pakistan Institute of Developmental Economics. Student, soon he will join us.
Dear participant, due to net inconvenience in net connectivity, Mr. Khazar will join us later. So please, there is 15 or 20 minutes for tea break. We will join session again at 12:15. And after tea break, Miss Dr. Aisha Munib, she's from Manchester, and she's a scientific advisor here and shareholder for Manchester Biogel, will present her a presentation. So please join our session after tea break.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये होस्ट डॉक्टर अस्कर अली। This is Dr. Aisha Mujib. Would you like me to start my session? Okay, can I get a quick yes to know how many people are actually online at the moment so that I can start my session? हाँ जी, Fatima. Yes, ma'am, I am online. Okay, can I just get a quick 5 yeses so that I can start my session? Because काफी लोग online हैं, I just want to know if they're available for this session. Assalamu alaikum. Welcome back to everyone. Sorry, Dr. Aisha Mujib, there is some electricity problem. Gigi. No, please start your talk. Thank you so much. Thank you. Okay, ji, Assalamu alaikum. This is Dr. Aisha Mujib. I'm going to speak about industry meets academia, which is actually very important nowadays as universities are considered the center point of education and creativity. I'm very happy to be here. Dr. Rani approached me and she asked me to give a lecture on how we can actually improve commercialization and try to understand the biotech market today in Pakistan. So the importance of bridging the gap between industry and academia is obviously to improve the road to translation. Now, it's very important to understand what translation is and how we can build industry academia relationships. Now, from the academic point of view, the academic interest is to be at the cutting edge of technology and knowledge itself and to create and innovate. Whereas the industrial perspective is to gain a competitive market in order to commercialize faster. And we can actually commercialize faster if we understand our own market in Pakistan in order to create our own B2B. B2B is business to business. So translation medicine is now playing a very integral role in bridging this gap from science to research development. My focus today is to make you sort of understand the research journey that I went through and the PhD work that was conducted at University of Manchester and how the start of Manchester Biogel actually came about. I was also a postdoc in China for a couple of years, so I'm going to talk about my work there, some of my work experiences and the synergistic activities that I'm involved in. So very briefly, my research journey started back in 2007. It was an exciting journey for my academic and intellectual development, which actually resulted in product development. I think the whole purpose of research itself is to commercialize it and so that it could have an industrial application. So I finished my PhD from University of Manchester. Very briefly, I was appointed assistant professor at NUST. And then I moved to China for my postdoc work in cartilage and tissue engineering. I was also a visiting postdoc fellow at ETH Zurich and the Chinese Academy of Sciences. So I'm just going to briefly describe what my research is and the importance of commercialization at this point.
My research topic is tailoring self-assembled octapeptide scaffolds for in vitro chondrocyte culture. That's how I started off my PhD work, under the supervision of Alberto Sayani and Professor Julie Goff. Okay, so we worked with peptides, and we used the process of self-assembly, which is a spontaneous organization of biomolecules. Now, these biomolecules could also include lipids, fats, carbohydrates, and peptides in order to form well-defined architectures. For example, nanofibers, nanotubes, etc. We used environmental conditions such as the change in pH, time, and temperature, or in the presence of enzymes to form well-defined architectures, and which resulted further at a specific concentration into very fibrillar networks of hydrogel. Now, from a library of peptides, we selected hydrophobic and hydrophilic amino acids, for example, like phenylalanine, you have glutamic acid, lysine, or alanine. And by alternating the sequence, we fabricated an octapeptide. That was our research approach. We synthesized this octapeptide and designed it into a hydrogel. We formed the hydrogel protocol, and we conducted studies, characterization studies to understand this hydrogel through FTIR, TEM, cryo-SEM, and in order to study the mechanical properties of these gels, we undertook mechanical testing through rheological studies. And then we subjected these hydrogels into 2D and 3D cell culture using bovine chondrocytes. Now, this was further analyzed and characterized under cell culture conditions using live dead staining, MTS, LDH, and aminocytochemistry staining. Now, some of the results that I'm going to describe here, I've not actually included the 2D cell culture work because that was preliminary studies. I've included the 3D cell culture studies, and here I've presented confocal microscopy images, A1 and A2, and you can see the living cells that are stained green, which indicates that they are live, whereas the dead cells, you can see the nuclei of the dead cells in red. So the hydrogel that we used through these studies, it was confirmed that it's biocompatible, right? This is what it looks like. This is the hydrogel in pink, which was subjected to 3D cell culture. And we carried out these studies for at least 54 days in vitro. So in the lab, we were able to sustain the hydrogel for 54 days in vitro, which is actually phenomenal, without using a bioreactor or without using any dynamic culture. Now, further on, the purpose of developing these hydrogels, before I move on to the science aspect of it, was basically to see whether we could use these hydrogels as injectable biomaterials or as sprayable materials or as for implantation. And in order to do that, we need to understand these hydrogels inside and out by studying how they behave in cell culture, because if they are to be implanted into the human body, we need to really understand whether it's biocompatible, whether they are able to grow the ECM. Now, ECM is the extracellular matrix, which is rich in collagen type 1, collagen type 2, and carbohydrates and GAGs. So the purpose at this point was to understand whether collagen type 1 and collagen type 2 is being produced by the cells that were encapsulated within these hydrogels. And through these images, confocal microscopy images, it was evident that between day 7 in culture and day 25 in culture, there was a substantial increase in the deposition of collagen type 2 in 3D. Okay, so 3D, the difference between 2D and 3D is basically 2D, you have cells that are placed on top of the hydrogel, and in 3D,
the cells are encapsulated within the hydrogel. And the purpose of encapsulation is to provide the human body environment and dimensions, because the human body is obviously 3D, it's not 2D. So if you want to really mimic what's happening in 3D before you implant or you spray the hydrogels in vivo, it's important for us to understand how the cells behave in 3D. So it was the results were quite promising. We realized that collagen type 2 was being deposited by these chondrocytes within 3D. Further on, we studied the total collagen content that was deposited by these cells. And we also studied the mechanical properties. So there was an increase in mechanical strength, a tremendous increase, in fact, between day 1 and day 22. And this was due to the deposition of collagen by these cells in vitro. Now, before I move on to what we do at Manchester Biogel, I just want to talk about Manchester Biogel very briefly. It's a spin-off company which was set up at the University of Manchester by Professor Aileen Miller and Professor Alberto Sayani. And the purpose of this, the setting up of this company, was to further take this product to commercialization. And that was actually very, very hard to do, as commercialization requires at least 7 to 15 years of research work at university level. And in this part of my presentation, I'm just going to describe how we took that from bench to bedside. Okay, so tailoring peptide hydrogels for clinical research and translation medicine. So the work that was conducted during my PhD, we took that forward, and we established Manchester Biogel. And so the purpose of Manchester Biogel was to introduce biomaterials. It's a materials platform technology that delivers successfully, and it's demonstrated products which have been used for a lot of cell culture applications at other universities. For example, Imperial College London, UCL, Kiel University in the UK, as well as the Chinese Academy of Sciences in China, at Peking University in Beijing. And we're trying to expand our network in Pakistan as well, at AKU, at NUST. So if you'd like to approach me with regards to any type of research project that you're interested in where we could utilize these hydrogels, please get back to me. So this is actually the team that's currently working in the UK. It's an award-winning team with international recognition. And we also give training sessions. For example, if you would like to obviously work with these gels, we also provide online training. And in Pakistan, I give training myself. So now the why did we even work with these hydrogels? Because we felt that there was a gap where we did not actually have well-defined hydrogels that were able to be used as a drug carrier or as a implantation material. So here we created a cost-effective means of healthcare delivery in order to close gaps between what we know and what we research. We developed these hydrogels further, and the company has been set up for 5 years now, so it's up and running. And the benefits of research into clinical medicine to further facilitate bench to bedside approach is essentially very important. So this is what we're trying to do at the moment. We're trying to get involved in clinical studies, which can further be used, and we can create medical devices that can benefit and innovate people's lives today. So we're very open to getting attached with universities at this stage, and we can work on different research projects which can open up different avenues using new techniques and discoveries. So the focal point for us was to design a product with a broad usage potential.
And the potential that we sort of recreated using these hydrogels was obviously fundamental biological research that could be conducted. Regenerative medicine is one of the approaches that we take. We've also recreated in vitro organ models using embryonic stem cells. And also a 3D bacteria and viruses culture in order to test the antibacterial or antiviral applications of certain drugs. We've also encapsulated bacteria into our system or antibiotics into our system to further understand how these hydrogels can be used. We've also used these hydrogels for vaccine development and as drug delivery systems. So, like I said, if you want to further approach me with regards to any of the uses or applications of these peptide gels, I'm happy to speak to you. Right. So why these hydrogels? There's so many hydrogels that have been worked on using different sort of materials. A lot of people ask us why these particular hydrogels. First of all, they consist of very simple peptide sequences, right? So they are animal free. And also the research work that's been conducted over the years, they have shown us that these hydrogels are reproducible. They're biocompatible, they're ready to use, right? So basically you just open up the pack and you start using these hydrogels. You don't have to use powder, you don't have to mix anything, you don't have to mix any solvents. You can just open the pack and start using these hydrogels. Most importantly, they're transparent. This is one of the attributes that is important when you're using these gels for clinical applications. Because you would like to implant these gels into the human body. So you want them to be very, very transparent, right? So even if you want to use them for in vivo cell culture, you want them to be transparent so that you could see how the tissue, the host tissue is actually interacting with these gels. Now, these gels are printable, injectable, and sprayable. So these are the three applications that are being currently developed through collaboration with other universities. Now, the journey itself has actually been very, very difficult. It's not very easy to set up a company, a spin-off company, and then obviously to take it forward. We're quite hopeful with our sales and with our product development team. The products that are being created are obviously being re-examined and they're being reused. And through collaboration, what we've realized is that there's so much potential of these peptide inks that are being used for 3D printing at the moment. We would like to actually set up clinical research projects in Pakistan, maybe for burn repair or for tissue engineering applications. There could be so many actually that we could work on. We're still expanding at the moment. But since we're talking about emerging markets, I'd like to emphasize the importance of biotechnology and nanotechnology in Pakistan these days. And it is an emerging market. And this is why I felt that this was the right presentation to give during this session. So to understand the biotech and the nanotech market in Pakistan is actually quite tricky, but there's so much work that's being carried out at universities that I feel that there is a need to further boost this end of the research in Pakistan. And in order for us to do that, we need to bridge the industry and academia gaps. Right. So in order for us to really focus on creativity and understanding innovation, we need to bridge this gap further. And so we can manufacture products which have obviously demand in Pakistan. And there are certain fields that we can get involved in. There are tissue specific models that can be created in vitro or in vivo. And so I feel that there's a need to further talk about the biomaterials that are being worked on
and they can be used further for commercialization. Okay. Moving forward, currently I'm writing a book chapter with Professor Aileen Miller, which is on peptide bio-nanomaterials from design to application. We're still trying to work on and find out and try to understand the peptide market. It's not very easy since there are not many industrial applications of the hydrogel worldwide. I think it's still ongoing, and biomaterials is not a very young avenue, but there's so much work that's being conducted at the moment that I think commercializing these peptide hydrogels or any type of biomaterial at this stage is difficult. But if you are persistent in developing industrial collaborations and academic collaborations, I think we can further boost this field and this sector. All right, so moving forward, I conducted a postdoc research in the same field, which is translational medicine. At Peking University, we developed biomaterials which could actually be used as 3D models. We also provided biophysical and biochemical cues, which could actually affect the cells in vitro. We've developed certain products, and one of the research that I would like to talk about here is how we used peptide-based hydrogels. We decorated the hydrogels with RGD peptide sequences using different types of concentrations, and we studied the chondrocyte behavior in vitro. And what we realized here was that even manipulating different concentrations of RGD, we could actually get a phenomenal difference in how the chondrocytes behave in vitro. And the reason for me to actually describe these results is because I think the peptide itself, we don't actually realize the importance of the peptide that we use. So whether it's a tripeptide or a dipeptide or an octapeptide or a hexapeptide, I think when you use these peptides with different types of biomaterials as coatings, as microspheres, as injectables, they provide that not strength, but the biocompatibility. And by tailoring the concentrations of these sequences, you can actually manipulate cell behavior. We evaluated the cell behavior again through cell viability, proliferation results, deposition of ECM, right? And we evaluated the threshold concentration of RGD that could improve scaffold functionality. These are some of the characterization results. You can see the macroporous PEG hydrogels that were decorated with RGD in green, right? So the RGD sequence you can see is highlighted in green, and it was homogeneously distributed. So you have PEG G400, we have PEG G2000. We just wanted to see how the threshold concentration can affect cell viability so that we could make better products in vitro. Through this cell culture studies, we evaluated that the chondrocytes were able to actually retain their phenotypic nature. Chondrocytes are cartilage cells, so they tend to remain round in cell culture. And also they were able to deposit their own ECM. Now, I emphasize on ECM because the whole point of creating biomaterials is for the cells that are in vitro to develop their own natural ECM, right? There are many types of synthetic ECM that are available in the market, like, for example, Pura Matrix, you have Matrigel. I think if you are working in the field of biomaterials, then you would know what Matrigel is, and you would know what Pura Matrix is. There are actually synthetic ECM that are being marketed worldwide, and they're being used for developing biomaterials further. So the purpose of this ECM is for the cells to recreate their own matrix,
And once they're provided with the biophysical and the biochemical cues, they're able to deposit their own matrix, which mimics the natural ECM of a particular tissue. So here we evaluated that in PEG 2000, G2000, the cells were able to deposit a lot of GAG, which are in layman terms carbohydrates, proteoglycans, and the cells were pretty happy in PEG G2000, which meant that we provided these biochemical cues to the biomaterial hydrogel, the macroporous structure, and so it enhanced cell behavior. Okay, so the purpose of biomaterials is basically in vitro studies, we're trying to enhance cell behavior. Okay, we're trying to boost the cell behavior. Here are some of the publications that we published back in 2015, 2016 at Peking University. I also had the honor of actually going to ETH Zurich for an exchange award, through an exchange award. And I worked with Professor Marcy Zunobi Wong, who's actually group leader of cartilage engineering and regeneration. It was a very nice group, and we're further working on how we can develop biomaterials for cartilage tissue engineering. So the collaboration is actually ongoing with Professor Zeganger at PKU. Right, so the second set of, the second leg of this presentation, actually I will discuss my work at the Chinese Academy of Sciences. Again, the focus was on forming injectable hexapeptide hydrogel for localized chemotherapy as a drug delivery system that prevents breast cancer recurrence. The work has been published at ACS Applied Materials and Interface. This was back in 2008. And this particular gel is further being developed to be used as a drug delivery system. Now, the delivery system itself is extremely simple. You'll be surprised. We only used hexapeptide containing Fe, FFK amino acids, right? That means phenylalanine, glutamic acid, and lysine. And because it's a hydrophobic peptide sequence, we used a hydrophilic drug called DOX. And we actually studied the interaction between DOX and the hexapeptide. And we realized that by the presence of DOX into the system, the nanofibers that were formed were aggregated, and a mesh of fiber was created, which was able to actually retain the drug into the network, into the system. Now, this system was further characterized using TEM, using cryo-SEM, AFM, and we studied the fibrillar network. And further on, conducted in vitro studies, but here I'm just going to briefly describe the in vivo work that was conducted. We used different sets of groups. You have the control group. We use the peptide as an injectable system. We use DOX without the peptide, and the optimum system, of course, through these studies, we realized was the peptide and DOX together. So the DOX actually was encapsulated within this peptide hydrogel, and it was further on injected into minued mice subcutaneously. And the tumor cells that we used were human breast cancer cells, and we created a tumor and we excised the tumor, and then we injected the hydrogel into the system, and it was studied over a period of 31 days in vivo. And through these graphs and these pictures and the photograph here, you can see that there's actually a great reduction in the size of tumor in comparison to the control group after 31 days. And this is the optimum system that we found was with the peptides plus DOX.
which substantially reduced the tumor size to probably less than, I think it's less than 0.2 centimeters, right? So it's probably 1 millimeter. Starting off point was different, whereas by 31 days, there was a reduction in tumor size. Just to emphasize further, the importance of this drug delivery system was there was hardly any leakage, right? Because when you're injecting a system in vivo, you would like the drug not to leak into other organs. And so we conducted MRI studies which revealed that docs did not enter different organs like spleen, pancreas, kidneys, liver, etc. It was actually within this hydrogel, this peptide hydrogel, and this test was further conducted to 58 days. The results are not mentioned here, but it was pretty successful. This is the work that was carried out at the NIA lab. We further on developed different types of drug delivery systems using the process of self-assembly and peptide hydrogels. Right here, I just want to briefly emphasize on the importance of how we can use our experiences to have a clearer vision of what we want to do in the future. So as a researcher, I think what you need to really understand is, first of all, get involved in research that is gearing towards commercialization. Of course, if you're working on applied science, if you're working in the field of applied science, you would understand that better, and it would be easier for you to develop products at PhD level. Very difficult to do that at MS level, obviously, but it's very much possible. If you're doing a PhD, you can actually work on different products that can further be developed by somebody else. So try to approach entrepreneurs in the field of nanotech and the field of biotech. And if you have a product in mind, please get in touch with me, especially if it's in the field of biomaterials and nanotechnology. We're very open for collaboration, as we believe collaboration is multiplication. So like I said, I'm here in Pakistan. If you're interested in working with peptide hydrogels, and if you could link that to any part of your research project, I'm happy to talk about it. We've also set up a consortium called WUM Power Pakistan. This is for, in particular, for Pakistani women researchers. We try to provide professional development workshops in order to facilitate, in order to provide support, in order to create a network of Pakistani women. And the sole purpose is to promote research in Pakistan and to support the Pakistani women researchers globally. So if you want to join this network, please get in touch with me. We also conducted a research conference, which was just for our Pakistani women in Beijing. This was back in 2020 at the Chinese Academy of Sciences, in collaboration with the Institute of Chemistry at CAS. And here are just pictures, some of the pictures that I'd like to share, where we highlighted the work of MS students, PhD students in China. And we formed a lot of collaborations through this particular conference. So the purpose of obviously getting together is to create a network. And we're trying to organize WRC, we have our research conference in Pakistan, which is going to be our second one. The first one was at the Chinese Academy of Sciences. So if you are interested in presenting your work at this conference, please get in touch with me. So thank you very much. I think that's about it. Thank you. Any questions? Thank you, Dr. Aisha Mujib, for very wonderful and informative talk, and especially the work you are doing
is a sadka jariya for humanity, I think, because the hydrogels which you are developing, they are animal free and transparent, and working for cancer patient especially. So our students and our faculty from biotechnology will communicate with you and learn a lot Thank from you. you. Thank you so much, Dr. Saiba. Thank So, you. Very happy to be here. Thank you so much. yes, of course. We are actually very happy to learn your experience and your traveling from and your struggle from all the way. And I really inspired because आप देखे ना बिजनेस जी तो सभी करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा जी बिजनेस जो वाकई कम्युनिटी के लिए भी हो, और जिस तरह के कैंसर ने आजकल हमारी घर घर की स्टोरी है कि हर घर में किसी ना किसी को ये है, तो इस तरह की अगर जी जी बिल्कुल. अच्छा है. और thank you once again. Any question from biotechnologist है, because यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं महविश हैं, और जो कोई और पूछना चाहते हैं तो please, ma'am is there for you. हाँ जी, मैंने अपना ईमेल एड्रेस टाइप इन किया है. अगर आप चैट चेक कर लें तो यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू माय ईमेल एड्रेस. Of course. तो अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो या वैसी गाइडेंस चाहिए हो with regards to you know where you want to go from your PhD या next step, तो I'm Exactly. happy to For help. any जी advisory purpose, we inshallah, ma'am, we will communicate with you, our especially our biotechnology student and nanotechnology के जो student है वो जरूर आपसे communicate करेंगे. Thank you very much. So thank nice you of so you. much जी. Thank you so much Dr. Saiba. Thank you जी. Allah Hafiz. Thank you. Dear participant, now we are moving further. Now our guest is Mr. Arshad Mahmood. Soon जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम इनकी टॉक सुनते हैं. Participant, it's time for lunch break. After lunch break, we will join at 2 p.m. So please join session again with us. Thank you. Allah Hafiz.
Assalamu alaikum, sir, and welcome back to everyone. And our session after lunch will start, and Dr. Iftar Ahmed Khosu will deliver his talk. Okay, am I audible to people? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Let me share my screen. Yes, So, sir. it's visible to everyone. Yes, sir. Sharing in is process. Okay, just give me a few. Yes. Yes. Yes, sir. Screen It's share. fine. It's fine. Sir, still in process. Okay, still in process. Maybe the internet issue would be there. Yes, sir. Is it shared with you, all of guys? Yeah, Dr. Abida, is this now shared? No, sir. Still in process. Cursor sir बस घूम रहा है अभी तक. Sir, अब Okay. share हो गया. Sir, please start. Sir, please Okay, start. share. Okay. Okay, Ji, sir. Dr. Abda, the whosoever is there, the students, the participants, the faculty, management, everyone who is just listening this presentation, Assalamu alaikum and very good evening. Thank you very much for giving me an opportunity in order to talk on this international conference on entrepreneurship and emerging markets. My topic that I'm going to talk about would share about my experience of university business incubator since last 7 years and what lessons I'm learned in order to share with you people so that you can incorporate in order to develop whatsoever the incubation system with you are, with whether that's a university system or that's a private or public, whatsoever the mode of that incubator is. So I think this presentation would help you, and you can interact as well, can give good suggestions, whatsoever the experience you have in that as well. Let me give you a brief introduction. I'm currently working as a Director Center for Entrepreneurial Leadership and Incubation at Sakkara University. Leaving up all other things, just let you mention that I won Australia Awards in 2017 and is being trained on incubation management by the University of Queensland in 2017. Apart from this, I won the 2 Australia Awards. Currently, I'm pursuing my PhD from Putra Business School, which is the 132 QS ranking. So that's in an entrepreneur finance. I have been trained in this incubation management and have partnered with different local and international organizations in order to promote the entrepreneur ecosystem within Sakkara University, and of course, the regional development as well, because we are focusing on the community development. But our key focus is to develop the community within our surrounding areas, specifically in the northern areas. So this is not cumulative, but this is just different roles that I have been performed throughout my career. I have been in this university incubation management since last 7 years. I connected different dots between the SMEs, specifically while I worked for around 10 years with Small and Medium Enterprise Development Authority, and rest was with the youth entrepreneurship development as well. We at Sakkara University currently are focusing on the TVET entrepreneurship development, because this is the area which is more neglected, in our community, because TVET youth are only trained just to be employed somewhere in the industry or anywhere out of the country. So we are currently focusing in order to develop this TVET entrepreneurship development, and we are doing since 2012. Apart from this, remained founder, co-founder, and worked with different financial institutions in order to get funding for the entrepreneurs. So my key area is just I would give you, because maybe the new participants who may not have the understanding of this business incubator.
I would just brief about the types of incubators, their services, perspective, management, and key challenges that university incubators are facing. That would be in general and particularly focusing about the Pakistan, and my lessons learned and how actually I resolved these issues within my incubator and within my university ecosystem, and how I supported my friends who are the part of this business incubator system. So my personal lessons that I learned throughout this period, you know, the different activities are being carried on within the incubator system. Always the people are changed, always the entrepreneurs are changed, because in the university system the students remain there for 4 years, 2 years, 6 years, and so on. After completion of their basic degree, they leave the university. Ultimately that innovation left within the university, and that does not join this commercial market. So this is very much, a number of students do come in, number of community startups do come in, but the progress is little in this regard. Of course, people grow, entrepreneurs come and grow, and they leave the university business incubators, and there is not enough money for the entrepreneurs, specifically when we talk about Pakistani context, because you know that the problem is from up and downstream. The reason is that the entrepreneurs are not ready for this financing, and the financing institutes are, even whether they are the angel, they are the VCs, they are even not ready to invest in these entrepreneurs. The reason is that their ideas are at the pre-stage, they lack the commercialization. So yes, of course, there are never the right people and right skills. The university, in the university context, when the entrepreneurs joined this incubation, they did not meet with the right people and right team, whether that's from admin perspective or whether that's from the their team perspective and skills as well. Because let's suppose they are doing the freelancing, what sort of skills required, whether they have, they are not. And fear of failure is always there, and we have very little lessons to learn from them because they never share about this. Of course, they are very quiet achievers in this. Now, the important thing is that, the most important is that there's a large spaces available for everyone in this ecosystem, whether there's a faculty and whether there's a, admin staff of the university, or whether there may be the, the students. So I'm still learning in this whole process. So what are incubators basically? Number of definitions since the first incubation established in the United States, 1851. Basically, this is a shared space, or basically this is a space where we provide a conducive environment to startups to nurture in. And this services vary from incubators to incubators. Some provide a space, some charges the rent, some provide the share offices, some provides only services, some helps in developing their skills, some helps to write business plan, and so on. So if I sum up this, this definition has evolved throughout this 1851, is that it's a shared space where we help provide a conducive and favorable ecosystem within the university context, so that the idea could nurture in and could be commercialized in the market. So this is all about the business incubators. So different types of incubators throughout the world and within our country exist. In number one is a university-backed, incubators like Sakhar IBA University, like many other public universities and private universities are now in the adventure of establishing, running, developing this university-backed incubators. Government-backed and sponsored incubators are there. Of course, we are being funded by the HCC and some other organizations in order to carry out this incubator activities. Apart from this, like Punjab Innovation Board is now establishing different remote and some sort of hybrid sort of incubators within the Sindh and in their Punjab provinces as well. There are the private incubators as well. People have established their own, so that they could invest in them. Then they could be an investor, that they could be an angel investor in them, and maybe the VC funding support as well. There are the public, like not exactly in Pakistan. Recently, Sindh government is planning to have a public incubator, but in the while I was in Australia, I experienced in the Queensland state where there were the public incubators.
And industry specific groups are there now. They are supporting co-working spaces are easily available in Pakistan. Now virtual incubators after COVID-19, like IdeaGist platform is one of the good example. And there are many who are working on this, like American Academy for Women Entrepreneurs, and like She Startup and so on, they are doing, and the list goes on. So these are the key incubators that basically are there in the market. So service providers, many service providers who provides the services to these incubators. Of course, the key is the accountants and lawyers. The advantage that university has is that they have this business department, they have their accounting and finance department. Generally, these services are being provided within that network, but still the question is that whether these students or faculty members are still capable to carry out these financial statements as far the requirements of APR and other regulating agencies are. Of course, lawyers are very much key player in this whole process, because once there's an idea, and if you want to have this trademark and you want to have a patent, whether nationally or internationally, WIPO platform or whatsoever the platform it is, Pakistan, intellectual property organization as well is there. So students are generally unaware about this whole process, and even the people who run this incubator facility are unaware about this whole process, how actually get that idea to be registered within that platform. So they are key players as well in this whole process. Independent consultants are there. There are many agencies who are working within country now. So just to mention about them, education groups are there, accepting the people who are outside of this university system are also there to provide them. Yes, there are some government organizations like SEMEDA is there, like we have this export promotion department and many others. They pretend to be there for the entrepreneurs. Actually, they are not, because they have their limitations in order to provide these services. Maybe the staff, maybe the funding issue, maybe the access to the concerned university incubators, and of course, maybe some issues maybe at the university incubators as well. Of course, government initiatives are very much, key, and they are partners and providing these services. For example, now HEC has developed a 2021 incubation policy where they have developed different their governing bodies nowadays, because this is the new concept in Pakistan and getting mature with the interventions of HEC and some other people as well. So YES program and others, they all help these incubators and the startups to grow. Of course, we have the incubators, accelerators, and scale group service provider like Pasha and so on. VCs, industry community groups, and others so on. Basically, the two perspective and 2 point of view are there for incubators. One is totally business-oriented incubators, and second one is community-oriented incubators, where the business-oriented incubators are focusing to develop entrepreneurship incubator model where they can earn some profit, where they can earn in terms of the equity, whether they can earn in terms of the exit strategy, whether they can earn in terms of the different stages of these startups. So they have these different models. They have unique selling point. For example, funding opportunity. For example, dot connection or linkages with different the stakeholders of startups. They have the resources. For example, shared services they use to provide, and like we are providing as well, photocopying, internet, telephone, and so on. They offer different incentives to the startups so that they can kick off, for example, initial seed funding, for example, free space, for example, maybe the equity and future investment. They provide an opportunity of networking like Pasha is doing, and the list goes on. As far as incubators as a community, we hardly find any such sort of activities here. But the local example that I can quote here is the SRSO, so the Rural Support Organization, where they are providing shared space to the women entrepreneurs. Basically, they are the artisans. So the focus in these two sort of models is that one is for the profit, whereas another is for
community development and community startups and ecosystem development. So management and operation structures. Recently, SSC, HEC, Higher Education Commission, gave this policy for management of these incubators in the public sector universities. That's the selection committee and steering committee. There are the two committees within this framework, whereas generally speaking, there are the board, there are the management and staff who looks after. There's a business unit of large organization, for example, Johnson & Johnson, for example, Lever Brother and main Unilever. They actually, what actually they do in is that they form their own board, and they give an opportunity to students to look after into their projects, to look after into their the process and so on. Then give up an idea so they can fund up, and ultimately they can come with a new innovation in the market. Of course, there are the facilitators as well, like Azhar Rizvi is supporting this incubation network within this university platform. He is from MIT, I think, network in the Karachi. So there are some volunteers who also support this whole process, and there are the many virtual, initiatives who are supporting, like Hassan Saeed, who just talked yesterday, I think. So through Idea Just platform, they are supporting and part of this different incubators and university initiatives. So operation process for the incubators is whether there's some offer for 3 months program, 6 months program, cohort 1, cohort 2, and 3. Whereas our model is concerned, it is very much straightforward. We do not exactly give a time frame to the startups, because I believe, and we at Sakarya University believe, is that the startups cannot be established and commercialized within 3 months of this scale-up period or so, whatsoever we give the name to that. We believe in the idea, and we believe in the commercialization of whatsoever the time it took, because a student does not have an opportunity to the funds. A student does not have an opportunity to assess and to go in the market, to start their own businesses. That's very difficult, that's very tough. Whereas incubator business models, different models in order to earn from this setup. Some are the sponsorship models and stakeholders model. Now, sponsorship and this stakeholder model is very much simple. They sponsor the business incubators. They initiate the business incubators for 2 or 3 purposes. One is that to enhance the existing products attributes, for example, to develop a new modus of operandi for their particular products. So in that area, the more focus is of the industry. Whereas for a sponsorship purpose, there are some investors as well who are basically interested in not the incubator whole process, but they are only interested in the idea, so that they can invest in and could be a partner, could be whatsoever the equity share percentage in that as well. Then are the government-owned provide innovation support fund, like somehow we have the YES program. Otherwise, we don't have. Government is just planning for that. Real estate play are there. Now this trend is being developing in Pakistan. There are the different people who are just trying to provide a platform, and they just charge a particular sort of rent. For example, in Hyderabad, the students of Mehran University just tried to have this adventure. They connected with different industry people and asked them if there is any space within that their units, so that they can provide to someone and they can pay you the rent, so that a proper utilization of that. And there are the equity stake. Some people provide a space only for the purpose of, so that they can become the owner of any selected startups. Stage of development focus, now let's suppose in university is very critical. The reason is that students have limited time within the university framework. For example, 4 years, 2 years, 3 years. In the second year, in the 4th year of their semester, they generally learn about this entrepreneurship process. And they took this adventure in their 7th and 8th semester. When the 7th and 8th semester means 4 years. And this is the critical point for a university business incubator.
if a student is outside of that location, for example, we have the students from throughout the country, from Gilgit to this Karachi and Thar, and once they complete their degree, they are supposed to leave the university. Now, how we can accommodate them? So, this is challenge for us in order to find out some investor or anybody so that they can get a benefit from this exit strategy of these students. Because if they take this initial stage idea or second stage idea to a market, they could not survive. The reason is very simple. They can't afford the routine costs of rent, of electricity, of to bear this warm weather, air condition, and so on, because they are still under the the income, their income is not in the positive figures. So that's why the service delivery, there are the many people within the incubator, they generally offer only training and admin core initiatives. That's it. So this is general university incubator challenges. Number one is interdisciplinary inter-campus hostilities. For example, it's very simple. The departments does not support the universities, the incubation within the university to carry out their efforts. This may be because of the competition, this may be because of the lack of synergy, and this may be because of the priorities of each department. That's the I think key reason within the university sector, where students' ideas or students' entrepreneur mindset is being disturbed. Lack of consistent vision when leadership change. Of course, the vice chancellor or the team comes for the 4 years or 3 years, whatsoever the tenure is. So this sometimes creates a problem for the business, the incubators, the person who's running the incubator, being a head or manager whatsoever, because the ideas could not be commercialized in a day or two. It takes some time. It takes the the improvement in the ideas, take the investment, it takes the continuous mentoring and coaching of the student. So generally the priorities vary. What's the person who is coming and joining the university, what's his or her priority? I think that's going to affect this process. Not walking the talk. The generally what I see nowadays in the universities, yes, they are the incubators. Yes, they are saying that we have incubated these and these ideas. So there's no practical output. Let's suppose if I see how many startups are being commercialized, if I say how many startups has earned the revenue, if I say how many startups has patents, if I say how many startups are in, let's suppose engineering department has created something, invented something, or how many startups has added value, and can we earn some profit? So generally discussion or talk is going on within the university, this system, but generally there is no output. Poor integration and into supporting ecosystem. Of course, both within the university and outside of the university, there's a huge problem for these startups, like from FBR to all the government regulating agencies. They are not, entrepreneurship oriented. They are not startups oriented, and they even do not have any policies in order to support them or entertain these youth in order to flourish their ideas. And even within the universities, there's a lack of skills, there's a lack of mindset, there's a lack of commitment, there's a lack of funding, and other issues are there. So a culture resistance to change is there. If I ask you, I tell you the story of Sakharabi University, the students do come here. This is not our story, this is every university's story. When the students come in the university, they have only two purposes. One is to get fit for the public sector job. Second is to get fit for the private sector jobs. Ultimately, there's no startup. So this is the cultural resistance from their parents or the family, because they send for this purpose. And many parents do ask us, we send our kid or our child in order to get fit for this public sector job, CSS, PCS, so on. A focus on the now instead of the new. So this is, there's no creation and innovation within this system.
And of course, the faculty don't have the time and space to innovate. Universities hardly provide a separate working environment to each and every individual within the faculty. Second, even within their incubator, spaces which are very limited within the university because they are not oriented towards this incubation process. So faculty could not find any time because of their research work, because of their class, because of their papers, many other engagements. Hardly there's no space for this innovation. And not rewarding the scholarship. Of course, there's a scholarship for students' education, there's a scholarship for girls' education, but there's no scholarship and rewards for the people who are entering in this adventure because risk is always there. And then, of course, what's HEC's policy and what is university's policy? Whether university want to be a, entrepreneurial university, entrepreneur-oriented university, because this is an area where when we visited different universities in the Queensland and many different areas of the Australia, we find out that they are contributing, the incubators are contributing in terms of the invention. They are contributing in terms of innovation, but they talk about the millions of dollars, they talk about thousands of dollars, where this is, they need, this current existing university system need to understand that we can be an entrepreneur university if we start investing and if we start changing our mindset in order to flourish this ORIC and business incubator, then they could be in a position in terms of the equity sharing, in terms of the any royalty fee if we want to charge these startups. Yes, lack of faculty entrepreneur mindset. I ask you a question. Within the WUM University and within Sakaraibi University and many other universities, many subjects are there for entrepreneurship, whether that's a computer science, business, or any discipline you have. Could you ask the question from them, have you created any single successful startup within that class, within that 4 years time period? The answer would be almost no. Hardly 1%, 2%, straightforward no. How we can expect this innovation? How we can expect this invention? How we can expect this creation? And so these are the challenges because lack of mindset, both in the faculty, in the student, in the parents, that's culture or community, and there is, of course, the management, the top management, maybe the governing body of the university. If you ask them, what's your entrepreneur policy? What's your support for this entrepreneurship process? What's your support to the incubation process? The answer again would be no. They have, because HEC somehow bound them. They have, because this is something in the market. They have, because the now we are thinking in terms of an entrepreneur term. So that's why. So these are the biggest, the general challenges that generally the universities and different people in this process face. And what actually I observed. So this is my learning and my observation. Number one is a student to be fit for a job. I already told and just discussed about this. Parents send them to be fit for the job market, whether that's private or public. The priority is public, not the private. So when we just start convincing them, start talking with them, teaching this entrepreneurship subject, and if we motivate them, the parents' calls come and they say, no, we send our this child to pass the CSS exams in 2023. So they just don't divert our guy. So this is how basically the happening and the system is. Then CEO mark. Few startups does come in after this all efforts that we take within the university framework. Few startups does come in, but the students' objective is that because they do not have any experience, just they write down, yes, I am the CEO of XYZ company. Oh yes, I'm the co-founder of the XYZ company. Oh yes, I was one of the key member in forming in this company. So after graduation, there's no company. During graduation, there's no company. During, after their studies, there's no startup. There's no financial contribution either to university or these individual students. Their mark is to this, and our incubator mark is that we incubated these 30 companies. We did this. But when we start analyzing these startups, there's no earning, there's no employment, there's no contribution in terms of innovation, there's no contribution in terms of the invention, there's no contribution in terms of, some financial contribution or patents.
Then final project for the sake of marks, yes, just go and check the engineering departments of every university and see these final projects are being done for the sake of passing that final project, and that's it. Because no, there isn't any mindset, entrepreneur mindset. So the projects are not being carried forward from different layers. For example, if I initiated some project in 2020, when the second batch comes in 2021, they should carry on that project so that we can one day achieve the invention mark. And the consistency of faculty within that parameter is so much necessary so that they can carry on that process and contribute some invention. And this may take years, and this may take 5 years, 6 years, 7 years, and 10 years. And our job is that include all of that team in that process. And of course, faculty publication for the sake of promotion and financial benefit. I think I don't need to talk on this. Everybody knows about this. The publications not contributing the inventions and not contributing to the innovation, and even not contributing to the value addition in that. And the universities who are just running ORIC and within umbrella there's a BIC, it's fine. But if there's a separate department of BIC and ORIC, there's always fight in that. So this is just general observation. Then entrepreneurs' skills and lack of experience, managers. I think industry person should be part of these two organizations. One is ORIC and second is BIC. If no industry person or the person who does not have any experience of industry, for example, if you ask me, being a director of this entrepreneurship center, you ask one question: do you know what the IPR is? Do you know how to file an IPR? Do you know how to file an income tax return? Do you know how to make an NTN, for example? If I don't know, I'm not fit for this job. So the faculty members who are just running these two departments lacks this skill, whether they have not developed or they are not ready for this job. HEC target, of course, HEC asked about what actually we have done in. And they ask for the number of companies incubated, in which sector, how many jobs created, both in terms of the direct, indirect, and internship. I think that's need to be, we need to think about that as well. So later, lack of entrepreneurial skills and mindset of faculty and students. The problem lies at both sides. Neither the student have the entrepreneur mindset, nor we have developed that. And whether the same is with the faculty as well. So we need to make this clear cut. This entrepreneur mindset can be taught in, this entrepreneur mindset can be developed in within the framework. We need to work on this. And then no lack of entrepreneur ecosystem within the university. Of course, in few developed universities, there's entrepreneur ecosystem, means supporting environment within the university. For example, we developed different programs, we developed different initiatives, we took different initiatives, so provide a conducive environment. For example, if my startup comes in my office and says, sir, I need an NTN. I ask, why you need an NTN? They say, sir, we went to the bank and bank asked us, if you don't have an NTN, we can't open your bank account. So this is how basically I just let them to sit in my office, and within few minutes we form their NTN. So this is how the conducive environment in some university has been developed, and in some, but in many universities where there are the incubators, 40 plus, they lack this, because they direct them to these liars and they charge them. This is very much difficult for them. And of course, universities and incubators, ORICs are running for a Y, X, and W, which category you have. So for not focusing on innovation, and of course, no focusing on innovation, the race is going on for these categories locally and internationally. And no space for community. There are the many university incubators. We have limited, but among these many, there's no space for community. What actually we did in Saqqara IBA University, we provided 30% space to our community members, where they can, actually carry on their startups, where they can come in and join with our students and our faculty members, our mentors, so that they can carry on. If any idea comes from the community, we appreciate them and provide 30% of our total space. And of course, poor ideas, no proper system and mechanism to test these ideas, whether they could be commercialized or not in first instance when we incubate them, because this is a numbering game and everybody just want to incubate if few ideas come in. And of course, weak patents,
that has no commercialization and that does not have any market. And of course, no or inadequate funding from the university or any other platform for these incubators, because ideas could not be materialized in 3 months or 6 months. They cannot start earning. In one idea, I'm going to tell you the practical example. We invested 3 years, and after 3 years, now our startup is earning the net income 1 lakh per month. And there are the many such examples. So we provided the space, we provided the continuous mentoring for 3 years. And now it's a successful startup in the market. So there are the many such we actually did. And so inadequate funding is there. And of course, survival of this incubator become a question mark in that. So the conclusion and lesson learned from managing incubators is that what actually we did in our setup, when I joined in 2014 with having 10 plus years experience in this entrepreneurship, youth and TVET sector development, I faced the few of challenges. What actually we did in, I just forget about the incubator. I start planning how actually engage the students in this whole adventure and how to realize them that this is something, an adventurous job where they can come in. We start strengthening our entrepreneurship society first, because there were the different societies. When I joined Sakrabi University, I started working on entrepreneurship society, the team of the entrepreneurship society, so that they could be visible within them, within their circle, within the university, and so that they can influence the student once they are convinced in order to enter into this adventure policy. I guided them, and with the support of our management, we provided them an opportunity to join different events in the LUMS, IBA Karachi, and somewhere NUST, and anywhere we could find something beneficial for them. We sent these students there, and ultimately the curiosity, the interest developed within these entrepreneurship society students, and they ultimately convinced the other circle that was within them, and we become able to organize the business plan competitions like DICE chapter. We are doing this since 2016. We have the HERD prize. This was basically the environment we tried to create, and we invested a lot of amount in that, because there was generally no output and there was generally no profit, but what actually we got in the curiosity, interest, and the students' involvement in this whole process. And then we come up with an idea of Ek Din Sale Ka. What we actually did in the month of November and December, we provide a one-day platform to all the students, which Dr. Shahid's he always talks about this bird in hand principle. So we just say them, whatsoever you have, don't invest a single money. If your mother knows how to make a Kashmiri tea, just bring your mother here and sell the Kashmiri tea. And when they start earning, now they are curious. Since last 3 years, we are organizing this Ek Din Sale Ka, and usually students sell, make a single day sale of 1 million, for example. So this is how basically happened in. And then we came up with some other programs as well, like Necessity Entrepreneurship Development Program. Why we call it a Necessity Entrepreneurship Development Program? Before 2014, we and other institutes in the region just only offered the skills training, and that's it. And you know the quality of training in these local, TVET institutes. We just develop a model of that. First, they give them a practical and quality training in TVET sector. Then give them 1 month or 2 months of entrepreneurship training, so that they come up with an idea from their skill and go back. Once they go back to their communities, they start, adventuring their idea within their community framework. And Alhamdulillah, we have now hundreds of startups in this TVET sector. Then we started the recognition of prior learning with the NEFTTC and this GIZ program. And again, we become successful in many startups in that area. Now, currently, we incubated 52 startups since 2014 data that we have. We created a number of jobs. We created a number of successful and commercialized startups in this whole process because of these different initiatives and convincing initiatives to the management and to the
students and faculty. So I'm going to just tell you a few this example. Right now, we are creating a history at Sakarya University. First time after COVID, we have now 20 startups at a single time, where they are employing 39 direct, employees, or they are somehow the co-founders or anyone. So they are paying to them. And apart from this, they have 19 part-time employees, and then they have some internships that they are offering to the other their classmates. So we don't have a place right now in our incubation, and they are sitting their floors like desks and so anywhere they find in a place. So we also developed different linkages with national international organization. We developed network, connected dots, and participated with each and every organization who supported and joined our hands in order to promote this entrepreneurship ecosystem and culture within the university, like TAI Pakistan, like Academy for Women Entrepreneurs, Contemporary School, and so on, the different organizations. Right now, we have 52 startups so far, we graduated and so on. So please, the floor is open for questions, and I am available if anyone have a question, I can try to answer them based on my own learning and experience. Thank you very much. Thank you, sir. Especially मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर तो मेरे लिए ही था, इसलिए कि इन वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान इंक्यूबेशन को मैं ही यहाँ पर देख रही हूँ, और जितने चैलेंजेस मुझे लगता है मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए कि जो बात आपने बताई कि मींस फाइनल ईयर स्टूडेंट मोस्टली लास्ट टाइम हमारे साथ, अभी हमें स्टार्ट भी मींस हमने स्टार्ट लिया है 2019 से, और आपको पता है कि उसके बाद फौरन ही से कोविड का इशू आ गया। जो बच्चे उस वक्त हमने कुछ आइडियाज लॉन्च भी किए, वो ग्रेजुएट होकर चले गए, अब कोई पता नहीं उन कंपनीज का कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा है। सेकंड जो चीज आपकी मीन्स है कि थोड़ा सा हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चों को टैक्सेशन, जब भी हम इसकी बात करते हैं या एनटीआर नंबर्स वगैरह, बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं कि ये मीन्स पता नहीं हमारे ऊपर क्या चीज आ जाएगी, हम फंस जाएंगे, हमारे साथ कोई मसला हो जाएगा। ये भी इशू फेस किया है, और ये एक मींस अच्छी हम ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं बच्चों को, जैसे डाइस में पार्टिसिपेट करवाया, ये लॉन्च पैड हमारा 9 रीजनल लॉन्च पैड 9 अबाउट ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में हुआ कंडक्ट, वहाँ हमने अपने स्टूडेंट को भेजा। लम्स में मीन्स कि कोई अभी हमारा सिर्फ यहीं तक स्टार्ट है, थोड़ी हमने पॉलिसी डिफाइन की, और कुछ ये कि हम स्पेस हमारे पास नहीं है, तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस तो मेरा ख्याल हमारा इंक्यूबेशन सेंटर ही फेस कर रहा है। तो उसके लिहाज से बहुत फ्रूटफुल थी ये चीजें, और कुछ जैसे है कि हमें इंडस्ट्री से आपकी सजेशन है कि बंदा एक जरूर लेना चाहिए, और इसी तरह बिजनेस के जो मैनेजमेंट का है उसका इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये चीजें और फर्दर भी मैं आपसे कम्युनिकेट करती रहूंगी, इसलिए कि हम तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं यहाँ पर। Sure. You are very near to us and we will support you. और मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की है, ये काफी हम सबके वही इश्यूज हैं, because we are in the same कॉमन। लेकिन सर आप लोग तो काफी बेहतर, आपकी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, आपके बिजनेसेस रन हो चुके हैं, रजिस्टर जो आपके थे वो मींस फ्लरिश कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर सेटअप तो बहुत इनिशिएटिव मीन स्टार्ट पर, और सबसे ज्यादा अभी ये भी बहुत जरूरत है कि बच्चों को इस तरह लेकर आया जाए कि वो अपनी बिजनेस को लॉन्च करें। सम टाइम जब हम बात करते हैं बच्चों से कि आप लास्ट ईयर सेमेस्टर में जब इलेक्टिव कोर्सेज में हम बच्चों को ऐसे असाइनमेंट देते हैं कि ऐसा असाइनमेंट बनाओ कि आपका बिजनेस हो जाए, वो हमें देखते शायद ये टीचर ही बेवकूफ है जो हमें ये कह रहे हैं हमें तो जॉब करनी है अपनी डिग्री कंप्लीट करके, तो ये मैडम हमें किस बात पे लेकर जा रही हैं। तो ये भी कल्चर भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि इधर डेवलप किया होना, मींस कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ये भी एक हमें कंस्ट्रेन है इधर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही है। देखें, दी स्टूडेंट्स व्हिच आर विद अस, जो हमारे पास टीवेट सेक्टर है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हार्डली इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स जब 6 मंथ्स के बाद पास आउट होते हैं, उन बच्चों को ये पता है कि उन्हें अपना एंटीन कैसे बनाना है। सारे हमने रिग्रेस ट्रेनिंग दी है उनको। अब वो मार्केट में एंटीन बना रहे हैं लोगों के, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे वो मार्केट में उनके एंटीन बना रहे हैं, उनके बिजनेस प्लान बना रहे हैं, उनके फाइनेंशियल मॉडल से। तो यहाँ तक हमने उनको ट्रेन किया है कि वो एक्सेल पे अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं।
अब ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने इमीडिएटली यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम लोन में अप्लाई किया एंड सम गॉट द लोन हमने भी सर, हमारे भी यहाँ पर स्टार्टअप पाकिस्तान में हुआ, हमारी बच्ची 2 बच्चों ने कम्पीट भी किया और वो भी प्रोसेस में कोहॉर्ट 1 वाले जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, वो इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह सर मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ और जैसे जैसे हमें इंक्यूबेशन को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सेंटर को मुल्तानियन इंक्यूबेशन सेंटर, हमने अपने सेंटर का नाम इंट्रोड्यूस किए, तो इंशाल्लाह हम आपसे कोलैबोरेट करेंगे। जरूर कीजिएगा, कम्युनिटी को ओपन स्पेस दें, उनको कम्युनिटी को एंगेज करें, उनको कहें कि मार्केट में कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है, एडवर्टाइज इट थ्रू एनी मीडियम जो आपके पास अवेलेबल हो इजली, उनको बताएं कि आपके पास कोई आइडिया है, जस्ट कम टू अस, और फिर आप उसको थोड़ा सा रिफाइन, थोड़ा सा कंटिन्यूस मेंटोरिंग कोचिंग करते रहें, तो वो फिर आइडिया निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो इन बच्चों से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बिकॉज ऑफ जो उनको एक्सपोजर है उन सारी चीज़ों का। दूसरी बात यह है कि स्पेस के बारे में यू डोंट वरी अबाउट इट, पूरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो स्पेस ही स्पेस है, आप उनको कहें भाई बैठ जाएं, दैट्स इट, नो वरीज अबाउट एनीथिंग। व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, आपको फोन चाहिए मेरे ऑफिस में आके यूज करें, आपको प्रिंटर चाहिए मेरे ऑफिस में आके यूज करें, आपको कोई बैठने की मीटिंग की जगह चाहिए मेरे ऑफिस आप यूज कर दें। हमने इस तरह किया हुआ है, हमारी कोई भी ऑफिस हमारी पर्सनल नहीं है, माय स्टूडेंट्स कम इन माय ऑफिस, have their meeting, make to call to anyone, make a discussion with me, हम इनको बार बार करें और टाइम फ्रेम से बाउंड ना करें प्लीज। आप अपने स्टार्टअप्स को किसी को भी टाइम फ्रेम से बाउंड ना करें, आइडिया फोकस बाउंड करें कि क्या आप समझती हैं कि इस आइडिया में ये पोटेंशियल है कि दैट कुड बी अ बिजनेस। अगर वो आप समझते हैं कि ये कमर्शलाइज हो सकता है, ये बिजनेस हो सकती है, तो फिर आप उसको रखें अपने पास, उसको टाइम फ्रेम में बाउंड ना करें, क्योंकि 3 months में 6 months में, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट आइडिया कुड नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। घर में तो करे तो हो सकता है शायद चल जाए, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी और गवर्नमेंट की बाकी जो रेगुलेटरीज हैं क्योंकि वो इतने फेवरेबल नहीं है वो उनको सपोर्ट कर सके, तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो चलो एक बर्डन हम बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको स्पेस मिल जाता है तो वो बाकी चीजें वो इजीली कर सकता है। ये 2-3 चीजें भी करेंगे तो ये पॉलिसी अभी हमने अपनी पॉलिसी डिफाइन की है, उसे एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करवाए। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन ट्रायर ऑफिस की तरफ से हमारे पास आया कि आपने इक्विटी कितनी की है। मैं बता कर, मैंने कहा बच्चे हैं ये हमारे, इन्हें तो हमने सपोर्ट करना है, इनसे हम क्या मींस परसेंटेज, इनको तो हमें फ्री मीन 0 इक्विटी पर रखना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो होती है वो भी थोड़ा सा हमें इसमें चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है कि आपके हर ऑफिस, हर लैब ओपन है फॉर एवरीवन, फॉर कम्युनिटी। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें थोड़ी सी अवेयरनेस मीन्स डेवलप करने के लिए हमें है कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताएं कि कम्युनिटी को और स्टूडेंट को जब तक हम कोई बेनिफिट्स नहीं देंगे, कोई भी फिर हमारे पास इंक्यूबेट करने के लिए नहीं आएगा। तो ये चीजें ये चीजें हैं। में करेंगे, एक स्टूडेंट है जिसका आइडिया सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टू बी द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, ऐसे ही है ना जी। तो वो अब आप उसमें इक्विटी शेयर क्या लेंगे? ऐसा आइडिया हो जो टेक बेस्ड आइडिया हो, फॉर एग्जांपल ऐसा आइडिया जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आप इनिशियल स्टेज में डोंट बी इक्विटी पार्टनर विद देम। आप इनिशियल स्टेज में उसको कहें कि ओके ठीक है, सिंस लास्ट 1 year वी आर प्रोवाइडिंग, और 6 months वी आर प्रोवाइडिंग आवर स्पेस टू यू, नाउ यू आर इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन। जिस तरह मैं हूँ, मैं हर वीकेंड में सब स्टार्टअप से जाके मिलता हूँ, बैठता हूँ, पूछता हूँ कि लास्ट टाइम आपकी प्रोग्रेस ये थी, अब क्या है, कौन सी मार्केट है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो डार्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। जब मैं देख लेता हूँ कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पॉजिटिव आना शुरू होते हैं, फिर कहते हैं कि यार मिनिमम जितना आप ये स्पेस यूज करें, इंडिविजुअल स्पेस या कोई स्पेस है, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट कर लें जो आप इधर यूज करते हैं, तो वो विलिंगली करते हैं। द रीजन इज दैट व्हाई विलिंगली, एक तो वो ये देखते हैं कि सिंस लास्ट 1 year दे आर विद अस और वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टू देम। सेकंड, हमारा उस बिजनेस में कोई स्टेक नहीं है। थर्ड, हमने उनसे कभी कोई चार्ज नहीं किया। अब जब वो प्रॉफिट स्टेज में आ गए तो उनको कुछ पैसे पे करने के लिए कोई इशू नहीं है। आप इक्विटी शेयर लेंगे तो आपको पता है कि फिर जो बाकी उसकी लीगलिटी फॉर्मेलिटीज में होंगे तो फिर आप एज ए पार्टनर होंगे उस बिजनेस में, तो अल्टीमेटली आपको ही फिर वो फेस करना है। तो आप फिर उनके एक सर्विस चार्जेस, और अगर कोई इतनी बड़ी टेक कंपनी है या आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे चली गई है तो फिर वो आप उनसे शेयरिंग कर लें, नो वरीज एट ऑल, बट लेटर स्टेज, नॉट एट एन इनिशियल स्टेज।
Exactly, sir. ऐसे thank you, sir, for your Thank you very much. informative and means कि ऐसे thought जिससे means बहुत सी मुझे भी चीजें पता चली हैं कि कैसे incubation को हम community के साथ specially कर सकते हैं, confined ना करें इसे faculty या students के साथ community को भी chance दिया जाए तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. Thank you, sir. Synergy और So nice of networking you. होती है, that's why. Exactly, Yes. exactly, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you Enjoyed. so Thank you much. very much. Thank you. Allah Hafiz. Now we proceed further, and I will invite Dr. Bukhari, Nasir Bukhari. I think Sir Bukhari ने हमें join किया है. मैं Sayyid Hamad Raza Bukhari. Sorry, sir. Sir, available है, sir. Please start your talk. Sayyid Hamad Raza Bukhari. Sir, please start your talk. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम सर. जी मेरा नाम अहमद रजा बुखारी है डॉक्टर साहब. अच्छा, सॉरी सर, मेरे पास मिस्टेकली अहमद रजा बुखारी साहब. सर, स्टार्ट योर टॉक प्लीज. जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आपकी आवाज क्लियर है. स्क्रीन भी शेयर हो रही है. अच्छा बस सही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Nascent entrepreneurs and budding entrepreneurs. So my topic today's topic is entrepreneurs and entrepreneurship. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? तो एंटरप्रेन्योरशिप आपने जैसे ये 3 दिन कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत कुछ बच्चों लर्न किया होगा. यू हैव लर्न अ लॉट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज यू हैव बीन catching up and accumulating in your mind. But don't get confused. So there are simple things you have to take into consideration, and from there and you can move into your venture or whatever startup you want to do. उसमें ये है कि अगर ये देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. ये आप तस्वीर में आप देख सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. So this road is like you starting a journey and you are an nascent entrepreneur. So it's like a journey, but it's not a destination, because your destination is long way. It's a winding way to go, and you have to face a lot of challenges and barriers like ditches, and you will face like some hurdles, a lot of problem. So that's why I selected this topic, like a journey from developing entrepreneurial culture in academia to academic entrepreneurship ecosystem. थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे कि मैंने बताया, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट्स वेरी ओल्ड कंसेप्ट एंड इट वाज यूज्ड इन फ्रांस इन 1437. उसके मुताबिक there were 3 definitions, almost there were more updated later. So a person who is active and achieves something. The word entreprendre means to undertake something. और 17th century में एंटरप्रेन्योरशिप जो फ्रांस जो फ्रेंच डिक्शनरी है उसमें उसको कहा गया, जो वो लोग जो रिस्क लेते हैं वर कंसिडर एंटरप्रेन्योर्स. लेकिन 18वीं जो है सेंचुरी
उसमें उन्होंने देखा कि there were other things as well, like uh, uh, there was some kind of contract to perform certain large tasks generally for the state, and fixed price were regarded as entrepreneur. So it's like enterprise. Now it is defined as a person who assumes the risk associated with opportunities, an alert discoverer and seeker of opportunities. And the latest definition is this one: an individual that generate business idea, convert the idea into product, service, and start a business enterprise based on the business idea with the aim of making profit and assuming risk involved in the management of enterprise. तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें लॉट्स ऑफ चैलेंजेस हैं. पहले तो स्टेज है कि वो आपकी आइडिएशन की स्टेज है जिसे कहा जाता है कि उसमें आपने आइडिया डेवलप कैसे करना है. उसके लिए भी एक ट्रेनिंग होती है, मेंटोरशिप होती है, उसके लिए भी एक तरीकाकार है. और इनक्यूबेटर्स का मकसद यही है कि आपको वहाँ ट्रेनिंग दी जाए और आपको असेसमेंट दी जाए और आपको रिसोर्सेज दिए जाएं. Then you can understand and narrow down your research. Even you can convert your research work, like a PhD student and master student, they can convert their research work into an enterprise or into a business model or whatever. It depends upon how they are trained to do their pitch. ये चीजें हैं कि हाउ दे कैन डू सक्सेसफुल एंड विनिंग पिच. तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है, मेंटरशिप होती है. इट कुड बी इन द एकेडेमिया एंड इट कुड बी with the affiliated organizations or community organizations or whatever. So उसके बाद ये characteristics थोड़े से हैं. एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरियल माइंड हो. वो उसके लिए जो है बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट देखते हैं कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो जैसे कि ऑलरेडी सब स्पीकर्स ने कहा है कि वो आते हैं और वो फिर वो अपनी डिग्री लेके चले जाते हैं और फिर वो है कि वो उसके उनके अंदर वो जो एक क्रिएटिविटी है या क्रिएटिविटी का एक एलिमेंट भी मौजूद है तो उसको आगे वो पास ऑन नहीं कर सकते या उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो इस तरह की जो एक प्रॉब्लम है वो लैग करती है. और एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए और कर रही हैं कुछ हद तक, लेकिन इट्स नॉट दैट मच अप्रिशिएटिंग. आई कैन सी एज हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी है कि उसमें एबिलिटीज और क्वालिटीज होनी चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए कि उसके जो है उसको फॉलो अप करे और उसको जो है वो डीप डाइव करे. सम कोर बेनिफिट्स उसके ये हैं. सबसे पहले है कि एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर में फ़र्क ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जॉब सीकर्स नहीं होते. दे क्रिएट द जॉब्स फॉर देमसेल्फ एज वेल एज देयर peers, जो उनके कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं. So it's like an enterprise. It's like you are not only taking something, you are giving a lot. So entrepreneur का सबसे बड़ा फायदा ये है यूनिवर्सिटी को कि they are not job seekers but they are creators, because they have come with a new or novel idea और उनका नेसेंट आइडिया है जिससे वो आगे डेवलप कर सकते हैं प्रोफेशनली और आगे दे कुड बी बिकम ए गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी के लिए भी एज वेल. एंड इसके लिए फिर ये है कि कुछ वो इंसेंटिव देना चाहिए बच्चों को. तो वो भी एक, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड हैं और इस तरह की चीज़ें हैं. उसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन होने चाहिए जो फ्रीक्वेंटली और इतने ज़्यादा नहीं है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो स्टार्टअप हैं या इनक्यूबेटर्स हैं उनकी वजह से थोड़ा सा ये ट्रेंड चला है, लेकिन इतना ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है. It tackle unemployment and create job as a sole proprietor or collaborator. Depend करता है कि आप जो entrepreneurship करना चाह रहे हैं, you want to be a sole proprietor, यानी आप अगर
اس کو خود انٹرپرائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کی افیلیشن یا آپ کولیبریشن سے کرنا چاہ رہے ہیں ادھر آرگنائزیشن اور ود سم یو نو گڈ پارٹنر. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اٹ گروز دا نیشنل اکانومی سے اکانومی بہت فرق پڑتا ہے انٹرپرینورشپ پہ, کیونکہ انٹرپرینورشپ کلچر سوری ٹو سے کہ ہمارے ملک میں وہ کلچر ہے نہیں, لیکن ایون ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے اور اسٹوڈنٹ بہت بریلینٹ ہیں, آئی کین سی, but they are not encouraged and I don't see any culture. لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے ممالک انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ دیکھیں تو وہاں تو اسکول لیول سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, اسکول کے سلیبس میں سلیبائی میں, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اسکول لیول سے ہی اسٹارٹ کی جاتی ہیں. ایون یہاں یو کین سی ان کینیڈا اسکول لیول میں یہ چیزیں اسٹارٹ کی جاتی ہیں کہ مختلف پروگرامز ہیں جو آپ کو انوالو کرتے ہیں, پریکٹیکل ہینڈز اینڈ ٹریننگ, اور اس میں اسٹیم پروگرام ہیں یا اس طرح کے اور بہت سے پروگرام ہیں جس سے بچوں کے ان کو بیسک لیول پہ اسکول لیول پہ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کلچر اور مائنڈ سیٹ ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا ایک ٹاسک ہے, وہ ہیو ٹو اچیو اٹ. سو اس کے بعد ہے دی کریٹ ویلتھ ٹو ریڈیوس پاورٹی اینڈ مینیج سوشل پرابلم. ظاہر اگر آپ انٹرپرائز بناتے ہیں یا انٹرپرینور آپ کی جرنی ہے تو اس میں آپ بہت سے جو اس میں آپ دوسرے لوگوں کو بھی پرووائڈ کریں گے اپرچونیٹیز, ان کو ہیلپ کریں گے اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے یا گائیڈ کریں گے, تو اس سے ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کمیونٹی بریجنگ ہوتی ہے. سو اٹس ویری گڈ تھنگ. تو اٹ ول ٹیک دا سائنس ان ٹو دا نیکسٹ لیول آف انڈسٹریلائزیشن. اب یہ ہے کہ ایکیڈیمیا کا اور انڈسٹریز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ویک ہے. So we can see that is a lag, is very lag behind, and we are, I think, a lot of far behind in this context. جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے, اور میں بھی اس پہ یہ کہوں گا کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے. اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیے ڈاکٹریٹ لیول پہ یا ماسٹرز لیول پہ جو اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں, ان میں سے اگر 200 نکلتے ہیں یا 150 نکلتے ہیں تو ان میں سے کتنے انٹرپرینور بنتے ہیں؟ تو ایک آدھ کوئی ہوتا ہے ایسے شاذ و نادری, یا اگر ہوتے ہیں تو 2 ہوتے میکسیمم, اس سے زیادہ 2 3 اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو ریشو اور پرسنٹیج بہت کم ہے. اس کے بعد ہے کہ اٹ ٹریٹ سوشل اینڈ سول انریسٹ, یہ بھی اس کی ہے پراپرٹی. انڈیویجول شوڈ بی انکریجڈ آف دا بینیفٹ ناٹ فورس. اور ہمیں بچوں کو جو ہے مائل کرنا ہے. وی ہیو ٹو کنونس آور اسٹوڈنٹس, not to force them to do this and this and that. یہ بھی ایک تھوڑی سی گزارش ہے یعنی مینٹور سے اور ٹیچر سے کہ تھوڑا سا اپنے بیہیویئر میں چینج لانے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک چیز اچھی ہے بچوں کے لیے کہ ان کو انکریج کیا جائے, ان کو جو ہے لیوریج کیا جائے. اٹ کریٹ کانفیڈینس, کیوروسٹی, کریٹیوٹی, کریج, willing to take risk, inner drive, rigor, ability to recognize business opportunities and create value for the customers. They are leaders, a role model to follow. Creates, produces circular economy. اب یہ circular economy بڑا فائدہ ہے کہ پاکستان میں یہ کنسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. تو یہ بیسیکلی سرکولر اکانومی کا مقصد یہی ہے کہ کوئی چیز بھی آپ لیتے ہیں جو ویسٹ ہے اس کو آپ ریسائیکل, ری پروسیس یا ری یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ جو ہے پاکستان میں آلریڈی ہے, لیکن اس کو ایجوکیٹ کرنے کی اور اس کو جو ہے اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اداروں کا اور جو انٹرپرینور آرگنائزیشن انٹرپرائزز ہے وہ اس میں کا رول پلے کر سکتی ہیں. Entrepreneurship is the best alternative to self-sustainability and self-reliance, and creates employment, achieve better economic condition. Entrepreneurs are people with vision, creativity and determination. یہ تو ڈسکس ہو چکا ہے. اب یہ ہے ٹائپ آف انٹرپرینور. کتنی قسم کے انٹرپرینورز ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں, یو نیم اٹ اینڈ دیر آر لاٹس آف ٹائپس. مین ٹائپس تو بیسیکلی جو ہیں وہ 4 ہی ہیں. اس میں ٹرو انٹرپرینورز ہیں جو یعنی they want to take risk and they want to do something and they are fully engaged.
मल्टी एंटरप्रेन्योर्स है कि बहुत सारी स्टार्टअप चला रहे हैं स्टूडेंट और वो काम करना चाहते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज में होते हैं, तो लेकिन बहुत कम होते हैं, आटे में नमक के बराबर, इज वेरी लेस नंबर, दे आर वेरी लेस इन नंबर। माइक्रोप्रेन्योर्स है, फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं और फिर वो आगे जो है स्टूडेंट्स को एंगेज करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। शुड हैव पैशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट शुड यू नो दे कैन स्टार्ट यू नो एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम होम। आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर निकलेंगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको माहौल एंटरप्रेन्योरशिप का मिलेगा, नहीं। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम होम। कोई भी प्रॉब्लम घर में आपको किसी किस्म का, आइदर इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यू नेम इट, लाइक टेक्सटाइल का कोई प्रॉब्लम है, इवन आपकी वेजिटेबल्स का कोई प्रॉब्लम है, ये एंड पे मैं थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करूंगा। अभी इसको आगे चलते हैं, तो बीच में ऑब्स्टेकल है और वो ओवरकम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर दोज पीपल हु डज नॉट लूज होप इफ दे डोंट फाइंड द वे दे मेक देयर डेस्टिनी और जर्नी, नो मैटर हाउ treacherous path is. As an entrepreneur it is important to know your strength and weaknesses. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को जो है मेजर करें या उसको कंसिडर करें। ये स्टूडेंट्स का काम है, और उसको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को यू नो उसको फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि स्टूडेंट्स को जैसे अभी वो डॉक्टर साहब बता रही थी कि या इंक्यूबेटर्स, उन्होंने मुल्तानी इंक्यूबेटर्स है, या इस तरह की बहुत सी जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कम्युनिटी सेटअप्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, तो उनका जो इंक्यूबेटर्स का बेसिकली मकसद यही है कि बच्चों को ट्रेन एंड ट्यून किया जाए इन द सेंस दैट दे शुड रिकग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि उनको बताया जाए कि हाउ दे हैव टू डेवलप देयर आइडिया। और आइडिया डेवलप करने के लिए एक टेम्पलेट होता है, जैसे बिजनेस कैनवस जो है, लीन कैनवस भी कहते हैं, बिजनेस कैनवस भी कहते हैं, एक पेज होता है, 1 पेज डॉक्यूमेंट है, तो वो फिल करना होता है। तो बच्चों को ये सिखाया जाए। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो अपना उसकी एस्टिमेशन और फाइनेंशियल जो उसकी जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप की एस्टिमेशन है वो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 पेज पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो ये अगर उनको गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि हाउ दे हैव टू डू देयर, हाउ टू फिल अप दैट बिजनेस लीन कैनवस। और फिर उसमें ये है कि एवरी स्टार्टअप के लिए डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि आप एक ही बिजनेस लीन कैनवस यू कैन यूज फॉर ऑल द स्टार्टअप्स। if you have different startups, so you have to make separately for each and every one. So उसमें mentor और mentee relationship is very important. Empathy map है कि analyze yourself, कि आप ये सोचें कि मैं हूँ और मेरे मेंटोर हैं, फिर इसके अलावा तीसरा बंदा है तो वो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में होगा, वो हाउ थिंक्स अबाउट मी, am I capable of doing the entrepreneurship, do I have the potential and the guts and courage. तो फिर उसमें एलिमेंट्स आएंगे, फील है, से थिंक, ये आइडियाज डेवलपमेंट के मुख्तलिफ हैं एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आपको ये कंसिडर करना है कि एंटरप्रेन्योर हैं तो किस किस्म के हैं, क्योंकि यहाँ पर बाज लोग हैं वो इन्वेंटर होंगे, प्रोमोटर होंगे, मैनेजर होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, और कुछ जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल होंगे या मल्टी एंटरप्रेन्योर होंगे। तो उसमें ये चारों चीज़ें, चारों एलिमेंट्स मौजूद होंगे। उसमें लो हाई की जो है वो वैल्यू रहती है। तो बेसिकली ये दिस इज द जनरल बिजनेस मॉडल कैनवस या टेम्पलेट या जिसे 1 पेज डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये बच्चों को आना चाहिए फिल करना का, हाउ टू फिल इट अप। इसमें की पार्टनर्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन इन्वॉल्व हैं, की एक्टिविटीज हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाई समबडी वांट टू, सो आप करने क्या जा रहे हैं, यू आर फाइंडिंग द सोल्यूशन। पहली तो बात यह है, you have seek out the solution, seek out the problem,
And now with this problem, you have to do the solution. You have to find the solution for it. So value proposition से मुराद ये है कि आप जो चीज प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, if you are making some product or you are developing some idea or you want to open an enterprise or you want to do the startup, so उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट में उसकी क्या डिमांड क्या है, क्या वो दूसरी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में ऑलरेडी इतने कंपटीशन में हैं, क्या वहाँ स्टैंड करेंगी, क्या उसमें वीक्स एंड स्ट्रेंथ्स हैं, वो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वो आप देखेंगे कि मार्केटिंग स्टैट्स होते हैं, मार्केटिंग जो हैं वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, मार्केटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेटजीज क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या चीज़ लैग करती है, किस चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है. So these are the things so that will come. तो कस्टमर रिलेशनशिप है कि आपका कस्टमर किस तरह का है, आप उसे किस तरह का रिलेशनशिप का कायम करना चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, कोई आपके जो हैं वो को ओल्ड कस्टमर हैं, आप न्यू कस्टमर को फोकस करना चाह रहे हैं, इज देयर एनी एज ग्रुप यू वांट टू इन्वॉल्व, सो और इसमें मेल हैं फीमेल हैं, किस तरह के कस्टमर, ये सारे उस पर आप पे वर्किंग होती है. फिर उसके बाद कस्टमर सेगमेंट्स हैं, इसमें ये देखें क्या उनकी कैटेगरीज आ गई, फिर चैनल्स, कौन से चैनल्स के थ्रू आप डिलीवर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, कौन कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो सकती हैं, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है. तो ये भी एक और दिस इज अनदर वन पेज डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड बिजनेस लीन कैनवस और बिजनेस मॉडल. ये भी उसी तरह का है, इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजेस हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ थोड़ी सी है कस्टमर, इसमें एक दो पॉइंट बाद दफा होते हैं डिफरेंट, लेकिन यह कि ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर स्टार्टअप के लिए डिफरेंट होता है. मिसाल के तौर पर फिजिक्स में किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, केमिस्ट्री का डिफरेंट होगा, इसी तरह और साइंसेस है, सस्टेनेबल या एनवायरमेंटल साइंस है, उसका ज़रा डिफरेंट होगा. तो वो आपको जो है वेबसाइट्स पे और गूगल पे अगर आप सर्च करें, सर्च इट ऑन द गूगल, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. तो एक और इसी तरह का ये है, ये भी वही है, की पार्टनर की एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सेम है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. अब ये एनवायरमेंटल बिजनेस मॉडल कैनवस है, उसको कैसे फिल करना है वो सारा इसमें ये है, टेम्पलेट है. फिर है ये होता है ट्रिपल लेयर्ड बिजनेस मॉडल, ये आजकल इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक आपका स्टार्टअप है लेकिन आप वन मैन, जो पहले कहते थे जी वन मैन शो है, तो वन मैन शो तो है, लेकिन है कि ही इज डूइंग थ्री थिंग्स एट द टाइम. ही इज एकेडमिक रिसर्चर, ही इज एंटरप्राइज फाउंडर एंड ही इज एंटरप्राइज मैनेजर. तो मैनेजर भी है, फाउंडर भी है, उसने बुनियाद भी रखी, रन भी कर रहा है और रिसर्च भी कर रहा है. तो ये आजकल का लेटेस्ट मॉडल है बिजनेस लीन कैनवस का, ट्रिपल लेयर्ड बिजनेस मॉडल. तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल है, इंडस्ट्री के साथ क्या है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे हो सकती हैं. ये केमिस्ट्री का है बिजनेस मॉडल, आप देख सकते हैं. ये भी एक केमिस्ट्री का है, तो इसमें भी आप देखें ये थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस हैं, इसमें ज़्यादा इतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कंटेंट्स का सर स्क्रीन शेयरिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, काइंडली इसे. अब आ रही, कैन यू सी इट? नो सर, विजिबल नहीं है आपके. पहले आ रही थी सर शुरू में आई है मेरा ख्याल, उसके बाद से आपकी नहीं आ रही है, मुझे तो बस आपकी पिक्चर सही. अच्छा मैं देखता हूँ ये क्यों नहीं आ रही. अभी नहीं आ रही. नो सर, नॉट विजिबल. सर आपकी पिक्चर शेयर हो रही है, लेकिन आपकी कंप्यूटर या उसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्लाइड शेयर नहीं हो रही. अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट.
अब भी नहीं हो रही? अब हो रही? नो सर, अभी भी स्टिल आपके स्लाइड शेयर नहीं हो रही. अच्छा, अब हो रही? नो सर, आप सर अगर स्लाइड्स भेज दें तो इधर से शेयर करवा देती हूँ मैं अपने अच्छा, आईटी. जी जी ठीक है, मैं ऐसे कर. मैं आपको भेज रहा हूँ. जब आपको मिल जानी चाहिए, मैंने सेंड कर दी, देखिए जरा. आपकी आवाज बंद है डॉक्टर साहिबा. सर आपने जूम पर शेयर की है? नहीं, मैंने ईमेल की है डॉक्टर साहिबा को. अच्छा चलिए ठीक है, मैं मैडम से कहती हूँ. क्योंकि शेयर में वो आ नहीं रहा, पता नहीं क्या स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है. सर मैं शेयर करवा रही हूँ बस इन फ्यू मिनट्स. जी, फिर मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से. ये पेज 13 होगा. हाँ, वहां से मैं शुरू करूँ. पेज नंबर 13 से start करें. जी डॉक्टर साहब, स्टार्ट करूँ? सर बस शेयर करने लगे हैं.
Sir, please start. जी, thank you. Slide number 13. जी, ये आप देख सकते हैं कि लीन कैनवस बैकग्राउंड या उसके कंपोनेंट जो मैं बता रहा था कि बिजनेस मॉडल जो वन पेज डॉक्यूमेंट है उसमें ये कंपोनेंट्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस आपसे किया है. प्रॉब्लम है, आपने यू हैव टू कम विद द प्रॉब्लम. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम एज आई सेड कि आप घर से कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम है, इवन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर लीकेज का है, कोई आप कोई चीज़ बनाना चाहती हैं कुकिंग से रिलेटेड है, कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कोई वेजिटेबल से रिलेटेड है, ये डिपेंड्स ऑन यू. सो देयर आर hundreds of thousands of startup you can do whichever best suits for you. तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ अपने फील्ड से रिलेटेड ही कर सकती हैं. यू कैन गो आउट ऑफ योर फील्ड. दैट्स द बेनिफिट एंड प्रिविलेज ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. उसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है. कस्टमर सेगमेंट है, यूनिक वैल्यू मैं आपको बता दिया, चैनल्स हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड इसमें ये सारी आ गई, कॉस्ट स्ट्रक्चर आ गया, की मैट्रिसेस हैं, नो मैटर इंडस्ट्री, ये थोड़े से कुछ और इसमें कंपोनेंट्स हैं. अनफेयर एडवांटेज है कि ये इसमें आप देख सकते हैं कि क्या अनफेयर एडवांटेज हो सकता है. कोई ऐसी चीज़ दो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, या आप उसको आपको फेक एंटरप्राइज या कोई ऐसी कंपनी बना के आपको जब ब्लैकमेलिंग कर सकता, तो ये अनफेयर एडवांटेज में आ जाएगी. फिर असेसमेंट स्टेज है और ये सारी चीज़ें हैं. फिर आप देखें बेसिक केमिस्ट्री टाइप्स हैं, इसमें कौन कौन से बिहेवियर होने चाहिए एंटरप्रेन्योर के लिए. ड्राइवर होना चाहिए, गार्डियन है, इंटीग्रेटर है, पॉइनियर है, ये सारी उसकी डिटेल है, ये इसमें मैं नहीं जाऊँगा. फिर अब ये है कि 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं फ्रॉम 0 to 5. सो वैसे तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, किसी ने 12 बनाई हुई हैं, किसी ने 20 बनाई हुई हैं, हर एक का अपना अपना एक माइंड सेट है. तो स्टेज 0 है कि पहला तो ये है कि आप कोई आइडिया लेके आते हैं, या आइडिएशन स्टेज में होता है कि या तो आपका आइडिया है या नहीं है. यू हैव आइडिया एंड यू डोंट हैव आइडिया. तो ये आप शुरू में ही इसको डिसाइड कर लेते हैं कि if I want to be an entrepreneur or if I don't want to be an entrepreneur. So it's your thinking. You have to decide. You have to take into consideration. हाँ, गाइडेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, वो एक अलग चीज़ है. तो स्टेज 2 है अनअवेयर. बात चीज़ों में अनअवेयर हैं तो आप जो आपके इंक्यूबेटर्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडेमिया में आपके जो इस तरह की हेल्पिंग या मेंटोरिंग आपके एसोसिएशंस हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनसे आप रब्ता करें, वो आपको बताएंगे. वी कैन सॉल्व यू टू गेट थ्रू योर जर्नी. स्टेज 2 में ड्रीमर है, आप ड्रीम करेंगे, थिंक करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आप सोचेंगे अच्छा ये आइडियाज़ हैं. अब आपके पास अगर 50 आइडिया हैं या 10 आइडिया हैं या 5 आइडिया हैं, उनमें से आपने एक आइडिया को कैरी ऑन करना, कैरी ओवर एक करेंगे आप. ये नहीं है कि आप 10 आइडिया हैं तो 5 के 5 आइडिया पे काम करना शुरू कर दें. हाँ, ये हो सकता है कि आप 5 आइडिया नोट डाउन करें, एक make a habit that you have to have a diary, like a journal or diary, whatever you can say, and then start noting down each and every detail about brainstorming your business idea, और आइडिया का नाम से उसका टाइटल हो, फिर उसकी डिटेल हो, जो मैंने बताया आपको लिंक कैनवस के हवाले से. फिर उसमें से आप वो आइडियाज पे रोज वर्क करें, और फिर अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें. फिर वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आप इस पे ज़्यादा काम करें. तो डिस्कशन से होगा कि यू विल नैरो डाउन इनटू वन सक्सेसफुल स्टार्टअप. ये एक अच्छा जो है स्कीम और तरीकाकार है. स्टेज 3 में प्लानर आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर आएगा, और फिर स्टेज 5 पे एंटरप्रेन्योर.
So the entrepreneur, जब आप सक्सेसफुल बिजनेस रन करते हैं, यू आर इन द मार्केट, सो ये स्टेजेस हैं. इसी तरह किसी ने 8 स्टेजेस एंटरप्रेन्योर प्रोसेस की बनाई हुई हैं. उसमें टूल्स हैं, ऑपरेशन, फाइनेंस, क्रिएटिंग द बिजनेस प्लान है, फाइनेंसिंग द वेंचर, इम्प्लीमेंटिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं. 5 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप किसी ने बनाई हुई. उसमें आइडिया है, लॉन्च है, वैलिडेशन है, ग्रोथ, ट्रांजिशन है, और फिर इंक्यूबेशन प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि वो इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस, दे हेल्प यू इन कैरिंग ओवर योर स्टार्टअप एंड बिजनेस आइडिया. फिर उसमें इकोसिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटी में एक बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है कि उसमें जो है वो ऐसा माहौल हो, लाइक माइंडेड पीपल्स का, और ग्रुप्स हों, और organizations or association or societies हो, so they can help you to get through your journey, or you don't stuck in any of your way. So ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, या इंडस्ट्री के साथ अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं. तो ये विद इन द यानी हाउस ये चीज़ डेवलप हो सकती है, या उसको इनक्यूबेट कर सकते हैं. Academic entrepreneurship for startup entrepreneurs. अब academic basically entrepreneurship जो है उस पर बहुत वर्क करने की जरूरत है. With as I was telling you already about that the academia industry relationship is very weak and poor, and it need to be revisited, and it need to be installed again. So science is everything everywhere. As already आपको पता है. Entrepreneurship program can also strengthen students' interest in the development of new enterprise. तो सबसे बड़ा फायदा entrepreneurship का ये है कि अगर आप प्रोग्राम वहाँ पे जो जो ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे डिफरेंट टाइप के, आप शॉर्ट कोर्सेज से शुरू करें. शॉर्ट कोर्सेज से शुरू करें, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम और डिग्रीज की तरफ जाएं. जैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं. So there's a lot of potential and lot of things need to be done. जैसे यहाँ पे है, और कनाडा में भी इसी तरह होता है, और यूरोप में भी इसी तरह है कि वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप के जो आपके इंक्यूबेटर्स हैं, और आपके जो है डिपार्टमेंट की एफिलिएशन है हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो आईटी का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, किसी भी चीज़ का है, तो उसमें सब का जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ होता है affiliation. फिर educational programs में not only give students to start new business but also develop skill for employability. अब उनके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि एम्प्लॉयबिलिटी कैसे करनी है. क्या उन्होंने खुद जो है वो एज ए एम्प्लॉय बनना है, या एम्प्लॉयर बनना है उन्होंने. तो ये दोनों चीज़ों को वो जो है उसमें वो डेवलप करते हैं, और उसमें बेहतरी लाते हैं. अब एंटरप्रेन्योरशिप एग्जांपल्स दुनिया में बहुत सारी हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इकॉनमी है, एक कंपनी है नेदरलैंड में कैम वोल्टा, वो उस पर काम कर रही. ग्रीन केमिस्ट्री, सर्कुलर इकॉनमी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एकेडमिक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, university play a fundamental role in developing, creating, and innovative talent. Education for entrepreneurship can strengthen the entrepreneurial skills through strategies that favor them to achieve this. Universities have created complex entrepreneurial ecosystem comprised of courses that retain students through interest groups or simulator mentoring and active learning. वो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसमें जो है वो आपके जो इनक्यूबेटर्स हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, या कोई और एनजीओज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे मौजूद हैं. तो वहाँ पे आपको मेंटोरिंग भी होगी, गाइडेंस भी मिलेगी, आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप भी मिलेंगे. विद इन द यूनिवर्सिटी एकेडेमिया ये चीज़ें डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है. A lot of potential in it, and that you don't need to go outside if you are not want to go. So there are 3 key elements: connectivity, connecting community efforts to build commitment to entrepreneurship and innovation, strengthen business commitment, strengthening entrepreneurial skills. These elements are developed through activities that are integrated inside, outside the business curricula.
benefits of entrepreneurial ecosystem, say contributed to local, national और global, यानी तीन के benefit हैं. आप locally कोई चीज़ बनाते हैं, फिर उसको आप national level पे लेके जाएंगे और फिर global जो challenges हैं, ये competition है, उस पे आप उसको लेके जाएंगे. तो इसलिए ये मुख्तलिफ stages हैं development की और progress की, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो उसकी अगर आप देखा जाए तो ये डिस्कवरी, यहाँ आपने कोई चीज़ डिस्कवर की या आपने इन्वेंशन की यूनिवर्सिटी में और उसको आपने पेटेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें होता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो उसके राइट्स हैं आपके, कोई और उसको ना कर दे, या उसमें प्लेजियरिज्म का मसला आ जाता है. फिर पब्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, मार्केट टेस्टिंग है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है. जो मार्केट टेस्टिंग के बाद उसमें ये आप पार्टनर है, किसी के साथ पार्टनर करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी के साथ, तो ये स्टार्टअप है, टेक ट्रांसफर है, बिजनेस प्लान है, और फिर ये आपका एंजल इन्वेस्टर, और फिर आपका ये डिलीवरेबल्स है, फिर आप उसको मार्केट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को. तो ये इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. और ये भी एक इसका है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व है, फियर फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी फैक्टर है, एक्सटेंसिव वर्क आवर्स है, फैमिली एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. देखिए इंटर्नशिप है, नेटवर्किंग है, अंडरस्टैंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, मैनेज योर टाइम, स्पॉट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट है. और फिर ये देखें आइडिया स्टेज, फिर एक्सपेरिमेंटल, फिर क्या, जब आप एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर अगर आपकी ये कोई बायोमेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है या कोई इस तरह की कोई फार्मास्यूटिकल है, तो फिर आप क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ जाते हैं. तो फिर या अगर आपकी दूसरी प्रोडक्ट है तो वो आप उसको मार्केट से उसकी टेस्टिंग करते हैं, मार्केट में उसको मुख्तलिफ ब्रांड के साथ एफिलिएट करते हैं, या अपना कोई ब्रांड हो तो उसका कोई XYZ ब्रांड बना के तो उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. तो ये चीज़ें, फिर प्रोडक्ट प्रोटोटाइप है, तो उसमें आपने देखना है कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं. आपने जो नई चीज़ बनाई है, क्या इज इट इज इट डिमांडेड और इज इट रिक्वायर्ड इन द मार्केट, करंट क्या करंट मार्केट ट्रेंड क्या है, वो आपको स्टैट से पता चल जाता है. फिर न्यू वेंचर है, डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है. ये देखें अपॉर्चुनिटी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्स है, सस्टेनेबल, ये मुख्तलिफ है. इसी तरह ये आप देखें स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये सारी इसके मुख्तलिफ समरात हैं. आप देख सकते हैं कि एक्सेस टू दिस, एक्सेस टू दिस, मैचुरेशन है, ग्रोथ है, लॉन्च है, करिकुलर है, विजन और गोल सबसे पहले होना चाहिए. फिर ये है कि जैसे मैं अभी आपसे आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट वी नीड टू हैव एंटरप्रेन्योरियल कल्चर इन द एकेडेमिया और एट द स्कूल, एट कॉलेज लेवल. तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल से जो एडवांस कंट्रीज हैं या आपके डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट कर देते हैं, हाई स्कूल में जाके उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी और मास्टर और PhD लेवल पे वो पूरी एंटरप्राइज बना चुके होते हैं, या अपना स्टार्ट जो है वो पूरा जो आपका लॉन्च अप अपनी कंपनी जो है वो स्टैब्लिश कर चुके होते हैं. और ये यहाँ पे इस तरह का है. फिर ये है कि वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, serendipity trigger है, start enter activity, encounter issue है, become business savvy, lesson learn, hero journey. यानी इस स्टेज पे आप कंप्लीट एंटरप्रेन्योर या आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो ये बहुत लंबी जर्नी है अगर ये स्कूल लेवल से देखी जाए. लेकिन अगर हम वी आर स्टार्टिंग आफ्टर our graduation or undergraduate, so then how we gonna cross all these steps? So that's what we have to think. And it doesn't need to be like 20 years or 10 years. It may need like 1 year, 6 months at least to get through the rigorous training and and knowledge and mentoring. So mentoring there is the best way to get through your entrepreneurship journey. मैं suggest करूँगा students को. फिर मेरी suggestion थोड़ी सी यही है इसी तरह
University should introduce programs, वो मैंने already discussed. University should be conducting pitching competition to present their business ideas. वही lean canvas they can use. और फिर there should be award and scholarship for young entrepreneur in house and abroad. तो ये डिपेंड करता है कि वो स्कॉलरशिप हो, अवार्ड्स हो उनके अचीवमेंट पे, ताकि उनको इनकरेज किया जाए. Whatever research student do complete, they can help them to decide their future. Every student should be encouraged to expedite their research expertise for running. क्योंकि होता है बाज़ दफ़ा कि स्टूडेंट को बाज़ दफ़ा इनकरेज नहीं किया जाता है या डिस्करेज किया जाता है, जिससे वो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट डिस्करेज या डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वो आगे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अपनी कैरी ऑन नहीं कर सकते. एकेडेमिया इज नीडेड टू गिव गाइडेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जितना वो दे सकते हैं. बाकी वो अर्न कर सकते हैं अपने स्टार्टअप से या अपनी जो आइडिया सक्सेस स्टेज है उससे उसको हेल्प मिल सकती है. उसके बाद है लैक ऑफ टाइज, कम्युनिकेशन, आइसोलेशन, एकेडेमिया. सो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है कि जिससे जो है उसको रीयूनाइट करने, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप जो एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज का है. Entrepreneurial skill, identify, test, help. कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ उन्होंने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रखे हुए हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनको वो उस टेस्ट से गुजरना पड़ता है. उससे होता है कि वो पूल आउट हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स दे हैव विच हैव द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. तो ये यहाँ की यूनिवर्सिटियों में और यूरोप में आमतौर पे ये टेस्ट जो है वो से गुजारा जाता है यूनिवर्सिटीज़ को, और फिर वहाँ से पुल आउट किए जाते हैं स्टूडेंट्स, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से भी उनको जो है पुल आउट किया जाता है, और फिर वो एक वर्क फोर्स बना देते हैं, और फिर वो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम फॉर द फ्यूचर, यानी अपनी जनरेशन्स के लिए और आगे अपनी यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जो है वो जो उसको जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं. अब इसमें मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था इसके हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप के, तो थोड़ा सा मैं उस पर आ जाऊंगा कि ये इधर इसमें ये मैं कह रहा था कि आई वाज टेलिंग दैट एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस इट्स अ फुल टाइम जॉब. तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ पार्ट टाइम जॉब. तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को ये रियलाइज करना चाहिए कि when they are doing their research they should start thinking, they should already been guided by some good mentors or organizations, and by the incubators, so they can process their innovation in a better way and get it and put into the market. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम हो सकता है स्टार्टअप के लिए. अब जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टार्टअप के हवाले से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया गया है. ये फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने कुछ काम ऐसे किए. पहले ही होता था कि आई एम गिविंग यू द वन सिंग एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से. पहले होता था कि जो है वो आप टमाटो की मिसाल ले सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो बहुत ज़ाया होते थे हमारे मुल्क में, और अक्सर जो है इस्तेमाल से ज़्यादा वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी. अब वो उन्होंने कुछ सालों से पाकिस्तान में काम हो रहा है, कुछ इंक्यूबेटर्स और ये काम कर रहे हैं. मुझे अच्छा लगा कि वो क्या कर रहे हैं कि टमाटर को या तो उसकी पेस्ट बना लेते हैं या उसको ड्राई कर लेते हैं. तो ये इस तरह के hundred thousands of ideas you can process and you can execute. तो आप उसमें देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर काम कर सकते हैं. इसी तरह और बहुत से काम हैं, जैसे वेस्ट वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर का सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है. यू स्टार्ट विद द स्मॉल आइडिया. ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े आइडिया से शुरू करें, इसलिए मैंने कहा है कि यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम. सो अगर आप घर से शुरू करेंगे तो आप यू विल बिकम ए गुड एंटरप्रेन्योर.
اگر آپ گھر سے نہیں اسٹارٹ کریں گے تو پھر آپ بڑے لیول پہ جائیں گے تو پھر you will come across failure many times. وہ تو ہوگا اس جرنی میں. ایسے تو ہوتا ہے کہ you will fail maybe 10 times, 20 times or even 50 times. Doesn't matter. So you have to continue your journey. یہ آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے, ڈسہارٹ ہو جائیں گے تو then you won't be able to continue. اس طرح کے بہت سارے اور اسٹارٹ اپ ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے اس میں آپ جتنے بھی ویسٹ پروڈکٹ ہیں, مثال کے طور پر ہمارے ملک میں دودھ بہت ضائع ہوتا ہے, ملک جسے کہتے ہیں, تو اس کی بہت ویسٹیج ہے, اس میں ملاوٹ بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے بھی انٹرپرینورشپ پہ بہت کام ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ویسٹیج پروڈکٹ ہے یا ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم ری پروسیس, ری یوز اور جو ہے وہ ریسائیکل کر سکتے ہیں, اور وی کین یوز اٹ فار بینیفیشیل پرپزز. آپ یہاں پہ دیکھیں یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں اس وقت جو اسٹارٹ اپ ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یا یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں آلریڈی, تو وہ کافی ایڈوانس لیول پہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یو کین سی جو ایون کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ کی جو وجوہات ہیں وہ کن وجہ سے ہیں, اور ان کو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین, دیز آر دا ٹو مین فار آور پلانٹ. ہمارے جو پلانٹ کے دوست نہیں ہیں, سو دے آر کازنگ دا گلوبل وارمنگ. تو ان کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, ری پروسیس کیا جا سکتا ہے مختلف سٹیپس پہ, مختلف کیمیکلز بنانے میں, پھر ان کو جو ہے وہ یوزفل پروڈکٹس کے لیے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ سے بہت سارے بائی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں, جو کاربن ڈائی آکسائڈ جس کو ہم کہتے ہیں جو گلوبل وارمنگ پیدا کر رہی ہے, اور میتھین 20 ٹائم جو ہے وہ زیادہ پوٹنٹ ہے دین کاربن ڈائی آکسائڈ. تو جہاں کی مختلف یورپ اور ادھر نارتھ امریکہ میں جو کام ہو رہا ہے وہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ وہ جیسے اسٹارٹ اپ پہ کام کریں کہ ان کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے. کیپچر کرنے کے بعد جو ایٹماسفیئرک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو پھر لیکویفائی کر کے اور مختلف یوزز میں, اور اس کو ایز اے فیول بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کو پلاسٹک جنریٹ کرنے کے لیے, اسی طرح ویسٹ پروڈکٹ کا میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ دیر آر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویسٹ پروڈکٹ. سو وہ اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ری پروسیس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دودھ ہے جو اتنا ضائع جاتا ہے, اور دہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ پلاسٹک بنانے میں کام ہو رہا ہے. یورپ پہ بہت کام ہو رہا ہے, نارتھ امریکہ میں ہو رہا ہے کہ اسے پلاسٹک اور پالیمرز بنائے جا رہے ہیں. تو اس کو ری پروسیس کر بجائے یہ کہ وہ ویسٹیج میں جائے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنے یا بہت سارے انفیکٹیس ڈیزیز اس طرح کی پرابلمز آئیں, تو سولوشن جو ہے وہ یو ہیو ٹو فائنڈ. So if you come up with the problem, you have to find the solution. So that's the key of the entrepreneurship. That is all from me. And if you have any question, you can ask. Thank you very much. Thank you, sir. So nice of you आपने हमें बिजनेस प्लान बनाने का और मीन्स कैसे किन एरियाज में हम स्पेशली बायोलॉजिकल साइंसेज वाले काम कर सकते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर. और जी बहुत सारे हैं. जी, और अगर पाकिस्तान का आपको प्रॉब्लम भी है जैसे जी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ट्रैश उसमें अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइडेंस भी मैं दे सकता हूँ. डॉक्टर साहब के पास मेरा है कांटेक्ट है, या उसमें आप कोई मेंटोरिंग चाहते हैं वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ मैं. बच्चे जो हैं अभी लॉन्च पैड रीजनल लॉन्च पैड 9 हुआ यहाँ उस पर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग और वो यही है कि हॉस्पिटल से जी ट्रैश जी जी इकट्ठा करके ताकि उस चीज़ को जो है जी उसकी मीन्स कंजम्पशन को किया जाए. तो इस जी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है मैडम. खुद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे काफ़ी का काम जी है जी डॉक्टर मलिका का. तो इंशाल्लाह जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है जी कि हम ज़रूर आपके साथ जी करेंगे. जी
اب جیسے وہ آپ یہ سالڈ ویسٹ کی بات کر رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ دیکھیں کمپوسٹنگ ہو سکتی ہے، اس میں ری پروسیسنگ ہو سکتی ہے. ہاں جی، اس میں ونڈو کمپوسٹنگ ہے، اس کا میتھڈ ہے، اور بہت سے ایروبک کمپوسٹنگ ہے، اور بہت سے میتھڈز ہیں. تو وہ جو آرگینک مٹیریل ہے اس کو آپ ری پروسیس ری یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ سالڈ ویسٹ میں سے سیگریگیٹ کر کے یہ بڑی اچھی ہے. بہت سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں، لیکن بہت سالوں سے اور مور دین ہاف سینچری کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ایز ڈیڈ اینڈ پڑی ہیں. Thank you very much, sir. You're It's welcome. almost our closing time. جی And some closing remarks from Dr. Malika Rani. جی، Thank you, sir. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. جی بچے کیسے سب لوگ؟ یہ ابھی تو آپ لوگوں کی صرف 13%، ابھی 13 پارٹیسپینٹس ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ اس کو انکریز کریں کہ آپ لوگوں کے لیے کانفرنسز کرواتے ہیں تو ذرا آپ لوگ انٹرسٹ لیا کریں. اور نالج شیئرنگ، یہ بڑے ماشاء اللہ ایکسپرٹس تھے جو اپنے فیلڈس میں تھے، تو یہ ان لوگوں کی بہت ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری کانفرنس میں آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور اپنا جو ویلیویبل نالج ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اٹینڈ کیا کریں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی کانفرنس رہی، آلدو کہ ہمارا فیلڈ نہیں تھا، لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دا اسپیکرز. انہوں نے وقت نکالا اور انہوں نے ہمیں انٹرپرینورشپ، حالانکہ ہم سائنس کے لوگ تھے، ہمارا اس سے کوئی ریلیشن نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب ہم اپنے سائنٹیفک جو انسٹرومنٹس ہیں یا جتنے بھی سائنٹیفک ڈیوائسز ہیں ان کو ہم کس طرح سے ہم ان کو لانچ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. بہت یوزفل کومنٹس تھے، بہت یوزفل تمام ٹاکس تھیں. آئی ہوپ سو کہ سب لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بلکہ فزکس کے بچوں کو تو خیر اب ہم نے انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر آنا ہے، اور اب تو آپ لوگوں کے اوپر فرض ہو گیا کہ اب آپ اپنی ڈیوائسز فیبریکیٹ کریں اور ان کو پھر ان کی مارکیٹنگ کریں اور ان پہ اپنے بزنس اسٹارٹ کریں. تو ہاں تو ٹھیک ہے جی، آپ کیا کریں. ہاں ہاں، تو یہ ماشاء اللہ آپ سب کا بہت شکریہ جو پارٹیسپینٹس تھے. اسپیکرز کا بہت شکریہ، ماشاء اللہ سب نے بہت اچھی ٹاکس تھی. بہت اچھا ہمارا جو نالج شیئرنگ ہوئی ہمارے ساتھ. آئی ٹی ٹیم کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عبد العزیز کا بہت شکریہ. ماشاء اللہ 3 دن کنٹینیوسلی انہوں نے ٹائم دیا ہے، اور ماشاء اللہ بہت اچھی، شی از ویری گڈ آرگنائزر. اور آپ سب کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کانفرنس کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. ہاں جی عظمیٰ عرفان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ہمارے وقت کی ریکوائرمنٹ تھی، کیونکہ ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں ماشاءاللہ وہ ریسرچ میں اپنے پیٹنٹ فائل کرنے تک پہنچ گئے تھے، تو پھر اگلا سٹیپ ان کو مارکیٹنگ ہی سکھانا تھا. تو یہ ہمارا پرپس تھا کہ ہم ان کو مارکیٹ جو ہے وہ کرنا سکھائیں، ان کو انٹرپرینورشپ سکھائیں، تاکہ یہ لوگ جابس کے محتاج نہ رہیں، بلکہ ہم لوگ ان کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ڈیوائس فیبریکیشنز میں یا انسٹرومنٹس یا ان جو الائنسز ہیں ہوم جو گھر کے جو چیزیں ہوتی ہیں الیکٹرانکس الائنسز، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ہم خود سے بنانے کے قابل ہو جائیں. اور اس لیے ہم لوگوں نے یہ کانفرنس کروائی تھی تاکہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو انٹرپرینورشپ کی طرف. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کانفرنسز کرتے رہیں گے. بلکہ ہم نے ایک گروپ بھی بنا لیا انٹرپرینورشپ والوں کا، جتنے بھی ہمارے اسپیکرز تھے وہ ہمارے ساتھ اس میں ایڈ ہو گئے. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا تاکہ کوئی بھی ہمارا بچہ ویلنگ ہوتا ہے کہ وہ یہ اپنی ڈیوائس کو مارکیٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے گروپ میں کنسلٹ کریں گے اور ان سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک تو کنسلٹنسی دیں اور ساتھ میں ان کو سپورٹ بھی کریں. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.
تو آپ لوگ سر احمد رضا بہت شکریہ سر, آپ نے ہی انیشیٹ کروایا تھا جب لاسٹ کانفرنس ہوئی تو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور انٹرپرینورشپ پہ بھی کانفرنس کروائیں, تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مشورہ دیا اور ہم نے کر دیا, ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. آج دو کہ بڑا مشکل تھا میرے لیے اسپیکرز اکٹھے کرنا, اور وہ بھی انٹرپرینورشپ اور یہ بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا, کیونکہ میں تو سائنس کی ہوں, چلیں کیمسٹری کی ہوتی, لائف سائنسز کی ہوتی تو چلو میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اسپیکرز جاننے والے ہوتے, لیکن یہ تو ٹوٹلی میرے وہ ڈفرینٹ فیلڈ تھا, آؤٹ آف فوکس. ہاں آؤٹ آف فوکس تھا. لیکن ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا دیا, اور یقین کریں کہ اب ہمارا جو فوکس ہے نا وہ اسی پہ ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود کو فیل کریں کہ یہ اپنی ڈیوائسز بنائیں, ان کو لانچ کریں, اپنے ایریاز میں جائیں اور اپنی ارننگ کریں. ہم ان کو انشاءاللہ اس میں ایکسپرٹ, ہاں جی انشاءاللہ اس میں ہم ان کو ایکسپرٹ کریں گے. سسٹینیبلٹی فار یور سیلف اینڈ فار یور کنٹری, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے سر. چلیں تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا سر, اور آپ سب پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ, تمام آرگنائزرز کا بھی شکریہ, اور وومن یونیورسٹی ملتان کا, ہماری خاص طور پہ وائس چانسلر صاحبہ کا شکریہ. ہم چاہے شارٹ نوٹس پہ ہم کچھ بھی لے کر جائیں نا تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا, وہ کہتے ہیں جی جائیں آپ کریں, بس وہ اتنا کہتے ہیں آپ کریں, میں ساتھ ہوں. تو یہ ان کی جو انکریجمنٹ ہے, یہ جو ان کی سپورٹ ہے, یہ ان کا جو اعتماد ہے ہم پر, تو یہ ہمیں آگے لے کر آتا ہے. ہم بے دھڑک چیزوں کو کر گزرتے ہیں, اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو, جن کا بچیاں ہیں یہ باہر موو نہیں کر سکتی فیلڈ میں, ان کا کو ایجوکیشن میں نہیں ہے, تو ان کو ایکسپوئر دینے کے لیے ہم اس طرح کی کانفرنسز, ورکشاپس اور ٹریننگز کرواتے رہیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی ٹریننگز کچھ پلان کر رہے ہیں, اب ہم ان کو انشاءاللہ ٹریننگز دیں گے اور ان کو ورکشاپس کروایا کریں گے, کیونکہ کانفرنس تھوڑا ان کا ہائی لیول ہو جاتا ہے. بی ایس والوں کا, ایم فل پی ایچ ڈی والوں کے لیے تو بڑی یوزفل ہوتی ہے, لیکن بی ایس والے شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ایم فل پی ایچ ڈی کا ہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ورکشاپس کروائیں, کچھ ٹریننگز کروائیں بی ایس اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ انٹرپرینورشپ تو ہم ان کو سکھا دی ہے, تو اب ان کو ہم انشاءاللہ باقی جو ورکشاپس ہیں, ٹریننگس ہیں, وہ کروائیں گے, تاکہ یہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپ ہو, اور یہ جو پروڈکٹیو ورک ہے وہ لے کر آئیں, پروڈکٹس لے کر آئیں اپنی, اور ان کو لانچ کریں. تو تھینک یو سر, اور تھینکس ٹو آل آف یو, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن رکھا, اور تھینک یو سر, اللہ حافظ.